लाहौर जो तारीखी इमारतों का शहर कहलाता है, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं यहीं से। और आज कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का ये चौथा दौर है, इसका तीसरा दिन है। लाहौर वाइट्स और कराची रीजन्स के दरमियान खेले जा रहे मैच का आप गद्दाफी स्टेडियम से ये मुकाबला बराह रास्त मुलाहिजा कीजिएगा। अब तक हालात ये हैं, कराची वाइट्स ने अच्छा जवाब दिया है लाहौर को 104 रन बनाकर, कोई विकेट उन्होंने नहीं गंवाई। खुर्रम मंसूर ने बड़ी मोहतात इनिंग्स खेली और नौजवान अम्माद आलम ने अपनी बैटिंग सलाहियतों का लोहा मनवाया। 63 रन पर नाकाबिल शिकस्त हैं। खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है कराची की, जिससे अभी खेल में आना है। तगोदाव करना पड़ी लाहौर वाइट्स को। बिलावल इकबाल और अहमद बशीर ने नई गेंद पर 9 ओवर्स किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और बाद में अली मंसूर जो स्पिन बॉलर हैं, उनको आजमाया गया। लंबा स्पेल था, उन्होंने कहीं कहीं बैट्समैन को परेशान किया, लेकिन विकेट उनके भी नाम नहीं हुए। यहाँ कल के दिन अम्माद आलम ने शाम के सेशन में बड़ी आला बैटिंग की और कराची की टीम इससे सहल महसूस कर रही होगी। 63 रन बनाए, खासतौर पर उनका जो बैकफुट शॉट प्ले था वो काबिल दीद था। बड़े अच्छे उन्होंने 5 शॉट खेले, स्पिनर को चार्ज किया। ये अच्छा मुकाबला था उनका अली मंसूर के साथ, जिन्हें स्पिन करते हुए, कट करते हुए भी कहीं कहीं वो नजर आए। यकीनी तौर पर इससे इनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। आज सुबह अपनी इस इनिंग्स की बाबत उन्होंने बात की यही मैदान में अली यूनुस के साथ। 63 नॉट आउट एट द मोमेंट, कैसा देख रहे हैं इस इनिंग और कितनी बड़ी इनिंग खेलने की आपकी कोशिश होगी कि वो कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग फ्रेंडली हैं? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और कोशिश यही होगी कि जितना लंबा कर सकूँ उतना करूँ। क्या डिफरेंट करते, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जब आप बैटिंग करने आए थे? क्योंकि आप ऑलमोस्ट 2 दिन आप फील्ड में रहे, आसान तो नहीं होता आके अचानक इतनी बैटिंग करना। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी थी मेरी और यही थी कि जिस तरह हमने फील्डिंग करी है 1.5 दिन, और कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा अंदर खेलूं और जितना कॉम्पैक्ट खेलूं उतना अच्छा है मेरे लिए। कॉम्पैक्ट का आपने जिक्र किया तो एक मोमेंट ऐसा आया था जहां पे आपने कुछ रैश शॉट्स भी अटेम्प्ट की थी, क्या वो रश ऑफ ब्लड कहेंगे या खुर्रम मंजूर ने उस वक्त क्या समझाया आपको? नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो एक जगह प्लान करके मुझे बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एंटिसिपेट करता हूँ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन अब मैं कोशिश यही करूँगा कि मैरिट पे खेलूँ। ज़्यादातर क्रिकेट आप लोग अप नॉर्थ खेल के हैं, तो ऐसी कंडीशंस आपको बार बार नहीं मिलेगी वहाँ, तो आपको इसको कैपिटलाइज करना होगा। जी बिल्कुल, ऐसी कंडीशन हमें कहीं नहीं मिली है और ये बहुत अच्छी कंडीशन है बैटिंग के लिए, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना जा सकूँ उतना जाऊँ। और कितना आसान होता है जब आपके दूसरे एंड पे खुर्रम मंजूर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर मैंने, तो कितना हेल्पफुल होता है आप एज अ यंगस्टर आपके लिए? जी बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल होता है और वो हर चीज़ बताते रहते हैं। ज़रा सा भी अगर आप कुछ 19-20 करते हैं तो वो फ़ौरन आपको गाइड करते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच अहमद एंड वेरी वेल प्लेड। थैंक यू। यहाँ यकीनी तौर पर ये पिच बैट्समैन की जन्नत साबित हुई है और आज इसके गोशों के क्या हालात हैं ये जानने के लिए मैदान में पहुंचे हैं शाह फैसल। It's been hard work for the bowlers here at the Gaddafi Stadium. Once again, wickets have been hard to come by. There is an interesting thing to note as well, though. If I take a stance here, take a forward press, you see there's a good little patch developed by 2 left-arm seamers of Karachi. But unfortunately, we don't have an off-spinner in this game. And that is the reason that's not going to come into play. If you look further down, the surface itself, there's no wear and tear as well. So it means that it's going to be hard work again for the bowlers. Plenty of runs available for the batters. यहाँ एक और मुमकिन बैटिंग डे की पेशगोई की है शाह फैसल ने। 104 रन पर कराची का भी कोई खिलाड़ी आउट नहीं। 405 रन कराची की टीम पीछे है इस खेल में, लेकिन अहम बात यह है कि उनकी तमाम विकेटें हाथ में हैं। लाहौर वाइट्स ने बड़ा स्कोर बनाया, 5 से 9 रन बनाकर इनिंग्स खत्म की। अली ज़रियाब ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 200 का हिस्सा अबूर किया। फाद मुनीर ने 72 और अहमद शहजाद ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। अम्माद आलम पर आज नजरें होंगी, क्या वो अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन होंगे। लेकिन इस पहले सेशन में कुछ उम्मीद जो है लाहौर के बॉलर्स को भी होगी, उनके पेसर्स को। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे एक बार फिर तरोताज़ा और तैयार माइक के साथ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और जैसे आपने कहा कि कराची की
तमाम जो विकेट्स हैं वो उनके हाथ में हैं और इससे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये जो ओपनिंग स्टार्ट उन्हें मिला है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है और जो बॉल इनिशियली थोड़ा बहुत ऑफ द पिच या इन देयर हल्की फुल्की कोई मूवमेंट अगर हो भी तो वो भी वक्त गुजार चुके हैं दोनों ओपनर्स। तो अब देखना ये है कि कितना अपने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हैं, कितनी लंबी बारियां दोनों लेते हैं। बहुत लंबी बैटिंग है आने वाली। सरफराज बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो 6वें 7वें नंबर पर आएंगे। तो एक तवील बैटिंग ऑर्डर है कराची का और लाहौर वाइट्स के जो बॉलर्स हैं उनका काम आसान नहीं होगा आज के दिन। जहां इनकी कोशिश होगी कि ये रन्स भी बनाते चले जाएं, खेल में रहें। और दूसरी जानिब अगर जल्दी विकेट मिल जाती है लाहौर के बॉलर्स को तो कराची पे दबाव आ सकता है, क्योंकि जहां पर भी 1-2 विकेटें जो हैं ये तसलसल में गिरेंगी तो लंबा स्कोर कराची के सामने है। कई बार टीमें जो हैं इतने बड़े स्कोर के सामने दब जाती हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये काबिल गौर चीज़ है कि जब भी पार्टनरशिप्स लगती हैं तो लगता है कि कितना भी बड़ा टोटल है वो रीच में है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 विकेट्स इकट्ठे गिरते हैं तो प्रेशर आता है बैटिंग साइड के ऊपर और वही वो मोमेंट है जिसको कैपिटलाइज करना है फील्डिंग टीम ने। लेकिन यहाँ पर देखा ये गया है कि अभी तक कोई फील्डिंग साइड इसमें कामयाब नहीं हुई। ज़्यादातर पार्टनरशिप फिर लग जाती है, एक बड़े स्कोर के जवाब में एक और बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता है और ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो अपने पॉइंट्स के हिसाब से टीमें उसको फोकस कर रही हैं। क्योंकि पिच में ऐसी कोई चीज़, कुछ पैचेस ज़रूर डेवलप हुए जिनका शाह फैसल ने जिक्र किया, लेकिन ऑफ स्पिनर कोई नहीं है दो टीम्स में जो उससे इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वो जिस तरफ हैं वहाँ से ऑफ स्पिन ज़्यादा ऑपरेट करती है। जहाँ क्योंकि कराची के पास 2 लेफ्ट आर्म सीमर थे और उसी वजह से उनके पाँव के जो निशानात हैं उनका फ़ायदा ऑफ स्पिनर उठा सकते हैं, लेकिन लाहौर के पास ये लग्जरी है नहीं। अलबत्ता रफ्तार की लग्जरी है यहाँ अहमद दानियाल के पास और वही आज के दिन का आगाज़ करेंगे FC कॉलेज एंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट खुर्रम मंसूर को। और शायद कराची की सोच यही होगी कि अहमद दानियाल ये एक इकलौता ख़तरा है इस बॉलिंग अटैक में, इस पिच पर, और अगर आप इनको झेल जाते हैं तो उसके बाद जो है रन्स बनाना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। बल्कि जितना अच्छा ये पिच है अगर बैटर सेट हो जाए तो इस पेस को भी इंजॉय कर, इस पे ज़्यादा अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं, बल्ले पे और अच्छा बॉल आता है। तो देखना है कि अब ये पीरियड कैसे गुजरता है और ये बॉल शायद कोई रिवर्स लेता है या नहीं लेता। यहाँ रिवर्स करने की ही कोशिश की थी, इसे स्क्वायर लेग पर टर्न करके आज के दिन कराची का अकाउंट ओपन किया। उन्होंने 106 मजमूई स्कोर, खुर्रम मंसूर 35 रन पर पहुंच गए। कल हमने हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग देखी और हमने देखा कि बॉलर्स जो थे वो गेंद की शाइन छुपाकर रनअप में आ रहे थे। तो इससे 2 चीज़ों से इशारा मिला, एक तो थोड़ा बहुत बॉल जो स्विंग हुआ वो रिवर्स ही था और फिर बॉलर जब उसकी शाइन को छुपाना शुरू हुए तो बैटर्स जो हैं वो ना देख सकें इसीलिए वो छुपा रहे होंगे। तो देखना है कि वो चीज़ आज होती है या नहीं होती। गेंद जो है नीचे रहती रही इस सेंड से। कल जब अहमद बशीर भी स्पेल कर रहे थे तो कई ऐसी गेंदें थीं जो विकेट कीपर फरहान ने ये अपने टखनों से भी नीचे कलेक्ट की और एक से ज़्यादा टिप्पे पर उन्होंने कलेक्ट की। विकेट कीपर के लिए आसान नहीं रहता जहां गेंद नीचे रहना शुरू हो जाए। 2 स्लिप्स हैं, लेकिन अब ऑफ साइड से एक फील्डर को हटाकर भेज दिया है पीछे स्क्वायर लेग की जानिब खुर्रम मंसूर के, ताकि जहन में बाउंसर का शक पैदा किया जाए। लॉन्ग लेग पर अहमद बशीर पहले ही बाउंड्री पर थे। आफात मुनीर को भेजा गया, अच्छा बाउंसर करते हैं अहमद दानियाल, इनकी खूबियों में से है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अंपायर पर नजर रखना होगी, इतनी तेज से गई नहीं, ऑफ द पैड नहीं थी। अंपायर का ये ख्याल है ये बल्ले पे भी लगी। तो यूं खुर्रम मंसूर स्ट्राइक को रिटेन करेंगे। 107 है स्कोर कराची का।
आप किधर जा रहे हैं? 402 के खसारे का सामना है कराची रीजन को। खासा लंबा सफ़र उन्हें तय करना है, लेकिन खुशकुन अमर ये है कि रन्स बन रहे हैं। ये वो लास्ट बॉल जो ऑफ द थाई पैड बज़ाहिरन देखने में ऐसा लगा, लेकिन शायद अंपायर जो हैं उन्होंने बेहतर देखा होगा, ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पे 2 रन्स बने और खुर्रम मंजूर के खाते में गए वो 2 रन्स। अहमद बशीर इब्तिदा करेंगे पवेलियन एंड से बॉलिंग की, और बड़ा ज़रूरी है ये इनिशियल स्पेल। अगर कोई चांस भी रिजल्ट का इस पिच पे आने का है तो ये वो स्पेल है जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर वाइट्स के लिए विकेट्स लेना। एक गेंद पड़ने के बाद ज़रा सा ठहरी, ओपन अप हुए थे खुर्रम मंजूर, लेकिन ज़्यादा रफ्तार नहीं थी उनके लिए जो परेशान कुन हो। अंपायर गुलाम सरवर ने यहाँ पर लेग बाई करार नहीं दिया, इससे खुर्रम मंजूर जो हैं वो तो इस फैसले पे खासे मुतमईन होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके बल्ले से गेंद टकराती है, आप मिडल करते हैं तो अंपायर लेग बाई करार दे देता है। बिल्कुल, ये दोनों जो सूरतों को आपने बयान किया खेल का हिस्सा है, और किसी वक्त प्लेयर को फ़ायदा होता है और किसी वक्त वो उससे खुश नहीं होता। अच्छी लाइन पे गेंद कर रहे हैं, बट ऑफ द पिच कोई ऐसी पेस नहीं दिखी हमें, ना एक ऐसी कोई मूवमेंट है कि बैटर को ज़रा सी भी कोई मुश्किल पेश आए। बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहे हैं दोनों प्लेयर्स। अब तक इस मैच में ये तीसरा दिन है और सिर्फ 9 विकेटें गिरी हैं, तो इससे बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है बैट्समैन का कितना राज रहा। और यही सबब है कि स्लिप से तैयब ताहिर को अब हटाकर ये गली की तरफ लाया गया। कप्तान साद नसीम जो हैं तब्दीलियां करते रहते हैं हम वक्त अपनी फील्डिंग में। अच्छी लाइन अहमद बशीर की, और एक स्प्रेड फील्ड जिसमें मिक्स है, कैचिंग भी है और बाउंड्री को रोकने के लिए फील्डर्स जो हैं वो दायरे से भी आ रहे हैं। और ऐसे में बैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है कि अब क्या करने लगा है बॉलर, और जिस तरह की कैचिंग पोजीशंस रखी हैं कहीं ना कहीं वो एक चेंज ऑफ पेस भी उम्मीद रख सकते हैं कि चेंज ऑफ पेस भी बॉलर करेगा, बिकॉज ये कैचिंग पोजीशंस जो हैं, ये सामने शॉर्ट कवर में खड़े होना फील्डर का। थोड़ी देर हवा में रही और बाल बाल बचे। शॉर्ट कवर के जो फील्डर थे ये इसलिए यहाँ पर तैनात थे। फाद मुनीर लंबे कद के हैं, बर वक्त झुक नहीं सके। बड़ा अच्छा नुक्ता ये आपने उठाया कि ये लंबे कद के हैं, और शॉर्ट कैचिंग पोजीशंस में आपको बहुत दराज कद फील्डर्स को इशू होता है नीचे आते हुए, स्पेशली जहाँ पर रिएक्शन टाइम कम हो। तो ये भी कप्तान को देखना है, और इन्होंने पिछले मैच में इसी पोजीशन के ऊपर एक आसान चांस ड्रॉप भी किया था। बहरहाल कप्तान को पूरा ट्रस्ट है उनकी एबिलिटी में। यहाँ दिलचस्प बात यह कि अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ये क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें ये छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा मतलब होता है। जिस तरह छोटे छोटे जो छेद होते हैं ये बड़े बड़े जहाज़ों को डबो देते हैं। तो अच्छा ये फील्ड किया इन्होंने इस बॉल को, यकीनी 2 रन्स बन सकते थे जिसे रोका, और खुर्रम थोड़ा सा बॉडी से अवे गए हैं। बहुत खूब तारिक भाई, यहाँ ओवर का अख्ताम हुआ और 107 बगैर किसी नुकसान के कराची।
आबिद अली सिप के इकलौते फील्डर हैं। तैयब ताहिर अभी भी गली में। ऑफ साइड में खेला स्कोर के सामने। 2 रन बआसानी यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा अपिश था ये भी, और फील्डर जो है उसके करीब ही तैनात है। यहाँ पर एक बैटर्स को थोड़ा वक्त देखना होगा कि बॉल जो है उसको अपनी बॉडी के पास खेलें। थोड़ा सा लूज स्ट्रोक था जो खुरम मंजूर ने खेला, और ये भी उसी तरह थोड़ा बॉडी से अवे था जो हमाद आलम ने खेला। लकी रहे, 2 रन्स बने। ये देखिए जो पैर हैं वो अपनी जगह पे रहे, हाथ और बैट बॉल की तरफ गया और काफ़ी बॉडी से दूर था, इसीलिए इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था इस शॉट पे। इस बार फिर एज को हिट किया और गेंद निकल गई थर्ड मैन के इलाके में। हमाद आलम पूरी तरह इख्तियार में नहीं थे। उन्होंने अपना नवा चौका लगाया, खासे रन्स बाउंड्रीज की मदद से बनाए। अच्छी लाइन है, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, और लेंथ भी हार्ड है। यहाँ पर बैटर जो है उसकी फीट मूवमेंट बिल्कुल टेस्ट होती है इस लाइन के ऊपर। तो हमाद जो है वो स्टक नज़र आ रहे हैं, ना वो पूरा पीछे जा रहे हैं ना पूरा बॉल के ऊपर आ रहे हैं। बेहतर होगा कि इस बॉल को कुछ देर जो है जाने दें। पिच बहुत अच्छा है, यहाँ पर पूरा वक्त लेना चाहिए अपना। ज्यादातर रन्स जो हैं ये ऑफ साइड में बनाते हैं, बहुत कम गेंदें छोड़ते हैं हमाद आलम, जो अनलाइक खुरम मंसूर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेंदें जो लीव की हैं ऑफ स्टंप के बाहर, और उसकी बड़ी वजह ये पिच है। जी बिल्कुल, ये ऐसी पिच है जिसको देख के लगता है कि एक ही रिपोर्ट 4 दिन चल सकती है और इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। बैटर्स के लिए कंफर्टेबल से कंफर्टेबल होती जाती है, और वही हम देख रहे हैं कि नॉर्मली इस लेवल की क्रिकेट में इतनी दूर से बैटर्स कंसिस्टेंटली खेलें तो स्लिप्स एक्शन में आती हैं, कीपर एक्शन में आता है, लेकिन यहाँ बहुत कंफर्टेबल हैं बैटर्स। पुश किया, लेकिन ज़्यादा कुव्वत कार फरमा नहीं थी इस शॉट में। अभी जो इस साल इसी महीने जब एशिया कप यहाँ खेला गया था, तो जो सेंट्रल पिचेस हैं वो अच्छा खेली थी। वहाँ जो है बैट्समैन बॉलर ख़ास तौर पर जो पेसर्स से लाहौर में जो एक रीत है कि फास्ट बॉलर आउट करते हैं, ये वो सेंट्रल पिचेस हैं जहाँ रन्स बने थे, विकेटें उड़ी थी। लेकिन ये दूर है सेंट्रल एरिया से पिच। जी बिल्कुल, सेंटर पिचेस में काफ़ी अच्छा पेस एंड बाउंस देखा गया एशिया कप में, और बहुत ही लाइवली पिचेस थी। फास्ट बॉलर्स जो थे वो बड़ा इफेक्टिव नज़र आए। या तो जो ग्राउंड स्टाफ है ये गौर कर सकता है सेंट्रल पिचेस की तरफ भी, इन मैचेस को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि आगे कज़ाफी स्टेडियम में शायद HBL PSL से पहले को बहुत ज़्यादा क्रिकेट है भी नहीं इन फर्स्ट क्लास मैचेस के अलावा। जी बिल्कुल, बजा फरमाया। यहाँ पर PSL भी अभी कुछ महीने दूर है, तो इन पिचेस को अगर वो चाहें तो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि उनकी क्लियरली उनकी जो पेस और बाउंस था और जो मदद थी फास्ट बॉलर्स के लिए वो खासी ज़्यादा थी। और फिर इन्हीं के दरमियान एक वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी वाली पिच भी है, उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है किसी वक्त। इससे फ्रंट किया ऑन साइड में, शॉट मिड ऑन के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं था। खुरम मंसूर ने दोबारा आखिरी गेंद पर रन हासिल किया। 37 ओवर्स के बाद 115 कराची। अहमद बशीर ये अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड से। दरअसल ये न्यू पवेलियन एंड से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नया पवेलियन बना दिया गया है बॉलर के अकब में, जो कज़ाफी स्टेडियम की मरकजी इमारत है उस पर। पहले एक ही
जो पवेलियन था ये दोनों टीमें इस्तेमाल किया करती थी। जी बिल्कुल, और इससे खासी जगह बढ़ गई है प्लेयर्स के लिए और टीम के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और गद्दाफी स्टेडियम की खूबसूरती में एडिशन हुई है इस नए पेवेलियन से। जो पेवेलियन थोड़े कंजस्टेड लगते थे अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। दो रन्स की कॉल है लेकिन एक ही रन बनेगा। गद्दाफी स्टेडियम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है, और ये पवेलियन का इलाका है। यहाँ पर अब 2 पवेलियन हो गए हैं। ये पहले ये एक ही पुराना पवेलियन हुआ करता था। ये पुराना पवेलियन है गद्दाफी स्टेडियम का, जहाँ खासा वक्त गुजरा सलमान भट्ट का भी। जी बिल्कुल, और यकीनन अब पहले से डबल हो गई है स्पेस, और जो दूसरा पेवेलियन बनने से एक टीम को बहुत सारी जगह मिलती है अपनी ड्रेसिंग रूम एक्टिविटीज़ को आसानी से कंफर्ट के साथ करने के लिए। वैसे ऑफ साइड में स्मैश किया एक और रन के लिए। जिस लाइन पे खुर्रम मंजूर को बॉलिंग की है अहमद बशीर ने वो खासी टाइट है, और वहाँ पर बैटर को थोड़ा केयरफुली खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही अहमद आलम सामने आते हैं तो ऑप्शन से बाहर शॉर्ट एंड वाइड गेंदें जो है करनी शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा कह लीजिए कि कंसिस्टेंट अक्रॉस बैटर्स रहना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि वो ये इस पिच के ऊपर जब तक आप बहुत अच्छी जगह बॉल नहीं करते तो बैटर्स के लिए बड़ी आसानी। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अपनी लाइन और लेंथ दोनों को मेंटेन करना। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार परेशानी हुई खुर्रम मंसूर को। निचला हाथ उनको आखिरी मरहले पर हटाना पड़ा, लेकिन करीब में कोई फील्डर नहीं था। जब स्क्वायर लेग पीछे है इस पिच पे भी आप समझते हैं कुछ देर के लिए खुर्रम मंसूर के करीब लाया जा सकता है किसी को। देखिए अभी तक हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि एक अच्छी फील्ड और फ्रंट ऑन यानी कि सामने फील्डर्स लेके, क्योंकि इस पिच में ज़्यादा पेस नहीं है तो वेरिएशन के साथ आप एक लाइन पर एक लेंथ पर बॉलिंग कीजिए। 3 से 4 ओवर्स जो है आप वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करें ताकि बैटर कुछ डिफरेंट करे। वो चीज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। और यफात मुनीर जो हैं ये उनको लाया गया बैट्समैन के करीब। एक रन का और इजाफा शॉर्ट गेंद की तवक्को कर रहे थे खुर्रम मंसूर। आमतौर पर बाउंसर जो है पाकिस्तान की पिचेस पर खेलना आसान होता नहीं है, गेंद यकसा रफ्तार से नहीं आती, लेकिन ऐसी पिच पर आप तवक्को कर सकते हैं कि बाउंसर जो है उसको आप इंतज़ार करके खेल सकते हैं। देखिए अगर पेस 130 तक है तो फिर तो बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन अगर पेस ऊपर जाती है और बॉलर के एक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। कुछ बॉलर्स का एक्शन बड़ा क्लीन होता है, वो अच्छी पेस भी हो तो उसमें पिक करने में बड़ी आसानी है, लेकिन यहाँ पर वो पेस नहीं है जो बैटर को डिस्टर्ब करे या उसे सोचने पे मजबूर करे। गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, इससे दिफाई बल्ले के साथ खेला अहमद आलम ने जो 71 पर जा पहुंचे हैं, और कराची किसी विकेट के बगैर 118। तीन 358 रन कराची का पहला हदफ है आज, ताकि फॉलो ऑन का जो खतरा है उसको टाला जा सके। लाहौर वाइट्स 5 से 9 रन स्कोर किए। यहाँ कराची के सामने क्या हो सकते हैं सिनारियो मैच बचाने के सिवा? देखिए कराची मेरा ख्याल है इससे बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बिकॉज वो ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप ही नहीं बल्कि टेबल टॉपर्स हैं, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उनके हैं, और यहाँ पर वो पूरे पॉइंट्स हासिल करना चाहेंगे इर्रिस्पेक्टिव के रिज़ल्ट उनके हक में आता है या ड्रॉ होता है, लेकिन पॉइंट्स हासिल करना चाहेंगे ताकि अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। खुर्रम मंसूर ने बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ लाहौर में भी,
यहाँ पर टेस्ट मैच में भी शिरकत कर चुके हैं, इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। और टेस्ट मैच में जब यहाँ पर वो सिलसिला तर्क हुआ था 2009 में, मुझे लिबर्टी का वाक़या पेश आया था, उससे पहले की जो आखिरी गेंद थी वो सलमान बट जो है बैटिंग पार्टनर थे खुर्रम मंजूर के, शायद रन आउट हुए थे उस आखिरी गेंद पर खेल की। जी बिल्कुल, 49 स्कोर था और जयवर्धने ने थ्रो किया था शॉर्ट फाइन लेग से और डायरेक्ट हिट पे रन आउट हुए थे, और उसके बाद वो काफ़ी अरसे तक के लिए आखिरी बॉल साबित हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की कदाफी स्टेडियम में। यहाँ फिर 13 बरस के बाद जो टेस्ट क्रिकेट में अगली गेंद थी वो शाहीन अफरीदी ने की थी, यहाँ आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले बरस। तो मुरलीधरन की जो आखिरी गेंद खुर्रम मंजूर और सलमान बट जिस पे दौड़ते हुए रन आउट हुए थे, 13 बरस लगे। वैसे निकाल दिया, रफ्तार को इस्तेमाल में लाए, हालांकि फील्डर थे लॉन्ग लेग पर, लेकिन गेंद उनसे दूर निकलती चली गई। देखिए ये बहुत ही इम्पेशेंट कह लीजिए कि हिकमत अमली है ये, कि आप अभी दिन का आगाज़ है और बॉल जो है ठीक है बहुत पुराना नहीं है, यहाँ पर आप एक लाइन पे बॉलिंग कीजिए, आप एक तरफ बॉलिंग कीजिए, थोड़ा बैटर को आप जो है रन्स ड्राई अप करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहाँ पर ना रन्स रुकेंगे और जितनी स्पेस से बॉल आ रहा है, और बॉलर्स भी कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेस नहीं है, और खुर्रम मंजूर लंबे हैं, उनको नॉर्मल बाउंसर से इतना इशू नहीं है, तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी इतनी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। ये हमने बात की कि खुर्रम मंजूर जो हैं ये लंबे कद के हैं, लेकिन इनका जो बैटिंग का हैंडल है, इनका जो बल्ले का हैंडल है वो इतना बड़ा नहीं है। आमतौर पर जो लंबे कद के बैट्समैन होते हैं ज़्यादा लॉन्ग हैंडल होता है उनके पास। उनका जो बैट का ब्लेड है वो नॉर्मल से लंबा हो सकता है, हैंडल तो किसी भी प्लेयर की अपनी प्रेफरेंस है कि वो लॉन्ग हैंडल यूज़ करता है या वो शॉर्ट हैंडल यूज़ करता है। और जो दराज कट प्लेयर्स हैं उनका यूजुअली बैट का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा लंबा होता है। ऑन साइड में खेला, लेकिन पहले ये भी एक ख्याल किया जाता था कि जो खिलाड़ी जो हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाना पसंद करते हैं, उनके जो बल्ले का हैंडल है वो कम छोटा होना चाहिए निस्बतन। अगर आप ड्राइव करते हैं तो फिर हैंडल बड़ा इस्तेमाल किया जाता था पहले की क्रिकेट में, ये एक थी थ्योरी। मालूम नहीं, बिकॉज मेरे करियर में मैं इस किस्म की कोई बात नहीं सुनी। ऑल थ्रू आउट माई करियर मैंने इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला है और कभी इस तरह की चीज़ जो है नहीं सुनी, ना कभी डिस्कस हुई कि अगर इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर लीजिए। आई थिंक बैट एक बड़ा प्राइवेट या पर्सनल एक चॉइस है बैटर की। 122 बगैर किसी नुकसान के कराची वाइट्स। मैच समरी, लाहौर ब्लूज जो कि एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में अपना मैच खेल रहे हैं इस राउंड का। 334 रन लाहौर ब्लूज ने बनाए। हुसैन तलत और जुनेद अली ने बड़ी शानदार पार्टनरशिप की और इनिंग्स को रिकवर किया, और पेशावर रीजन उसके जवाब में 247 पे 4 खिलाड़ी आउट। साहिबजादा फरहान जो कि कप्तान है पेशावर रीजन के 132 रन पे आउट हुए हैं और बहुत ही शानदार इनिंग उन्होंने खेली। अभी 87 रन दूर हैं लाहौर के पहले इनिंग के स्कोर से पेशावर रीजन। साहिबजादा फरहान ये पेशावर की टीम के कप्तान है, ये पहला सीज़न है कप्तान की हैसियत से इनका, इसलिए अपनी टीम के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। लाहौर ब्लूज की टीम जो है जब से लाहौर से बाहर गई अच्छा खेली है अब तक, शायद उनके बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिली है नॉर्थ जाकर। यकीनन वो जिन जगह पे खेल रहे हैं वहाँ पे वेदर भी अच्छा है और पिच जो है वो ज़्यादातर बॉलिंग को हेल्प करती है और वहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैच जो है वो एक डिफरेंट पेस पे चल रहा है और बैटर्स का ज़रा टेस्ट ज़्यादा है। एबटाबाद में मौसम ठंडा भी है और हमेशा से वहाँ की जो पिच है वो बॉलर्स को मदद करती रहती है।
इंतज़ार कर रहे हैं बॉलर्स की गलतियों का। अम्माद आलम और खुर्रम मंजूर, और खुशकुन बात यह है कि रन्स बनाने की फिक्र है दोनों को ही। शॉट जो है क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। बेहतरीन लाइन है ये। कंसिस्टेंटली अगर यहाँ 3 से 4 ओवर्स करते हैं तो डेफिनेटली बैटर जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो खुद से कुछ करने की कोशिश करे और ऐसे में गलती कर बैठे। ये देखिए बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ, बैटर को फॉरवर्ड ड्रॉ किया और एक ऐसी जगह जिसको बैटर इग्नोर नहीं कर सकता और उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है इस जगह की। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको पार्टनरशिप्स में बॉलिंग करनी है। $387 दोनों टीमों के दरमियान फर्क है। अहमद बशीर के लिए स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर डीप नहीं, 6-3 की फील्ड है राइट हैंडर के लिए। सबसे शॉर्ट पॉइंट पर खड़े हुए हैं फाद मुनीर आज भी। देखिए अगर वो इस लाइन पे अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो उन्हें फाइन लेग की भी जरूरत नहीं है। आप इस फील्डर को भी वहां पर कैचिंग पोजीशन में ला सकते हैं और बैटर के माइंड में आप पेस को लेकर या वेरिएशन को लेकर डाउट क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं देखी इस राउंड तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, क्योंकि साद नसीम वो ऐसे कप्तान है। अब एक और फील्डर उन्होंने टांग से निकाला और देखिए ऐसे लगता है कि शायद वो बात सुन रहे हैं। फाइन लेग अब ऊपर जा रही है और वो एक्स्ट्रा फील्डर जो है वो दूसरी कैचिंग में चला गया। सो ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर बैटर जो है डेफिनेटली वो सोचेगा। आइडियल तो होता कि ये थोड़ा सामने रहते और जो कवर का फील्डर है वो थोड़ा सा पॉइंट की तरफ रहता, बट ठीक है एटलीस्ट अब एक साइड जो है उन्होंने बॉलर को दे दिया कि यहाँ पे आप बॉलिंग कीजिए और वहां पर उन्होंने प्रोटेक्शन भी उन्हें बाउंड्री पे दे दिया। फिर ऑफ स्टंप के बाहर कट किया। इतने ज़्यादा फील्डर्स और ट्रैप के बावजूद अम्माद आलम जो हैं जहां उन्हें मौका मिलता है वो अपना शॉट खेल जाते हैं। ये बैकफुट पर खेलने से गुरेज करते नहीं है। जी बैकफुट पे काफ़ी स्ट्रांग है ये और वहाँ पर जब मौका मिलता है तो बिल्कुल उस शॉट को उस बॉल को स्पेयर नहीं करते। लेकिन फिर वही हुआ कि 3 बॉल एक जगह पर किए हैं और जैसे ही उसकी फील्ड सेट हुई है थोड़ा सा शॉर्ट एंड वाइड कर दिया। लेकिन अच्छी चीज़ कि प्रोटेक्शन है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं किया इस लूज बॉल ने। एक अच्छी फील्ड है। खुर्रम मंजूर के खिलाफ जो लाइन ऑफ अटैक है वो निस्बतन विकेटों में रहा है, उस पर लेंथ ज़रूर आगे पीछे हुई है, लेकिन अम्माद आलम को ज़्यादातर बॉलिंग ऑफ स्टंप लाइन के बाहर की गई है। उनकी स्ट्रेंथ पे ही उनको उकसाना चाहते हैं गलती पे। खुर्रम मंजूर के लिए विकेट टू विकेट रहे दोनों ही बॉलर। खुर्रम मंजूर बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और वो जानते हैं कि इनिशियल स्पेल्स को कैसे सरवाइव करना है। वो बहुत सारी बॉलें खेल चुके हैं लेकिन उन्होंने गलत शॉट नहीं खेला। अमाद जो है अगर उनको टाई अप करते हैं तो हमने कल भी देखा कि वो थोड़ा सा चांस लेते हैं। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस अच्छा खेला सॉफ्ट हैंड के साथ। निचला हाथ जो था वो आखिर में हटा लिया था खुर्रम मंजूर ने। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा 40 ओवर्स के बाद 123 है इसको। तारिक भाई ये अब तक की बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी अगर हम इसका जिक्र करें, क्योंकि इसमें बैटर्स जो हैं उनको पता है कि अब एक साइड पे बॉलिंग है और वहाँ पर फील्डिंग पैक्ट है, तो वहाँ पे रन बनाने का मौका जब तक एक बॉलर ऑफलाइन ना हो जाए या बैटर कोई रिस्क ना ले तो अब होगा नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में ये थोड़ा डिफरेंट है जो अभी तक की हमने क्रिकेट देखी है तीनों चारों मैचेस में। वहाँ पर बैटर्स पे इस तरह का टाइम जोन आया नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पार्टनरशिप्स में बॉलिंग करना। और अगर अहमद दानियाल को भी ये बाउंसर्स वाली फील्ड से हटाते हैं और इस तरफ ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बैटर्स को दूसरे एंड से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा हमें देखने को मिल नहीं रहा है फील्ड को देखते हुए। अहमद दानियाल को अपनी बॉलिंग जारी रखना है। अपना 10वां ओवर शुरू कर रहे हैं। अब तक 31 रन उन्होंने दिए। पिछले मैच में भी ज़्यादा विकेटें नहीं मिली थी लेकिन अच्छी बॉलिंग की थी अहमद दानियाल ने और अराउंड द विकेट आएंगे। अब
वो अहमद को भी, अहमद बाउंसर किया। जी बिल्कुल, बड़ा क्लियर मैसेज है इस फील्ड को देखकर कि आप मारें तब भी चांस है, और अगर आप इसको रोकते हैं तो तब भी चांस है, क्योंकि लेग स्लिप भी ले ली है, शॉर्ट लेग भी है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे है शॉर्ट लेग, लेकिन वो वहाँ पर है जहाँ पर बैटर के जहन में ज़रूर आता है कि अब रोकना है, छोड़ना है, तो छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है, और उसके लिए भी आपको बहुत आखिर तक बॉलर का हाथ देखना है। लेग स्लिप है, इसके अलावा एक फील्डर जो है शॉर्ट स्कोर लेग पे भी हैं। मुसलसल दूसरा बाउंसर। मुझे याद पड़ता है कि सिडनी टेस्ट मैच था और 2009 में, तो ओपनिंग पार्टनरशिप मैं और इमरान फरद वहाँ पर खेल रहे थे, तो हमारी काफ़ी उस पिच के हिसाब से इतनी देर ओपनिंग चलनी नहीं चाहिए थी जितनी मुश्किल पिच थी, तो मिचेल जॉनसन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने 4 ओवर इस तरह की फील्डिंग लेकर सिर्फ बाउंसर कर दिए, और उस पेस के ऊपर वो खासा मुश्किल टाइम था और उनका एक्शन भी खासा ऑकवर्ड था। तो हमाद आलम अगर यहाँ छोड़ते रहते हैं तो यकीनन रन्स वाला पैच उनका आ जाएगा। अभी लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, जो एशेज का टेस्ट मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने पूरा सेशन वो बाउंसर करते रहे थे, और जो इंग्लिश बैट्समैन थे वो हुक और पुल करते रहे, और उसमें विकेटें गिर गई थी। जब जो है विकेट लेना दुश्वार हो रहा था ऑस्ट्रेलिया को, तो मुसलसल बाउंसर करते रहे, ऐसे में थक जाते हैं फास्ट बॉलर, लेकिन होता है खतरा भी बैट्समैन को। जी बिल्कुल, बॉलर्स के लिए बड़ी जवामर्दी दिखाने की ज़रूरत। ये देखिए यहाँ पे अमाद आलम जब बॉल छोड़ रहे हैं, हालांकि बॉल काफ़ी दूर है, लेकिन अच्छी टेक्निक ये है कि आप अपने हाथों को भी गिरा लें, क्योंकि जब बैट ऊपर रह जाता है तो हमने देखा है अक्सर टेस्ट क्रिकेट में और क्रिकेट में कि ये बैट अक्सर इस बैट को भी बॉल लग जाता है और फिर बैटर बड़ा अनलकी फील करता है। सो इसको भी अगर अपने हाथ गिरा लें तो परफेक्ट टेक्निक हो बॉल छोड़ने की। जहाँ आज तो लग रहा है कि माइक में डायरेक्ट बात चल रही है, जो भी यहाँ बोल रहे हैं अगली बॉल पे वही हो रहा है। जहाँ इस बार ये बेहतर टेक्निक थी और हाथ उन्होंने बर वक्त गिराया, अपने बल्ले को भी उठने नहीं दिया, ऐसे में ज़्यादा महफूज हो जाते हैं। अच्छा छोड़ा भी गेंद को, अभी तक ज़्यादा इन्होंने हुक या पुल करने की कोशिश नहीं की, बॉलर को रास्ता देना चाहते हैं, फिर से ऐसा किया। अच्छी कोशिश है अहमद दानियाल की, जान लगानी पड़ेगी और लगा रहे हैं अच्छी पेस के साथ, अच्छी जगह से चारों बाउंसर्स किए हैं उन्होंने, और अमाद आलम भी बराबर उस बॉल को देख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे टेम्परामेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेकिन जो अंपायर्स हैं उनकी तरफ से अभी कोई इशारा आया नहीं कि आप 2 से ज़्यादा बाउंसर तो नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी एक बैट्समैन को। देखिए वो बहुत हाई बाउंसर्स है, हेड हाई से ऊपर, तो यहाँ पर राशिद रियाज हैं जो कि इंटरनेशनल अंपायर हैं और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। आई थिंक बहुत ऊंचे बाउंसर्स नहीं थे ये। यहाँ अगर सर के ऊपर से बाउंसर जाता है नॉर्मल पोजीशन से, तो फिर जो है वो अंपायर अपनी गिनती शुरू करते हैं, या मिड एंड ओवर आप मुसलसल बाउंसर्स पे 1 2 3 बगैर किसी नुकसान के कराची वाइट्स। One, two, three for none. Khurram Manzoor and Ahmad Alam negotiated the first half an hour unscathed. These good plans
from Lahore Whites. For both the bowlers, Ahmed Bashir has been asked to bowl on the offside. There's 3 catchers, a wide slip, a wide gully, short cover catching, and an extra cover. And also for the protection in the deep as well. Just then, we saw some hostile bowling from Ahmed Danial in the previous over. Plenty of short pitch stuff. Ahmad Alam there, leaving the balls with his temple bat hanging high at times, but that 5th and 6th delivery, he was able to put the bat down and drop the wrists as well. But this is good effort from Ahmad Danial on a docile pitch. Good time to welcome along in the comm box for the first time this morning. Good morning, Ali Yunus. Very good morning to you too, Shah Faisal. I just love this battle going on at the moment between bat and ball. Both are on target. If you talk about bowling, they've been on target. And I really like how these two batters have negotiated this excellent spell of bowling from both ends. I think this is the best part of the cricket that we have witnessed in this game. The field is set, but Ahmed Bashir is bowling a line and length which is not tempting Khurram Manzoor for any strokes. Back of a length on a decent line, Khurram Manzoor defending. This field set on the offside, if we have a quick look, is not set for defensive play. It is for when Ahmed Bashir would entice Khurram Manzoor to playing some strokes. Yeah, it's an offside packed field for Ahmed Bashir. I think this is a good field setting for Ahmed Bashir. He's setting him up because we've seen from the other end, Ahmed Danial is banging in short and he's the one who has to pitch it up. As you said, this length bowling won't help. This is better. He'll have to be more in this area. This channel is where he should be, according to the field. Spot on, Ali Yunus. That is the line and length where you will be testing the patience of Khurram Manzoor much more. But as long as he's hitting the ball in the middle, even if it's a defensive stroke, he'll feel good about himself. But a line and length where he would feel he need to reach out to put bat on ball, this is where over a period of time you can test his patience. Short cover catching. I would ideally like that fielder that's coming into your picture just now also to come in and make it an umbrella field. And then Ahmed Bashir to entice Khurram Manzoor into playing some strokes. Yeah, the previous over that Ahmed Bashir bowled, the fielder at mid-wicket was at where you were saying. I think that will be a better option. But still, you've got to give protection to the bowler also. It's not easy because the batting is quality batting. Talking about Khurram Manzoor, lots of experience. One of the most experienced players in this domestic circuit. And he's showing it why he's such a formidable batter. Patience and class. Good cricket all round. Score is still 123 for none. Faisalabad region leading by 115 runs after being bowled out and on 112 in the first inning. Faizan getting 5 wickets. Rawalpindi region scoring 144. So that's a great comeback by Faisalabad region. Fahim Ashraf, the captain, getting 5 wickets. Huraira getting the first 50 of this season. 87, 147 for 5. 115 the lead. It's a great match going on there. An absolute thriller there. A low scoring thriller. But it looks like the wicket is easing off because those runs are increasing from innings to innings. 112, 144, 147 for 5. Faisalabad would ideally love to get up to 200 or 225. I think with 5 down, need to check if Fahim Ashraf is in the middle because is he out? Yeah, Farhan just informed me he's out because normally he plays well against quick bowling. So that's a big loss for Faisalabad, but they're ahead by 115. Very, very exciting game, and we'll keep you posted on that too.
about 40 minutes, and first sign of spin this morning. Ali Manzoor, who bowled 9 overs. Ahmad Alam really went after him. And Khurram Manzoor, who was very circumspect, he was playing for stumps yesterday. Probably he will chance his arm again, because he's another player who's very, very good against spin. Just a regulation field, a slip and a short leg. Interesting thing, will this third day offer any spin from the straight? Ahmad Alam using the box nicely. Gets another run. Now, you were talking about spin. We did see some spin from the experienced spinner of Noman. But can Ali extract the same area? Can he bowl at the same pace? That's the question. Because the quality Noman has is just too good. Because of the pace he bowls at on such pitches. That is why I asked in the interview from Noman that what the spinners should do. What should they learn from you? And he was of this opinion that you should not be using too many plans at once. Keep the batter guessing and bowl long spells. This is what Ali Manzoor should be doing. Pace is very, very important, and it's part of the spinner's makeup to judge very quickly what sort of pace needs to be bowled on a certain surface. And although Noman took a long time to guess that, but eventually he did find what is the right pace. Ali Manzoor is still guessing into his 10th over. And that is an exciting thing. There's another interesting thing. Farhan Nisar has been busy this morning. The run rate on day 1 was 3.96. And on day 2, where the pitch is supposed to quicken up with more pace and bounce and more runs to be scored, the number of runs and the run rate both decreased on day 2. 268 runs at 3.15. Now that will make you think about quite a few things. And one of them is the approach by Lahore Whites after lunch, when they only scored 100 runs in 38 overs. We'll come back and get Ali's take on that. 124 for none. Yeah, let's do that first. Yeah. KRL Stadium, the Shoaib Akhtar Cricket Stadium now. Plenty of runs. 292 Zain Abbas. And in reply, Rehan Afridi, 142 not out of just 218 for 4. That is a high-scoring game as well. Hard work for the bowlers, just like here at the Gaddafi Stadium. Fata region trailed by 311 on the first innings with 6 wickets in hand. Yeah, but this game is moving. I like the run rate, the inning run rate for Multan region, and then Fata. You just have a look at Rehan Afridi's strike rate, 142 of just 168. That shows this is a good batting pitch, where the ball is coming onto the bat nicely. It's good for run scoring. So yes, both of the games, quality cricket in our hands. Change of bowling. Bilawal Iqbal starts off with the no ball. And Ali, the stats I did mention just before we went on break. What do you make of this? In context of the wicket, in context of the approach of the teams, how do you see that? Exactly what you earlier said, that when Lahore was batting, I think their approach was quite on the negative side. They were just playing out time, not doing anything, just blocking everything. Fahd Munir, the youngster, and Farhan, the wicketkeeper, when they were together, I think that was the time, and this is what happened just now. That's the right one. There's a big no ball by Bilawal Iqbal. And then in the second half, when Karachi Whites were batting, they were batting out time. They wanted to go out, got not out at the end. Oh, that kept low. That kept really low. That oohs and ahs you could hear. Because if this was in line, would have been trouble for Ahmad Alam. There is a little crack outside the line of off stump around that 8-meter mark. And it just skidded along
trust me, Ali, there's very little wear and tear on the pitch, so these balls will be few and far between. But what it can do is just put some doubt in the batter's mind. But if you're a good batter, once again keeping low from that similar length. Well, if Bilawal is smart enough, he should just target this area consistently and do not do anything else. As a batter, I can tell nothing bothers a batter other than this invariable bounce that you can get from pitch. It really troubles the batter. You can negotiate the swing, the seam, but this bounce, if it's keeping low, it's really tough to negotiate. Wonder what Khurram Manzoor is having a word with Rashid Riaz. Again, it's keeping low from that end. That's experience though from Bilawal. I like that. He's just persisting. Probably he's seen that little crack there, and although it's outside the line of off stump, but it will be registering in the back of the mind of the batter, and that can create that doubt and uncertainty. Batters won't like it. Bilawal is good enough to keep it there consistently. Fourth ball on the same area. Same area again. Good bowling. It's been a good opening partnership. And the reason is, young and old, young Ahmad and the experienced Khurram Manzoor, all of a sudden, if he notices anything from the other end, he's quick to communicate it with the youngster. Very good to see. That is the role of real senior and experienced pro in the side. Good on you, Khurram Manzoor. Good on you, Bilawal Iqbal. Good consistent bowling. Absolutely. This is what I asked Ahmad Alam while interviewing in the morning, that how helpful is it batting alongside Khurram Manzoor. He was quite happy. He was of this opinion that whenever I play any wrong shot, Khurram Manzoor quickly comes up to me and talk to him. It's a great learning. It's a huge learning curve for Ahmad Alam, batting alongside Khurram Manzoor. And if he can get a big one here, that will do world of good to him. Ahmad Alam had enough of that. Walked right across of his stumps and smashed him down the ground for a 4. Take that, Bilawal Iqbal. 125, 129 for none. Good counter attack. Just coming across, shuffling across and playing it straight. That is good cricket by Ahmad Alam, showing what he's made of. You cannot keep him quiet for long. That is the quality of this young lad. Superb batting as he moves on to 77 now. All set to get a big one. 129 for none. The last over, when the ball was keeping low, Faisal, Khurram Manzoor quickly came up to Ahmad Alam, had a word with him. Was this the plan, that you got to go after anything that is pitched up, anything that is in the zone? Would that be the plan? I don't think so. But Ahmad Alam, that new generation of players, they don't like to be tied down. But credit to Bilawal Iqbal. If you see, this is the FCN. This is where he was bowling. Further down on the off-stump line, there is a little crack which is around that 8-meter mark, right round about here to the right of your picture. Although it's not in line with the stumps, but Bilawal hit it consistently in the last over, making the ball to skid along and keep low from there. That induced that stroke from Ahmad Alam towards the end of the over. So that was good cricket all round. Because Ahmad realized that Bilawal is not going to leave that spot. So he had to do something to put him off. Now next over will be very interesting if what Bilawal does. What will be the impact of that stroke that Ahmad played against him? Or will he just stick to his discipline? Leading edge.
Bit of an excitement there from the close-in men. Khurram Manzoor was closing the face on it. Hint of turn for the first time. And right pace. Testing over there from Ali Manzoor. A maiden. 129 for none. This is going to be interesting. Now how Bilawal replies, because he was a touch too predictable in the last over, bowling at 1 line in length. But we've been talking about being consistent. But at this point, Ahmad Alam was well set on 77, counter-attacking him, doing something different to put him off. Can he do it again? Slightly fuller, but that line is the same. Bilawal was included in this game because his ability to bowl consistently in good areas, although the skipper and the management would have hoped that he would get more sideways movement on this pitch the way it looked. That hasn't happened. Nothing to take away from Bilawal though. 10.1 overs, just 19 runs. He's hit good areas consistently, asking questions. Little bit of swing as well. Yesterday, towards the end of the play, we did see some reverse swing, Ali, which was a bit early into the 30th over. But once again, the last delivery also did wobble in the air a little bit. Well, field change in place. Two fielders in the deep on the onside. Bilawal coming around the wicket. Once again, I think the previous plan was good, but it's a bit undercooked. 6 to 8 deliveries, and they're already thinking that they want to do something different. Bilawal, with the kind of pace he's got, is he going to go into short pitch bowling mode? We'll have to see. Maybe it's a double bluff. It was indeed. And Ahmad Alam, the weight transfer wasn't there. Probably he was expecting a short pitch delivery. Yeah, the point you were making is, have a look at that. The kept low again, not where he would like, playing away from the body. But the plan they had early on, Faisal, I'm not sure if this works. They made Ahmad Alam do something different by the end of the last over, which Bilawal was bowling. Then why change it? It was working. It almost worked. So you got to be patient. Indeed, that plan only lasted like 6 to 8 deliveries, like I said. Undercooked it and then go to plan B. And that would make Ahmad Alam concentrate harder, because now he's ready for another battle. He wasn't wore down enough in the previous battle, which it could have done. But we saw that stroke at the end of last over. He didn't like that from Bilawal. That's why he played the stroke he did. But now Bilawal didn't keep patience and change his plan. The ball finding the middle of the bat will give confidence to Ahmad Alam again. He's not going to get much friendly pitches anywhere he goes after this one. So he has to make use of this, make most of the runs here. He likes batting here. He's already had 150 in this ground. And he's all set for another 100. Another change in the field we see from point to coming to a short extra cover. So too many plans, too early, too quickly. Exactly. 100% agreed. This is a game of patience. And I think the fielding side is not sticking to a plan for long enough.
Easily negotiated by Ahmad Alam. 2 maidens in a row, 129 for none. Very solid. Khurram Manzoor. On the other hand, it's Ali Manzoor making his comeback in domestic cricket. Last time he played, he was in Sri Lanka. And now he finds himself right at the headquarters after his brilliant performance in inter-district cricket. And I really like how, I appreciate Lahore's management for recognizing and giving the opportunity of inter-district performers. This is how you develop a cricketer. Use the form. Good use of the race, finds the gap. That will run away to the boundary. Khurram Manzoor waiting patiently and just puts away the bad ball. Nice execution. Great batting, playing against the spin. And the timing on that and placement also, perfect. That is experience for you. Overpitched, capitalized, cashed on it, and got the result. That is Khurram Manzoor for you as he moves to 47. Beautiful batting. That one was coming in with the angle and he just covered the angle nicely. Use of the wrist is pretty evident in Khurram Manzoor's batting, hitting both on the onside and offside. .133 for none. Faisal, if you could hear in the stump mic, everyone rushing into, like they want to ball next over very quickly. They don't want the batters to settle down. They want to be at them all the time. So I like this urgency from Lahore Whites. They want to have a result out of this game. It's very important for them to get a result because Karachi Whites is right pretty at top of the table. It's Lahore Whites who are in desperate need of a win. So I can see their urgency, just they want to hurry up and bowl maximum overs. Bilawal Iqbal has gone back to that over the wicket ploy. Much better. Be patient there. They've achieved one objective in the last 20 minutes or so. They've kept the scoring rate down. The scoring rate was nudging right at 3 just about 20 minutes ago. It's come down to 2.82 now. And this will help them because we know that Ahmad Alam is a natural stroke maker. He will run out of patience if you keep on bowling at that line and length. Just keep on bowling dot deliveries to him and you will see him play that release shot. Just 9 runs coming off the last 7 overs. This will work. Be patient. Bilawal Iqbal trying the slower one. But because they're planning to bowl Karachi Whites out twice in this match, that is why you see that desperation, that urgency. That's why they're using so many plans so quickly. Because they have a target in mind. They want to win this one. But still, there is a method. You've got to be patient enough. It's just 7 overs.
And you've already had one false shot or one attempt. Will be really testing Ahmad Alam's patience now. The commitment level, he looks good. I like his intensity. I like the purpose. He wants to score a big one. And I spoke to him about the few rash shots he played yesterday, where he almost threw away his wicket. He was of this opinion that I wanted to break that shackles, break the plan of opponents, and dominate. He's played 15 or 16 dot balls now, either side of that boundary that he hit. So one scoring shot in about 3 overs, and that will be playing on his mind. Rashid Riaz has been in the spotlight. Had to watch the front foot very carefully in this match. There have been few infringements at either side. And they called a few that weren't infringements. Another slow delivery from Bilawal Iqbal. Would they be really playing on the patience of Ahmad Alam, Ali Yunus? There is definite plan from Bilawal. He is capable of doing it. Bilawal Iqbal is very consistent with his line and run. That's a good sign to see. Umar Akmal supporting the team, coming in as a substitute. Good signs. This is what you want to see. Senior pros helping out the team, being there for each other. That's what cricket is all about. Teamwork. That bouncer was not threatening at all. 133 for none. First hour done and dusted. And players will take drinks here at the Gaddafi Stadium.
Still looking for wickets, Lahore Whites. 133 without loss. Karachi region. Shahzad. Manzoor actually, and Quaid-e-Azam well set. 47 and 77. Loads of batting to follow. Asad Shafiq, Ramiz Aziz, Fahad Iqbal, Danet Sarfaraz. That's a long lineup. And when you talk about Lahore, they've looked more pragmatic in terms of the approach, but the wicket column, that's a big worry for them. They've used 5 bowlers already, 3 paces, 2 spinners, but haven't really found the success. Look a bit more calculated in terms of how they came out with the planning, had a certain plan, but again have failed. Maybe could have sustained these plans for a little while and put pressure on both the openers. Ali Bhatt, Salman Bhatt. Something's wrong with me today. Thank you, Marina. Maybe you haven't had a breakfast today. Ali Manzoor to kick off. And Puram Manzoor nearly got into a wrong shot, but everything's safe at the end. Karachi Whites have been pretty stable, not running away with the game. You would agree that we've seen some really well-planned execution of bowling and maybe a thinking captain just trying to put some pressure on the openers. They've looked more sorted today, Lahore White bowlers and the captain. As we talk about sorted bowling, we see a full toss on offer, and which hasn't been taken full advantage of by Khurram Manzoor, who is well set. Well, yes, the field positioning was good. The plan seemed good. The bowlers delivered on line and length, but sadly, they didn't continue for long enough to induce something different from the batters. You have to at least bowl 4 or 5 overs where you squeeze the runs, where you ask them to do something different. And they did not carry on for that long. That was a pity. Otherwise, it was a good field set. Down the track. That was a very close call for the stationary fielder. We'll pick up a couple. We've seen Lahore Whites just keeping Quaid-e-Azam under pump. Bilal Iqbal with some exceptional overs. He did really test him. There we see a ball well flighted, and the batter tried to hit it over extra cover, but did not get any elevation. So just squeezed it through cover and point. Got 2 runs in the process. The spinner needs to be very precise with his line and length to get the batters frustrated. But here we are seeing that it's not been consistent from Ali Manzoor. Just trying to cramp Quaid-e-Azam for room. Overdone. 49 gone. Karachi Whites 136 without loss. Asad Shafiq, he's one prolific player, would be eyeing to come out in the middle and bat, but right now he's practicing something with the ball. Some spin, feeling the seam. Maybe he's opting for a different role in this playing 11. Yes, Asad Shafiq with the ball in his hand, probably thinking somehow if the wicket falls and what he could do differently with the ball. So he's running his fingers over the ball, enjoying his time out, watching his 2 teammates play a good long innings and put up a very good partnerships. There we see his vast experience, 310 innings, 187 games, 11,626 runs at an average of 41.52, 2,963 50s. Bilal continues. He's looked in a good rhythm. Keeping the same attacking field. Blocking the scoring shots. Khurram Manzoor with vast experience, maybe not fall for that trap. Yes, we have seen teams bowl on better batting tracks than this. We saw England come to Pakistan in the test matches, and those famous pitches which
saw highest strike rates in the history of Test cricket, but they produced results. England were that good with the ball, and they bowled precise line and lengths, attacking fields, and good attacking decisions by Ben Stokes as captain. So that is where these young teams can take a leaf out of their book. Good corridor, good length. Perseverance is the key, especially for the longer format, whether you're a batter or a bowler. And when you talk about having plans and executing it, I do understand the captain has a lot of say, but again, generally, coaches can also send in message. I think they did sat down the other evening and came up how they can just extract something out of the surface, or maybe implement and instill a plan that can make a successful breakthrough for them. But how important a coach role do you think at this level is? That's through. Off the back foot. Just for a single. Again, just trying to chase. Anything outside off stump for Manzoor. Yes, Marina, coming back to the role of the coach, and we saw in the morning today Quaid-e-Azam Jr., the head coach of Lahore Whites, having a long chat with his captain and a few senior players. And you could see the difference in the field setting today, and you could see a better plan, because definitely we all know this is a very good pitch to bat on, and it requires more precision from the bowlers, better lines, better lengths, and a proper field set, which all we saw today. But unfortunately, it did not continue for long enough to get the batters into that zone where they make a mistake. But actually, we did see something different, and which was more related to this kind of a pitch. Leaving alone, Bilawal did test Ahmad Alam in his previous overs. That was a good setup. We did saw a release shot from him. Azaz Shima has loads of experience. And we can see a change, as you mentioned, in terms of planning. Yes, even Bilawal is bowling good areas with the same field, and Azaz Shima is on screen. He himself would have been a handful on this pitch. Has been a wonderful fast bowler all his career. Even in his last 2 years, I think he was the highest wicket taker in Quaid-e-Azam Trophy. So it's not very far. The time hasn't gone that much far when he was the one running in and taking wickets for Punjab and Lahore. Now outer edge, flying through the cordon area. Looking for two, and that's good running. Good positive running from Ahmad Alam. Quick in and out. Tayyab Tahir is a live wire in the field, and he has a rocket arm. And we just saw that. Ahmad Alam is lucky. He just made it. It could have been an easy two with any other fielder. But Tayyab Tahir is a special being in the field. And his arm, his outlook doesn't suggest that he'll have such a quick arm, such a rocket arm. But he has that ability to surprise with his throw. There we see Ahmad Alam ran the first one, and then for a moment he thought it would be easy, and there we see the flat throw coming in, and it was accurate as well. See? Direct hit, and it would have been curtains for Ahmad Alam. So you need to see the fielders before you make a decision while running. That was a very close call. Lucky indeed, Ahmad Alam, on that occasion. Had it been a direct hit, he would have been walking back to the dugout. 50 overs gone, 139 without loss. When we talk about the involvement of coaches, we've seen that over the years, different type of coaches have been inducted. We've seen different school of thoughts, and also I feel that it's important to understand your role as a captain and as a coach as well. But how would you define the coach's role on different levels, starting from grassroots till the national side? Well, let's first get to this point, the level that we are commenting upon, which is the first class level, obviously. And role of the coach is important at all levels. They are the ones who create that environment in which the team progresses. And they need to have their own dressing room culture.
And that culture is based on their resources which are available. So the coach needs to hang around for long enough where you can define a culture, make an environment, and then progress from there. Unfortunately, what we have seen in the past few years, every team is with their coach for 3 months. And then next year they are with another coach. And in the midst of the talk, Khurram Manzoor has reached another 50. And he's played really well. He's been patient. He's left a lot of balls alone. 163 balls for this 50. And another one to the many that he has already. He's been calm, cool, and compact. Loads of experience. Khurram Manzoor. Down the track. Goes aerial. And that's a really good connection. He's taking the challenge, Ahmad Alam, and he's announcing his presence out in the middle. Yes, and Ali providing him the best ball possible to execute that stroke. And full marks to Ahmad Alam. He used it feet, got to the pitch of the ball, and lifted it over extra cover for a beautiful 6. There we see. Wonderful stroke, wonderful bat swing, a still head, and great execution of the shot. It's not an easy shot to play, but Ali, as a bowler, by now should know the strengths. There we see another one, this time straight over long on. Another huge 6. Ahmad Alam cruising to his century. He's not taking it easy. Anything, just a slight touch of light, he's going after it. And he has been struggling to keep him down, but have a look at that. First he goes over extra cover and then straight down the ground, gaining confidence ball by ball. But again, just slight room been given. Comes down to left alone this time. He's had enough of 13 off this over, expensive one. 51 gone, 152 without loss. He's had enough of it, Ahmad Alam. There was a patch where he was put under pump, but now he's targeting his bowlers. He knows Bilawal has been hitting right areas, correct areas, never attacked him, but against Ali, he's been very dominating. Ooh, just took off. They're asking for the question. Rashid Riaz says no. But it really took off. That was surprising for even Khurram Manzoor. Yeah, a rare moment that when a batter could not connect to a ball after being so much set, maybe because there was no deep square leg and the batter did not expect it. And once he saw it, and instinctively he went after the stroke, unable to connect, and no harm to anyone in the end. Talking of Ahmad Alam's 2 strokes, they were wonderful use of the feet, and he likes to attack. One thing is for sure, if you keep him quiet for some time, he will do something different. He does not like to be bobbed down, and this is for the bowling side to realize. Going down the leg side, a very hopeful appeal, but no way, that wasn't anywhere close. And I can understand, we all can. Lahore Whites bowlers have been trying their heart out, but the Karachi batters have been very solid. Yeah, they're desperate for a wicket. Bilawal, this one was the first with a shorter delivery against Khurram Manzoor. It did surprise him, but it was nowhere near, and the reaction tells it all. Why are you asking for it? Ambitious appeals from Bilawal, I would say.
the back foot. But I like the ploy. They've got their fielders in the right places. Bilawal has been very consistent with his line and length. That was the second appeal, coming wider off the crease. And it was clearly going down the leg. Good umpiring by Rashid Riaz. An experienced campaigner out in the middle. Yes, to induce a bad decision or a bad shot from the batter, you have to be consistently bowling at good lines and have to be patient and bowl in partnerships, bowl in tandem. And this is something that we've not seen so far. Playing professional cricket, and we all know Ahmed Bashir is no express pace. He could have bowled a longer spell. He's only bowled 4 overs today. He bowled well, had a good field, but it did not carry on. I don't know whether he didn't want to bowl for longer. The captain was impatient. But you don't get wickets like that. Set batters, experienced batters, you need to be patient. Yeah, they could have been a little bit more persistent. And there was a time when you could see that Khurram and Ahmad were feeling a little uncomfortable. And maybe an over or so could have actually been successful for Lahore Whites. Yes, 2 or 3 overs we saw bowled to that particular field, that particular line and length, and we saw a couple of times the batters itching to go after the ball. And this is what England did differently on those batting tracks against Pakistan. They were too persistent with their line and length, and in the end they got the better of our young team. So this is something which these boys need to do and learn quickly if they want to go to the next level. Oh, good Yorker, dipping in. I think he got some wood on it, Ahmad Alam. Yes, he did. That's exactly what Rashid Riaz is saying to Bilawal. Yes, Bilawal is trying very hard. He's trying to get something going. He bowled a good bouncer, and then we've seen 2 good Yorkers, and this one as well. And clearly came off the bat. It was all bat, nothing else. And that's why the umpire had a big smile on his face. But that's okay, Bilawal. You're trying your heart out, and instincts take over. There's been very less instances where a genuine appeal even has happened on this pitch. Yeah, we can feel you, Bilawal. Again, a good delivery. Snipping back in. Dot to end the over. 52 gone, Karachi Whites, 154 without loss. And again, in terms of how to implement, what plan to implement, and for how long they should sustain it, I would come back to my discussion with you. Is how important is the input from the coach? Yes, it is very important, and we talked about the culture that he brings along with him and the environment that he creates in the dressing room. Then he finds the leaders in the team, the people who are the core of the team, who take major decisions and who agree upon a decision, and then they back it up with whatever comes. But here we see coaches very often changed. After one season, staying with the team for 3 months, they're with some other team. In the last few years, we have seen that. And that is where you think that no particular environment has been made, no particular culture has been followed, and also the team changes. The boys in the team change so frequently that it's hard. So I think they need to stick around as a group for longer to actually come up with a different thing which they can own as their own culture, as their own environment. But because once the tournament starts, then there's not much technically that you can develop. All that is the tactical advice, the strategic decisions. That's all you can do in a tournament. And just the minor adjustments. But for longer results, for creating a huge difference, you have to stick together longer as a group. And that is where it is most important. In the younger ages, boys like under 19, boys under 17, under 14 groups, that is where the coach's role becomes so important, to stick around longer with the group and to get that thought process going in all those years when there's time to actually download proper cricket in those young minds. Launched it. There's no one there. Vacant area. And Ali is getting some heat from both of the batters.
maximum for Khurram Manzoor. Yes, Khurram Manzoor there, finding it all too easy, just playing to his liking now. Another big six over mid-wicket, and Ali Manzoor is clearly looking short of ideas. A complete dominant display of batsmanship from the two Karachi openers. That's good cricket. After hitting for a six, he goes for a single. And talking of generally about our fast bowlers and how they can work out a way to pick up wickets on a track like this, I remember talking of persistence. James Anderson was here to play for England, and he, on the Pindi track, he bowled 46 overs in the game. He took 5 wickets, and he only gave 36 runs away in those 24 overs. Down the track, another beautiful shot. And that will race away for another boundary. Ahmad-e-Azam, he's in a hurry. On 99, cruising towards his second 100. He's some serious talent. Yes, Ahmad-e-Azam reaches 99, just one shot of that magical figure, and he has reached that in all class. All wonderful looking strokes, shots of authority. And the bowler is looking clueless by the minute. He would love to get this run on this ball. Let's see what Ali Manzoor can do differently. There it is. Magnificent batting by a youngster. Gets to an 100. He's shown resilience. He retaliated against some of the best bowling. He kept his calm, and he deserves all the praise right now. Enjoy your moment, young guy. Yes, always a special moment for any young player to get to this magical figure in a first-class game. And we know that Ahmad-e-Azam, last time when he played the first-class game here at the Gaddafi Stadium, he scored 150, and he's back here and doing the similar stuff, has reached another 100. And this has been equipped with beautiful shot making, good use of the feet, a lot of assurance on the crease. And he looks a complete batter, especially against a spinner when he plays. He has most boxes ticked. He was put to test by the fast bowler, especially Bilawal, but he kept his calm. Seriously targeted. Ali Manzoor faced 35 deliveries and managed to culminate 54 runs off him. And that is where the bowling partnerships are so important. So whatever Bilawal does in terms of, well, bowling well and producing those good lines and length, but if the other end gives away so many runs to the batters, then they are in a no hurry. They don't mind playing a maiden to good balls. So the partnership, like in batting, bowling partnerships are also very important for any team to pick up wickets, especially on pitches like these. And then Daniel has been brought back, the strike bowler. Starts off with a good length. What a talent Ahmad-e-Azam has been. Impeccable timing. He's looked really good. Compact player, technically sound. And he actually knitted this innings of 100. After 2 years, it's never easy coming back and scoring another 100 on the same venue. 4 maximums. That tells you the caliber of this guy. Just 24 years old. Just a punch down the ground. They've got the fielder there. He's all set for a big score, and we've seen that from Ali Zaryab's experiences. They can actually turn their hundreds into double hundreds and keep on scoring. Yes, good side this to see Abid Ali walk up to the young man and congratulate him on this fantastic knock. A very good thing to see. And definitely this helps the youngster's confidence when a senior player like Abid Ali walks up to him and says, well done. And he's one man who looks that he'll carry on
He will not change anything. And he doesn't need to. There's nothing special happening off the pitch, nothing in the air, and the bowlers, they seem to be getting tired. Well left. Ahmed Daniel has got some pace. He will test Ahmad Alam, but he's all set. Again, there has to be a purposeful bowling, just not coming in, banging shot. Without a certain field placement, all these deliveries will be a waste of time. Well, Marina, purpose has to be served from both ends. You can't have one end trying to squeeze runs and the other end opening the floodgates and then say why the batter is not taking chances to the good balls. Because he doesn't need to. He's getting plenty of opportunities. And that's a really good point. We've seen that fast ballers doing the hard yards, especially Ali Manzoor. He was clueless. Yeah, I wonder what happened to Mohammad Irfan, why he's not part of the playing 11, because he bowled well. He bowled well every innings. He tied up the scoring, took wickets, also scored runs. So I hope he's fine. There's nothing wrong with his fitness, but we can't even see him in the dugout. So I don't know what prompted this change, but whatever it was, I think Lahore White needs a proper spinner, especially if the pitches are going to be that good. They need someone who can squeeze the runs. Oh, that's a soft dismissal. Literally a soft dismissal. That's not what he wanted. That's not what Karachi Whites wanted. Trying to chip it over the infield and ended up just giving a little lollipop catch to the mid-off. Yes, this was bowled in his half, a zone where he's been driving it beautifully all throughout this innings. But maybe that 100 coming very recently just took that easily, and lapse of concentration leads to his dismissal. He must be ruining himself now. There we see a ball pitched up. Nothing special in that, just a lapse of concentration. Unfortunate. But fortunate for Lahore Whites, Ahmed Daniel was brought back into the attack and he managed to bring Ahmad Alam back to the dugout. What a magnificent innings, 102. He is disappointed, but let's talk about the quality of this young player. A very slow walk back to the dugout. 169 for 1, Karachi Whites. अब मैदान पर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं लाहौर के फील्डर्स की जानिब से, क्योंकि एक विकेट गिरने के बाद, जो कि बहुत इंतज़ार के बाद गिरी है, 54 ओवर्स तक इंतज़ार करना पड़ा, एक एनर्जी सी महसूस होने लगी। दानिश अजीज़ वन डाउन आए। आमतौर पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, खातिर खा औसत है नहीं। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट क्लास की बजाय ये T20 और वनडे मैचेस की ज़्यादा पहचान रखते आए हैं, लेकिन फिर भी 20 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी, इससे बेहतर हो सकते हैं। दानिश अजीज़ इससे बेहतर बैट्समैन हैं, लेकिन यहाँ उन्हें चैलेंज दरपेश होगा। दानियाल का यकीनी तौर पर इनको बाउंसर पे भी आजमाएंगे। तो कामयाब ओवर रहा ये अहमद दानियाल का, जिसमें लाहौर को विकेट मिली 170 पर 1।
ये अच्छी हिकमत अमली हो सकती है बाएं हाथ के बैट्समैन को वन डाउन पोजीशन पर भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को आज ज़्यादा बॉलिंग करना है अली मंजूर को, तो उनकी चालों को ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नाकाम बना सकते हैं। रन बनाने का भी मौका होगा। अली मंजूर पहली विकेट के मुतलाशी हैं, लेकिन यहाँ अहमद दानियाल ने कामयाबी हासिल की और गेंद को उन्हें आगे गिराया, आमादा किया ड्राइव करने पे, मिड ऑफ को इकाई दे बैठे। लेकिन मलाल होगा जिस अंदाज से अली आउट हुए इस सेंचुरी करने के बाद, शायद कंसंट्रेशन भी खो गए कुछ देर के लिए। या थोड़े रिलैक्स नजर आए, थोड़ा इजी ले गए। अहमद दानियाल की पेस थोड़ा एक्स्ट्रा पेस है, इससे पहले बिलावल इकबाल कर रहे थे वो मीडियम पेस रहे, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा पेस है, थोड़ा तेजी से बॉल आया, जिसकी वजह से यूजुअली हम देखते हैं कि कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर बहुत अच्छा खेलते हैं अहमद आलम, लेकिन दाद देनी होगी दानियाल को भी। जिस कंसिस्टेंसी से इस स्लो पिच के ऊपर उन्होंने तेज बॉलिंग किया तारिक भाई, आई थिंक पिक ऑफ द बॉलर्स अगर हमने एक नाम लेना हो तो वो अहमद दानियाल रहेंगे। इससे पहले जो स्पेल किया था वो थॉरोली बाउंसर्स पे रखा हुआ था बैटर्स को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे पिच किया, अच्छा गेम प्लान, अच्छी गेम अवेयरनेस और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की। क्या ये ओपनिंग हो सकती है जो लाहौर वाइट्स को दरकार है? यह इसका फ़ायदा यहाँ उठाना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी कल कुछ गेंदें अली ने की थी, दोनों राइट हैंडर्स को, जिस पे अम्माद आलम को परेशानी हुई थी कल शाम के सेशन में। और यहाँ आज तीसरा दिन है, बैटिंग हो चुकी है, बहुत बॉलिंग हो चुकी है और ये रफ मौजूद है लेफ्ट हैंडेड के सामने। ये करीबी मामला हो सकता था, शॉर्ट लेग से ज़्यादा दूर गई नहीं। यहाँ बहुत ही ऊज एंड आज आप सुन सकते हैं, एक एनर्जी डिफरेंट हो गई है और यही विकेट्स करते हैं, एक जान फूंक देती हैं बॉलिंग साइड में। एक बार फिर कंफर्टेबल नहीं है अभी तक दानिश अजीज, ये अच्छा पैसेज है, यहाँ को कैपिटलाइज करना होगा इससे। 55 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 172 पर 1 कराची वाइट्स। आसिम रिजवी ये असिस्टेंट कोच हैं कराची के। ये बाहर डगआउट बनी हुई है जो पहले T20s के लिए इस्तेमाल होती थी और अब ये वाइट बॉल क्रिकेट में भी इसका फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि मौसम गर्मा में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है। कई खिलाड़ी जो हैं ये एयर कंडीशन कमरों में बैठना पसंद करते नहीं हैं, इससे बाहर आकर खुली फ़ज़ा में बैठ सकते हैं, वो भी शेड में। अलबत्ता अली यूनुस को पसंद है जो है सर्द कमरों में रहना, एयर कंडीशन कमरों में। उनके और मेरे काम में काफ़ी फ़र्क है, उनका काम मजदूरों वाला काम है थोड़ा, क्योंकि आपको हर वक्त धूप में रहना है तो आपको अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग है क्योंकि दानिश अजीज एक T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर आप थोड़ी समझदारी से, थोड़े प्लान के साथ, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके दानिश अजीज को बॉल करेंगे तो आपको ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन फोकस जो आज रहा वो अमाद आलम पे ही रहा। क्या लाजवाब इनिंग खेली है एक यंगस्टर ने, 102 रन बनाए सिर्फ 159 बॉलों पे, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अपनी नेचर के अगेंस्ट बैटिंग की, जब बॉलिंग अच्छी हो रही थी रिस्पेक्ट दी, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ पे रन भी बनाए। और ये इंटरेस्टिंग है, अहमद शहजाद आए अहमद दानियाल के पास, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया जाए। हेल्प करता है तारिक भाई, एक सीनियर मेंबर जब मिड ऑन पे खड़ा हो अहमद शहजाद, तो मशवरे अच्छे मिल सकते हैं। जी हाँ, ख़ास तौर पर ये लाहौर के जो बॉलर्स हैं अहमद बशीर, अहमद दानियाल, इनका बहुत तजुर्बा नहीं है। अहमद दानियाल का तजुर्बा जो है ना होने के बराबर है, तो आपको मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपको टेस्ट क्रिकेटर ऐसा करने पर आमादा हो तो ये और भी अच्छा लगता है। आप खेल के बड़े सरबस्ता राज होते हैं बॉलिंग के,
इस क्रिकेट के खेल के, और वो आप पर फिर वाह होते जाते हैं जब आप एक दूसरे से बात करते हैं। अगर वो फास्ट बॉलर यहाँ पर सीनियर खड़ा हो मिड ऑफ पर, तो ये और अच्छा हो जाएगा अहमद दानियाल के लिए। या वो तो आइडियल बात है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर वाइट्स को उस तरीके से फास्ट बॉलर्स, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स मुहैया नहीं है टीम में। तो वो जो रोल है वो अहमद शहजाद निभा रहे हैं, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशन से गुजरे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इनको बाखूबी अंदाज़ा है कि इन कंडीशंस में क्या होना चाहिए। अब ये अप टू दानियाल है कि उसको कैसे ग्रास्प करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस मशवरे को, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक स्लिप है गली, शॉर्ट पॉइंट। खुर्रम मंजूर को ज़्यादातर आज विकेटों में बॉलिंग होती रही है। खासी मोहतात इनिंग्स ओपनिंग बैट्समैन की, 60 पर पहुंच गए। अहमद शहजाद जो हैं, इनको ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है इस टीम के साथ। हमने देखा है इस वक्त तक कि ये अपने आप में ही रहते हैं। जैसे पहले स्लिप में फील्डिंग करते रहे पहले दोनों मैचेस में, अब ये निकले हैं जो है स्लिप से बाहर मिड ऑफ की जानिब। तो इनको ज़्यादा इस टीम के साथ, क्योंकि ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी हैं, तो इनको ज़्यादा जो है इनके साथ घुल मिल के रहने की ज़रूरत है। ये अच्छा होगा टीम के लिए भी और इनके लिए भी। 175 पर है। अभी आप जिक्र कर रहे थे अहमद शहजाद का, जो अब इनकी फील्डिंग पोजीशन है मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, वो टीम के ज़्यादा काम आ सकती है अगर आप मिड ऑफ पे खड़े हों। यहाँ पे भी आप, अब जैसे अभी आप कह रहे थे कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये अच्छा साइन है लाहौर की क्रिकेट के लिए, क्योंकि आई एम श्योर इनसे अच्छे मशवरे मिलेंगे। क्योंकि अली मंजूर के लिए स्ट्रगल रही है अभी तक, 16 ओवर में 77 रन दे दिए हैं। तो अगर अहमद के किसी एक मशवरे से कुछ फ़र्क डल सके, क्योंकि एक विकेट, एक अच्छा पैच आपके मैच का नतीजा बदल सकता है, तो अच्छा साइन है ये लाहौर वाइट्स के लिए। गेंद ज़्यादा आगे गिरी, इससे गैप में धकेला एक और रन के लिए। खुर्रम मंजूर ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए आज ज़्यादा नजर आए कल की निस्बत। यहाँ पे अपने पेस का ध्यान रखना होगा अली मंजूर को, नुमान अली से सीखना होगा। ऑल्दो उन्होंने ओवर्स बहुत किए, बट वो बहुत स्लो बॉल कर रहे थे, और जो तेज डिलीवरी था वो स्टॉक डिलीवरी था, कभी कभी करने वाला बॉल। लेकिन यूजली अगर आप तेज बॉल करते हैं तो अभी जैसे आपने जिक्र किया कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक वो आसान हो जाता है, क्योंकि बल्ले पे बॉल आसान आता है, आप निगोशिएट कर सकते हैं, ऑन साइड पे आसानी से खेल सकते हैं, और जितना एक्सपीरियंस खुर्रम मंजूर के पास है ये मिस आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शायद अली मंजूर को नुमान अली के स्पेल से सीखना चाहिए था। और ये शानदार बॉलिंग इस बार टर्न देखने में आई। ये वो आहिस्ता गेंद थी और वो आहिस्ता रफ्तार जिसका भी अली ने जिक्र किया। बाल बाल बचे, बैट्समैन को ड्रॉ किया सामने की जानिब, सेट बैट्समैन को बीट किया बुरी तरह। इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अली मंजूर को। ये बेहतरीन बॉलिंग है, ये बेहतर है। अपने पेस को थोड़ा वेरी कर रहे हैं, और जब इतना स्पिन अपने सामने से होता हुआ बैटर देख लेता है तो उसके जहन में भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा स्पिन होगा, कौन सा सीधा रहेगा, कौन सा अंदर को आएगा। ये देखिए अच्छी लाइन पे गिरा हुआ बॉल, और ऐसे ही बॉल कुछ नुमान अली ने भी किए थे। अच्छा कमबैक किया है, और अगर मैच में थोड़ी जान डालनी है तो अली मंजूर का अच्छा स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें जो अहमद शहजाद के मशवरे, मुझे उनकी भी झलक नज़र आ रही है। जो ये मुख्तलिफ बॉलर लगे हैं, उन्होंने यही इनको कहा होगा कि आपने एक ही जगह से कोशिश करनी है बल्ले के दोनों जो एजेस हैं उनको बीट करने की, क्योंकि ये नेचुरल वेरिएशन है, तीसरे दिन की पिच है, वो आएगी प्ले में। ये अच्छी सोच अहमद शहजाद की और लाहौर की। 178 पर 1।
331 रन का भी फासला तय करना है पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए कराची वाइट्स को। खुर्रम मंजूर, ये बॉलर्स को थका देने वाली इनिंग्स है। फिर गेंद को सरकाया लेग साइड की जानिब। साल से बहुत अच्छे ओपनर्स कराची ने पैदा किए हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो भी कराची के ही दो ओपनर्स ने कायम किया था, वहीद मिर्ज़ा और मंसूर अख्तर ने कोयटा में 561 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी 1976 में। वो फर्स्ट क्लास मैच था नेशनल स्टेडियम कराची में और अभी भी आलमी रिकॉर्ड है। हालांकि बड़े बड़े ओपनर्स दुनिया में खेले, बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास पार्टनरशिप्स हुई हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सका। इसके अलावा हनीफ मोहम्मद रिकॉर्ड साज ओपनर थे, उनके जिक्र के बगैर ज़ाहिर है कराची, पाकिस्तान या दुनिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं या ओपनर्स हैं वो तो जिक्र मुकम्मल हो ही नहीं सकता उनके नाम के बगैर। बिलाशुबा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और हमेशा से ही एक कराची की हिस्ट्री रही है। हनीफ मोहम्मद इंक्लोयर भी मौजूद है गद्दाफी स्टेडियम में। अच्छा लगा कि जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट है वो दी जाती है हमारे लेजेंड्स को। और हमेशा से तारीख रही है कराची से, हमेशा से अच्छे बैटर्स आए हैं। ज़्यादातर हमने मिडिल ऑर्डर में भी बहुत क्वालिटी देखी है। द ग्रेट जावेद मियांदाद, उनका जिक्र करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कराची की अगर बात करेंगे। जहाँ जावेद मियांदाद और हनीफ मोहम्मद जो हैं दोनों को यहाँ पर बड़ी इनिंग्स खेलने का एजाज़ है गद्दाफी स्टेडियम में। हनीफ मोहम्मद ने इस मैदान पर जो बनने वाली पहली डबल सेंचुरी थी वो हनीफ मोहम्मद ने बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में। तकरीबन हर ही क्रिकेट ग्राउंड पर उनके रिकॉर्ड्स हैं। ये लेफ्ट हैंडर के रिकॉर्ड्स में इजाफा होगा। 4 रन का ड्राइव किया दानिश अजीज ने, यॉर्कर फेंकने गए थे दानियाल, लेकिन पाले में आ गई लेफ्ट हैंडर के। ये रिस्क तो इन्वॉल्व होता है जब भी आप यॉर्कर डालने जाएंगे, तो ये चांस होता है कि आप हाफ बॉल ही कर देंगे। और ये एग्जैक्टली यहाँ पे ही एक बैटर की ख्वाहिश होती है कि इस एरिया में बॉल मिले उनको जिससे वो आसानी से ड्राइव कर सकें। एरिया अच्छा चूज किया, अच्छा बैलेंस था, अच्छी प्लेसमेंट रही, अच्छा रिजल्ट रहा दानिश के लिए। अब आप अपना एंगल चेंज करेंगे, अहमद दानियाल कुछ अलग करने की कोशिश। पुल शॉट तैयार थे इस बार बैक इन लेंथ के लिए। 1 रन का और इजाफा। तो कराची के जो अच्छे ओपनर्स हैं उसमें एक और बड़ा नाम जो है मोहसिन हसन खान थे। यहाँ बहुत ही दलेर बैट्समैन थे मोहसिन हसन खान, जिनकी मुदस्सिर नज़र के साथ जो पार्टनरशिप थी एक ज़माने में, उसका मवाजना जो है वो ग्रीनिज और हेंस की पार्टनरशिप से किया जाता था 80 की दहाई में। वो इतनी कामयाब ओपनिंग पार्टनरशिप थी टेस्ट क्रिकेट की। मुदस्सिर, मोहसिन, ये दोनों नाम एक ही लिए जाते थे, एक ही आवाज़ में। 184 पर 1 कराची वाइट्स। यहाँ जिक्र अगर चल ही पड़ा है कराची के बैटर्स का और ओपनर्स का तारिक भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम द ग्रेट सईद अनवर का जिक्र ना करें। उनका ताल्लुक भी कराची से था, क्योंकि हमारे दौर में, हम मॉडर्न डे क्रिकेट जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की, तो हमारे लिए तो सईद अनवर वाज द ग्रेटेस्ट, जो जिनको हमने सामने देखा है बैटिंग करते हुए। इनफैक्ट बड़े हुए हैं उनको बैटिंग करते हुए देख के। कम ही प्लेयर ऐसे थे जिनमें इतना फ्लेयर, इतना स्टाइल मौजूद था। उठाकर खेला मिड विकेट पर, फील्डर ये कैच ले लेंगे। जी हाँ, ये अच्छी सोच नहीं थी दानिश अजीज की, और फाद ने इस गेंद को संभाल लिया। आखिरी मौके पर उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को बर वक्त बंद किया और एक और कामयाबी। दानिश अजीज दबाव में नजर आए
और फिर गए भी। या जैसे कहते हैं एक विकेट लीजिए दूसरी साथ फ्री में लीजिए। दानिश अजीज जब से बैटिंग करने आए थे शेकी लग रहे थे, रन्स की तलाश में। शायद उनको ये मैसेज दिया गया था कि आपने रन्स तेजी से करने हैं। जैसे हमने कहा कि ये T20 स्पेशलिस्ट और यहाँ पे झलक दिखाई थी, अपनी विकेट गवा दी, एक अपॉर्चुनिटी गवा दी रन्स करने की ऐसे कंडीशंस में जो कि बैटिंग फ्रेंडली हैं। आपको तो इस मौके को ग्रैब करना था लेकिन ऐसा हो ना सका। इम्पेशेंट नजर आए, बड़ी हिट मारने चले गए और अपनी विकेट गवा दी। सिर्फ 9 रन्स, कराची वाइट्स 184 पर 2। मायूस कुन शॉट खेला और इस मौके को गंवाया, सुनहरी मौके को दानिश अजीज ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये अपना लोहा मनवा सकते थे, अपना एक निशान छोड़ सकते थे और इससे बेहतर इनको पिच नहीं मिलेगी शायद इस पूरे सीजन में ही। खाने के वक्फे से चंद मिनट्स पहले, सिर्फ 7 मिनट्स पहले तो और ज़्यादा ये शॉट जो है बिला जवाब सा दानिश अजीज का। शफीक है नए बैट्समैन। आप सईद अनवर का जिक्र कर रहे थे और सईद अनवर इंक्लोजर पे ही गेंद फेंकना चाहते थे, दानिश अजीज आउट हुए इसी तरफ शॉट खेलते हुए। देखिए सवाल यही रहेगा तारिक भाई कि क्यों, क्योंकि अब लंच के लिए भी 6-7 मिनट रह गए, इसके बाद शायद 1 ओवर होगा। तो आप अगर ये टाइम गुजार लेते तो आप लंच के बाद आते तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती, कंडीशंस डिफरेंट होती, आप थोड़े रिलैक्स होते, नर्व्स भी थोड़े रिलैक्स होते। लेकिन समझ नहीं आएगी कि दानिश अजीज ने क्यों ऐसा मौका ज़ाया किया। क्योंकि जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि बार बार आपको ऐसी पिच नहीं मिलेगी, अगर आपको मिल गई है तो आपको उसके मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। ये देखिए थोड़ा स्लो बॉल किया एक बार, फिर उसको निकल के मारने चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ना टाइमिंग, ना एलिवेशन, ना फोर्स। अली मंजूर कल की निस्बत आज बेहतर बॉलर लग रहे हैं। एक बार फिर आई लाइन के ऊपर से गेंद लाने की कोशिश की उन्होंने असद शफीक के भी। इस सीजन में उनका पहला कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ 184 पर 2। फाद मुनीर जिन्होंने ज़्यादा बॉलिंग की नहीं है पहले मैच के बाद से, दाएं हाथ से लेग स्पिन करते हैं। इस मैच में इन्होंने रन्स बनाए हैं, वो भी एतमाद साथ होगा। या शायद वो चाहते हैं कि जल्दी से 2 ओवर किए जाएं। 6 मिनट लगभग हैं अभी लंच के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंसंट्रेशन खो बैठते हैं जब पार्ट टाइमर बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है। खुद भी साद नसीम लेग स्पिनर है पार्ट टाइमर। लेकिन क्या शानदार रिकॉर्ड है तारिक भाई, 23,966 रन इन दोनों के दरमियान है। असद शफीक और खुरम मंजूर 12,340 रन खुरम मंजूर ने बना रखे हैं, 11,626 रन असद शफीक ने बना रखे हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर बैटिंग पाकिस्तान डोमेस्टिक में है नहीं इस टाइम। जी हाँ, बिलाशुबा ये दोनों जो हैं ये इस वक्त सबसे मंझे हुए बैट्समैन है डोमेस्टिक क्रिकेट की। मंझी हुई पार्टनरशिप है जो कराची को मैसर है, असद और खुर्रम की। लेकिन एक सवाल तो होना चाहिए कि हम पिछले मैचों में भी हमने देखा जब नया बैट्समैन आता है तो ये नॉन रेगुलर बॉलर्स क्यों बॉलिंग कराते हैं साथ, या तो खुद बॉलिंग करने आ जाते हैं या अभी असद शफीक आए हैं तो उनके सामने फाद मुनीर जो किसी भी वक्त
जो है रन्स की इनायत कर सकते हैं, कोई शॉर्ट गेंद गिरा सकते हैं। आप खाने का वक्फा सर पर था, आप एक बॉलर और जो एक ओवर और आप अहमद दानियाल से करा सकते थे। जी आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए था कि आप एक ओवर अहमद दानियाल से करवाते, लेकिन शायद वही पॉइंट है कि आप 2 ओवर जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं, इससे वो जो एडवांटेज जिसकी आप बात करते हैं वो मिस आउट कर गए। 60 ओवर्स के बाद 185 पर 2। स्लिप है, इसके अलावा सिली मिडॉन है। खुर्रम मंजूर की कोशिश यही होगी कि वो ये ओवर खुद ही निगोशिएट करें। अली मंजूर के हौसले अब बुलंद हो गए। विकेट है, ये ले आती है एतमाद, जितना भी खोया हुआ हो। और क्लियरली आप देख सकते हैं उनकी बॉलिंग वेरिएशन में, उनकी पेस में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। अब वो हवा दे रहे हैं बॉल को, क्योंकि स्पिन भी मिला है। आपको याद हो जब इससे पिछले ओवर में खुर्रम मंजूर को इन्होंने बीट किया था स्पिन से, उसके बाद से एक डिफरेंट अली मंजूर नज़र आए, हमें कॉन्फिडेंट अली मंजूर नज़र आए, और उसके साथ जब विकेट हासिल कर लिए तो उससे 2 दुगनी हो गई है, वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया। सामने खेला, फील्डर को पीछे पाया और एक रन हासिल किया। अहमद बशीर ने थ्रो जो है बहुत दूर उनके हाथ से निकल गई थी। तो पसीना आ रहा है इस वक्त हथेलियों में। एक और गर्म दिन है। लाहौर में मौसम बिल्कुल तब्दील होकर रह गया बारिशों के बाद। पिछले दोनों मैचेस में एक बारिश भी बड़ा सबब था मैचेस के ड्रॉ होने की, लेकिन इसमें मौसम साफ है, तो अगर 1-2 विकेटें और गिरती हैं तो यहाँ पर ओवर्स जो हैं वो ज़ाया होने का इम्कान बहुत कम है। उम्दा बॉलिंग, एक और अच्छा ओवर अली मंजूर की जानिब से। सिर्फ एक ही रन उन्होंने दिया, बैट्समैन को अगले कदम पर ला रहे हैं। ये अच्छा आसार 186 पर 2। और अच्छी अर्जेंसी दिखा रहे हैं लाहौर वाइट्स, विद इन द ओवर बहुत जल्दी से तब्दीलियां कर रहे हैं, बहुत जल्दी से दूसरे एंड पे विकेट कीपर भाग के आ रहे हैं, स्लिप का फील्डर, क्योंकि वो चाहते हैं कि लंच से पहले मैक्सिमम बॉलिंग की जाए, दोनों बैटर्स को मैक्सिमम चांस लिया जाए। आमतौर पर ये वो वक्त होता है जहां विकेट कीपर जो हैं उनको भी खबरदार रहने की जरूरत होती है। और उठाकर खेला, इस बार 2 फील्डर्स के दरमियान गेंद गिरेगी। अली मंजूर कवर्स में थे, बाउंड्री लाइन से आ रहे थे। बिलावल इकबाल मिस टाइम कर गए और खराब शॉट खेल गए थे। खुर्रम मंजूर यहाँ ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे लाहौर वाइट्स वाले, अपने प्लान में फ्रस्ट्रेट कर दिया था खुर्रम को, एक गलत शॉट खेलने पे मजबूर कर दिया था, और यही इनकी जीत थी कि आप जल्दी जल्दी कीजिए, एक ओवर और कीजिए, थोड़ा चांस दीजिए अपने आप को, और ऐसा ऑलमोस्ट हो गया था। यहाँ ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद इनके हाथ से अच्छी निकल रही है। पिछले ओवर में इन्होंने 2 बार गुगली करने की भी कोशिश की। तो स्पिनर्स के लिए इस पिच में है मदद अगर आप अच्छी जगहों पर गेंद गिराएं, क्योंकि पहली इनिंग्स में नौमान भी 6 विकेटें लेकर गए हैं। अभी तक तो इम्प्रेसिव नजर आए हैं फाद मुनीर, कोई गलत बॉल नहीं किया। हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं नॉन रेगुलर लेग स्पिनर से कि एक लेंथ में चूकेगा या एक खराब जरूर बॉल करते हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, बड़ी कंट्रोल्ड बॉलिंग की है, अच्छी पेस से बॉल किया है और फ्लाइट भी दी है, दलेर बॉलिंग की है। यहाँ पे सिंगल हासिल करेंगे तेजी से असद शफीक।
फाद मुनीर का ये दूसरा ओवर और ये सेशन तमाम हुआ। 188 रन कराची ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। इस सेशन में उन्होंने 82 रन बनाए और 2 विकेटें लाहौर ने हासिल की। खुर्रम मंजूर अभी भी मैदान में नाकाबिल शिकस्त से 66 रन पर वो वापस आ रहे हैं, लेकिन लाहौर की टीम को भी इत्मीनान मिला है। ये जो आखिरी 45 मिनट थे जिसमें उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, इससे एक आस लगी है। खेल ही ऐसा है जिसमें यास के साथ आस रहती है हमेशा, तो इससे किसी हद तक इत्मीनान हुआ होगा। इस सेशन का जैसे इख्तिताम हुआ है, साथ नसीम एंड कंपनी के लिए सीनियर खिलाड़ी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं जूनियर्स के साथ। ये दोनों ही टीमें मैं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा विकेट्स नहीं खोई। आखिरी 1 घंटा जो है वो लाहौर वाइट्स के नाम रहेगा। जो पहला घंटा था वो डेफिनेटली कराची रीजन के नाम रहा, क्योंकि तब खुर्रम मंजूर और अहमद आलम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अच्छा कम बैक किया अली मंजूर ने और अहमद दानियाल ने, जिन्होंने एक विकेट हासिल की। लेकिन यहाँ पे जो फोकस है वो ज़्यादा अहमद आलम पे रहेगा, तो उन्होंने बहुत शानदार सेंचुरी स्कोर की सिर्फ 159 बॉलों पे। खुर्रम मंजूर डटे हुए हैं इस 66 रन पर। दानिश ने गलत शॉट खेला, एक विकेट हासिल की अहमद दानियाल और अली मंजूर ने, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ी। 19 ओवर 81 रन दिए और 1 विकेट हासिल की अली मंजूर ने। साथ नसीम, फाद मुनीर, अहमद बशीर और बिलावल इकबाल विकेटलेस रहे। आज सुबह जिस वक्त खेल शुरू हुआ तो 106 रन पर कोई विकेट नहीं गिरी थी कराची की। खुर्रम मंजूर के साथ अहमद आलम आए खेलने के लिए। रन जो हैं विकेट के पीछे बनना शुरू हुए फास्ट बॉलर्स पर, जिसके बाद स्पिनर को लाया गया। खुर्रम मंजूर ने चौका लगाकर अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मल की। अली मंजूर जो ये बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए। अहमद कल से वाड़े हाथों ले रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर को, आज भी उन्होंने छक्के लगाए सामने की जानिब। खासे महंगे साबित हो रहे थे उस वक्त। अली मंजूर इनसाइड आउट शॉट देखने में भी आया और इस दौरान दूसरी सेंचुरी मुकम्मल की। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है अहमद आलम के लिए गद्दाफी स्टेडियम। फिर ये खुशी का लम्हा लाहौर को मिला जब मिड ऑफ पर अहमद शहजाद ने कैच किया। दानिश अजीज ने ये दूसरी खुशी दी लाहौर को। खराब शॉट और किया इस तरह वो सिर्फ 9 रन पर अपनी विकेट गंवा गए। तो इस वक्त खाने का वक्फा है और वक्फे की दूसरी जानिब कराची वाइट्स की बैटिंग जारी रहेगी।
We're back once again to Gaddafi Stadium, Lahore for day 3 Quaid-e-Azam Trophy. It's Lahore Whites taking on Karachi region. It has been a moving day of cricket where we saw a fantastic 100 by Ahmad Alam, 102 he scored. Danish Aziz looked shaky, lost his wicket right before lunch on 9. And it's up to Khurram Manzoor and Asad Shafiq, the two seasoned campaigners, the two most experienced batters of this domestic circuit, to take the inning along. 1 wicket each for Ahmed Danial and Ali Manzoor. Bilawal Iqbal, Ahmed Bashir, Saad Naseem, Fat Munir all searching for their first wicket so far. It's all up to Khurram Manzoor now. 66 not out. Very responsible inning. Like a senior pro, the way he has played, the way he has negotiated with the early on session, it was not easy, but he stuck on every given occasion. Scored some runs, scored some quality shots, was not afraid to go over the head. Some tickle down the leg side also, and completing his 50. Such a treat to watch somebody like Khurram Manzoor when in full flow. The way he carries his inning, the way he paces his inning, the way he takes his inning along. Such a blessing to have somebody like Khurram Manzoor and Asad Shafiq in their side. They give so much stability and solidness in the middle. Definitely Lahore Whites would want to see the back of either of them. And just before lunch, Lahore Whites did find some opening when Ahmad Alam lost his wicket on 102, and then came Danish Aziz, who looked in hurry, lost his wicket on 9. And now it's up to these two senior members to rebuild, make a partnership. Asad Shafiq still new, just 13 deliveries for him. But we know what he is capable of, what he can do. And on the other hand, it's the senior member, the senior pro, Khurram Manzoor, all set for another big one. 66 at the moment. And he's taken a lot of deliveries, 190 deliveries. That shows the temperament, the patience level, and the class Khurram Manzoor has. It will be Ali Manzoor to start off the proceedings. I have a feeling that wicket that he took of Danish Aziz, I think that will give him a lot of confidence. The rhythm is different, the pace is different. His ball is into his 20th over, 81 runs, a bit expensive, but he's taken that all-important wicket off Danish Aziz just before lunch. As I welcome along my side, Marina Iqbal. Thank you, Ali. Yeah, literally, Ahmad Alam took Ali to the cleaners, never allowed him to settle down. But I think that was a very irresponsible shot from Danish Aziz that brought the confidence back to Ali. You've got a very good foundation set by the openers. There's nothing much on a surface, and then you come out, have a long day ahead of you, and then you play such kind of shots. That doesn't really defy your character. Absolutely, Marina. And on a pitch with the runs available, why would you do that? There was no urgency of scoring runs. You could always take your time. Maybe learn something from Khurram Manzoor, how to pace your inning. Because there's nothing in the pitch. Literally nothing happening. Just a few patches. That's it, Marina. Yeah, it's again a cliche that we call paradise for the batters. No movement whatsoever off the surface. The bounce is pretty much decent. No surprises at all. So if you take your time, if you apply yourself and you have the right mindset, I think scoring 100 or even 200 shouldn't be a big deal. Bit of turn there from Ali. And I think these two experienced batters, Asad Shafiq and Khurram Manzoor, they will show you how you can bat on a surface like this. And they will make things pretty difficult for Lahore white bowlers. Over 23,000 runs between this pair. That's a phenomenal record. 188 for 2.
Right, Marina? Where is this match heading? What are the possibilities? What can happen? What should happen? Two different things. As we see Fahd Munir, the part-timer, still continuing. What should be the strategy from Karachi Whites? Because they trail by 321 runs. First up and foremost, that should be the concern for Karachi Whites to avoid the follow-on. And I think Lahore White bowlers will have to work really hard. I think the approach to start the day off was pretty good. They had a plan for every batter. They came in, they executed well. The bowlers were disciplined. But again, you need to keep repeating that sort of planning throughout the day. You cannot just let them batters settle in. Because as you mentioned, the amount of runs scored between these two batters, they're not going to give their wicket easily. So you have to think about something outside of the box. Oh, kept low. That's exactly that patch we've been talking about. In the first session, it was Bilawal Iqbal who bowled in the right area and in that right channel. The ball did kept low a few times. Over here again also. It's not quite visible, but whenever the ball pitches on that patch, it keeps low. And Bilawal Iqbal did do that a couple of times. Quicker one and very good piece of fielding by Ali Manzoor. It just could not quite gather it at the time, right time. Well done, Ali Manzoor. Confusion between Khurram and Asad. Yes, no, maybe. They're lucky they got away with it. That's the last thing they want, Karachi Whites, a run out. Oh my God. Throw should have been better towards the target, and I think that would have been curtains for Khurram. Well, what about the commitment level? It's not easy. And you're making a comeback. You're playing a game after 5 years in your hometown. You're struggling to get wickets, and then you make such effort in the field. It needs courage. It needs a character to be able to focus on such moments. They know they have to do something different. It has to be a team effort. That's away nicely, and that will race away for the boundary. Played it late, played it right underneath his eyes. The slightest of the room given, and he bounced on it. Width given. You're not allowed to do that. Somebody like Khurram Manzoor is going to put you away every time you bowl at that line and length. Easy pickings. 194 for 2. Marina, what would you do as a captain? Fine, Ali Manzoor, your regular spinner, is bowling from one end, which is fine. But from the other hand, Asad Shafiq still on 2, still new to the crease. Would you still go for your part-timer or bring back Ahmed Danial, bang in short a few deliveries, have a burst? That would have more chances of getting a wicket. I think with these sort of surfaces and conditions where there isn't much for the bowling side, whenever a new batter walks in, I would definitely go with my strike bowlers. I wouldn't mind Danial coming in, and even Ahmed Bashir, just to test and apply that sort of plan they had earlier. Don't give any room, don't give any freebies. Just keep targeting the same area again and again. And you know initially every batter has nerves. Because with the experience Asad and Khurram have, once they're settled, they will not allow you to get on top. So those early overs, that early time, that's where there might be a small window where you can get the wicket of them. Otherwise, there's no chance. That's why we've been talking about the first hour when Lahore Whites came in this morning. The strategy, the planning, the intensity was different. We saw some different out-of-the-box field positioning, but it changed pretty quickly. Yes, I understand Ahmad Alam was playing his shots. It was aggressive, but still, we've been talking about it, that you got to be patient enough with your plannings. As we talk about the bowlers or the batters, the captaincy or the planning has to be consistent. Got to be patient, but that didn't happen. It changed very quickly.
Even there was this one incident where the ball, where Bilawal Iqbal was bowling, the ball was keeping low, and he forced Ahmad Alam to play that shot, but it changed after that delivery. We'll continue talking about it. 65 gone, 194 for 2. This morning, even when Khurram and Ahmad Alam was batting, we saw that there was a phase when they felt uncomfortable with Ahmed Bashir bowling, that body line bowling off the back foot. And he kept the leg slip in, and the batters knew that there was a plan. And that at times makes you think a lot as a batter, rather than just straying along. And you get conscious that, okay, what they are trying to do, and I need to be proactive. In that process, you might fall for a trap. This length is not going to help. Bit of footwork by Ahmed Danial. Not before they come back for second. So again, coming back to the same point, you're giving away 2 easy deliveries to Asad Shafiq. Early on, this length is not going to bother him. And when you're new to the crease, you're not used to the bounce or the pace of the wicket. And when your strike bowlers come, they try to do something different. Be consistent, and you need to deal with that. That kept low again. And Khurram Manzoor wanted a single out of it. Wisely said no. I think it's wise from Khurram. He wants to take Asad off the strike because he's well settled in on 72. He knows the pace and the bounce of the surface. And again, we've seen that low bounce has been troubling Asad Shafiq. It's just outside off stump, the patch you were talking about. It's not that threatening, but again, you have to keep an eye on the bounce. Nicely driven through the gap. Against the spin. Asad Shafiq is gaining confidence now. This is not an easy shot to play against a leg spinner, but he has done it with some ease and quality. Brilliant batting. And poor bowling, I would say. Even captaincy. Have a look at that. Easy freebies for Asad Shafiq. He was struggling a little bit. You can see that he's shaky. But then again, you're allowing a caliber batter to just settle in. Shorter one, pulled. There is protection, just one. As Karachi Whites gets to 200 now. Remember, they need to get to 360 to avoid the follow-on. And if they too stay, it's going to happen very quickly. Because we know that once they too get set, as you were mentioning, it's a run feast after that. Again, a full toss. This is probably not smart cricket by Lahore Whites. Khurram Manzoor knew that he missed out on a boundary. 66 gone, 202 for 2. Any comments? What he might be thinking? He will be disappointed for sure, because you don't get such conditions that easy. Marina, and the shot he attempted. Even if the conditions are easy, you as a professional player, as a Pakistan player who has played international level, you should be more responsible. You should know that what the condition is, where your team stands. You've got a huge opportunity to score big, and casually you just throw away your wicket. Pretty ordinary that was. And what that has done has just given that opportunity for Ali Manzoor to regain his confidence. And now you can see he's a different bowler after that wicket. He's giving it air, he's bowling it slow because he knows that it's working. We haven't seen much of a feet movement from either Asad or Khurram, but Ahmad Alam was actually targeting Ali. But now he's all settled in. He's bowling at the good length, getting some perches. Just enough to unsettle a batter.
Good batting. Very sensible. Realizes that the fielder at mid-on is at the circle. He's played it with soft hand and rotated the strike. I think there's a lot of vacant areas for Asad Shafiq and Khurram Manzoor to just maneuver early around. That's not a good captaincy. I would like another fielder just close in your eye line, not giving away easy singles, because we know that Asad Shafiq probably will not target any bowler right now. But what he would like is easy singles to just rotate the strikes. Hey, you make a good point. And if you look at both the fielders at mid-on and mid-off, neither they're saving the boundary nor the single. That's where the trouble is. They're expecting these two senior members to make a mistake. That's not going to happen that easily. 67 gone, 204 for 2. Right, Marina Iqbal. Let's talk about women's cricket. What's happening there? Won a brilliant South African 3-0. You beat them. Got beaten in the ODI series. Then the Asian Games happen. Don't qualify. Where is Pakistan cricket heading under the leadership of Nida Dar? When someone takes my full name, I reckon something big is coming up. Well, yeah, that was a huge disappointment, to be honest. We've actually beaten South Africa at home series. That was a huge momentum, a huge boost for us. And then traveling to Asian Games, I've played there enough. The conditions aren't really helping for the batting side, but again, I think the execution should have been better. There was a lot of discussion going about trying different combinations. We added few youngsters there. But again, the senior ones should have taken more responsibility. What we need to do is to adjust quickly to the conditions. It's not going to be easy when you play on different venues. So as a batter, as a captain, as a team, you need to adjust quickly and execute well. And that's where Pakistan team has lacked. Beautiful batting. Khurram Manzoor at his very best. That is a drive of a highest quality as he continues to dominate. Fantastic. Punishable length, especially to a batter who's on 70. And Khurram Manzoor just leaning beautifully into it. Have a look at that, asking to be hit. Full face of the bat, good transfer of the weight off the front foot. Never try to overhit it. Found the gap perfectly. That's a classic drive. High elbow, steady balance at the crease. The only thing wrong about this shot was the cover of the helmet. And again, probably can somebody tell him that the logo is inside? Marina, please. I've seen that. And even yesterday, Salman Bhatt also had a go at it. Maybe it's his superstition. After the match, we all would like to find it out. Let's ask him. No, Marina, how can this be a superstition? No, it has to be a mistake that no one is rectifying. It cannot be a superstition. No, I'm not taking that. It doesn't matter. He's playing on 77. You need to see his batting, not the cover. And again, he's disappointed. Hit it too straight, too good. I'm not sure about that length. Ahmed is bowling. Probably throwdowns for him, Khurram Manzoor. Straight as an arrow. You like to see that as a batter, but not as a bowler. Few meters to the right would have gone straight down the ground. But he's enjoying his balance. The cover again. It's got my focus. You have to bring something out, haven't you? Quite easily done. He's too good for it.
too experienced for such bowling. So for such pace, he's very comfortable at the moment. KMK, they call him. Khurram Manzoor Khan. And that might be a statement of saying, my helmet, my way. There are a couple of more with logos outside. That's all right. No problems there. See, look, they're so nice. Neat and tidy. I'm going to end this discussion that his helmet, his way. Leave him. Not happening. While I'm with you. Nope. I'm gonna speak to him after the game. Can you please change it? Please do sort this out once and for one. 68 overs gone. Karachi Whites 209 for 2. Alian Mahmood. A rare off spinner. We haven't seen a lot of off spinners so far in this season. It's a genuine one. Should have been given a try in this kind of surface. Interestingly, Marina, only Multan were brave enough to play two spinners. We've been talking about it. The strategies that Multan had at Gaddafi Stadium has been the best so far. They were brave enough to add two spinners, win the toss, bat first, put themselves in deep waters, challenge themselves, and it almost paid off. Had it not rained, we might have seen a result there because their bowling on the last day was absolutely phenomenal. Off the back foot, nicely punched. Looks so good, looks so elegant, Asad Shafiq. Again, easy single off the back foot. So not trying to put any pressure whatsoever on Asad Shafiq. He's rotating strike easily. On the other hand, Khurram Manzoor is dominating. With the wrong cover of the helmet. Please sort this out, Ali. 100%. I'm going all the way to that end. Talk to him. That it's just so pleasing on eyes whenever you're batting or playing through the line. Got to do something about it. As Asad Shafiq faces Ali Manzoor. Coming back to the point of off spinners, I don't think it's a matter of courage. I think for a longer format, you do need a one. And it's when there's a genuine off spinner, it's not easy to dominate them in a longer format because they can be really disciplined. But again, I think it's more about the quality rather than the format, because in shorter formats, we've seen that this skill is probably dissipating. But again, my concern is if you have a quality off spinner, that can also help you in shorter format as well. We'll continue talking about the off spinner, Alian, as we come to end of 69 overs, 212 for 2. They're talking about off spinners. Even we're searching for an off spinner, quality off spinner. In international side also, there's one sitting in the bench. This Bilal Asif playing grade 2 cricket for Sialkot. Then Sajid Khan also. Qasim Akram, Mubassir, all-round cricketer. So once you identify a talent, a skill in a bowler, you got to give him the opportunity. And this was a good opportunity if they had played Alian on a pitch which might turn on the last day. We already seen some turn. I think unfortunately the trends globally coming up to the surface has a lot to do with this. Because genuinely when we see an off spinner struggling at international level or in a shorter formats, even in longer formats,
this kind of a conception that maybe they won't be that effective. And I'm not all in for trends to follow, because you need to identify your own strengths, your own quality of the bowlers and batters, and then follow up a plan. It's not necessary that all of the off spinners struggle to dominate the game, or it's also not guaranteed that the left armers or the leg spinners will actually help you win games, because again, all comes down to the quality and how you utilize a certain player or a bowler. Or how you want to develop a player also. This is something that is missing. Not developing enough off spinners. Again, through the gap. This is brilliant. This is gorgeous. This is fantastic by Khurram Manzoor. There is no stopping him. Again, the length, that's my biggest concern. With an older ball against a quality batter like Khurram Manzoor, this length will be very costly. Have a look at that. It's genuine pace. Outside off stump, just reaching for it. Full follow through. The fielder had no chance. You need to adjust your length with an older delivery. These are like freebies for Khurram. Such a tricky thing, finding your right length. Because if you're off length for a little margin, somebody like Khurram Manzoor is going to punish you. This is better. This is what Marina is suggesting. This length, a bit on towards the shorter side. The previous occasion, he was too full. And somebody like Khurram Manzoor is not going to miss out. He's too good for that. So you got to be spot on bowling against him. You got to be consistent. That was a better comeback by Ahmed Bashir. Need to hit consistently that 6-7 meter mark on the pitch from the popping crease. Even then your line should be targeted towards stumps. That's better. Good comeback. He's learned his lesson. Dot to end the over. 70 overs gone. 216 for 2. Coming back to your point of developing off spinners, again, I would say that it has a lot to say whatever's happening around globally. Because when you conceive the concept that maybe this sort of skill is not going to aid you, you just give up on it. And we know that this young generation, the Gen Z we usually call, it's really hard when you talk to them about what sort of skill they would like to flourish. Most of them will not opt to become an off spinner. Down the track, launched it. Asad Shafiq, he's well settled in to take the attack back to Ali. Quality, proper quality. We've been talking about it, that the quality Asad Shafiq has, it doesn't take him long to come down the track and put it over the head of mid-on fielder. So pleasing on eyes, Asad Shafiq, whenever he's looking to be positive. Still has got enough in him. Still is a class act. There's no argue about that. We've seen how agile he was in the field. I know people, not many people will like me saying it. I'll still take him for that Australia tour. The way he is fielding, the way he's moving around, the need of the team also, he fits in. This might make a few people unhappy, but still I would take him. That's better bowling. Saw him coming down the track, adjusted the length and line. There's no doubt about his quality and his temperament. He's a fighter for sure. He's not that tall. He can negotiate the length, the pace, spin. He's very strong in all those areas. He's fit enough, he's agile enough, so why not? He's got ample experience. You can tell by the way he's moving around. The way he's shifting his balance on off the back foot, and then suddenly the very next delivery is coming. He's dancing down the track.
to play it over the head. Shows the skill and the class of the man. It's good call. Good running. Very good running. Put the pressure on the fielder. And then again, same point that you were talking about. That fielder there is neither saving a boundary nor a single. He's probably a waste there. Just rock him out to the back foot. Forward press, and then he's agile enough to go on the back foot. Caresses it away for a single. Surprised Khurram though. I think he wasn't ready. He's not happy, but he never is. That's all right. But what about Faik, the substitute? That was hit hard. He's apologizing to the youngster. That's good spirit shown by Khurram Manzoor. 71 gone, 221 for 2. अहमद बशीर जारी रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टनरशिप अब आगे बढ़ने लगी है। 38 रन दोनों मिलकर बना चुके हैं। असद शफीक भी खासे मोहतात हैं। आमतौर पर जो है यकसा रफ्तार से ये बैटिंग करते हैं, अच्छी रफ्तार से खेलते हैं असद शफीक, क्योंकि इनके पास स्ट्रोक ज़्यादा हैं खुर्रम मंजूर की निस्बत। बिल्कुल, असद शफीक तो ज़्यादा बेहतर ऑलराउंड प्लेयर हैं। विकेट के चारों जानिब इनके पास रेंज अच्छी है। रन रेट कराची की इनिंग्स का बड़ा है पहले की निस्बत, 3.11। शफल करते हुए सामने आए। आज सुबह से ही खुर्रम मंजूर के पैड्स को हदफ बनाने की कोशिश की है लाहौर के मीडियम पेसर्स ने, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर गेंद इन स्विंग भी हुई, लेकिन उस पैड्स को बचाए रखा है क्योंकि सेट हैं खुर्रम मंजूर। चंद साल पहले हमने देखा है कि खुर्रम मंजूर ने अपनी टेक्निक में तब्दीली की है। जब वो स्टांस लेते हैं तो उनका जो पंजा है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं जाता, थोड़ा सा ओपन हो गए स्टांस में, और जो उनका बायां पैर है उसका पंजा तकरीबन स्ट्रेट डाउन द विकेट होता है। खास तौर पर बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन अभी भी थोड़ा सा उनका स्टांस ओपन है, जिसका यही मकसद है कि इन स्विंग पर उनका बल्ला जो है वो सीधे पाथ में नीचे आए और पैड के पास से घूम कर ना आए, जिसकी वजह से वो देखिए ये बॉल तो ऑफ स्टंप से बाहर थी। जो विकेटों में आती हुई बॉल है, ये देखिए अभी भी इनके पंजे का रुख जो है बिल्कुल पैरेलल नहीं है। जो पॉपिंग क्रीज है मिड ऑफ की तरफ इसका रुख है, और वो यही वजह है कि वो अपने बैट को सीधा लाना चाहते हैं। ज्यादा बेहतर बैलेंस का हुसूल होता है और अंदर आती हुई गेंद के खिलाफ बेहतर दिफा होता है। ये जहाँ जिन दिनों ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले थे तो उन दिनों ये भी बात होती थी कि इनका जो वेट ज़्यादा एड़ियों पे रहता है, अगली एड़ी पर रहते हैं, लेकिन आज अच्छा तवाज़ुन रहा है इस इनिंग्स में। और ये उस तरह के बैट्समैन हैं जो थकाते हैं मुखालिफ टीम को और उसके बाद रन्स बनाते हैं। लंबी इनिंग्स खेलने की हमेशा से रसिया रहे। अच्छा शॉट खेला, इस बार खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर हाफ वॉली, और उसका खूब फायदा उठाया खुर्रम मंजूर ने ऑफ द टोज। इन स्विंग पे अटैक किया है अहमद बशीर ने, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा चूक गए लाइन में, और खुर्रम मंजूर बिल्कुल तैयार थे। अच्छा बैलेंस रहा यहाँ पे और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया। भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक। खुर्रम मंजूर का ताकतवर कलाइयाँ हैं इनकी, और सबसे ख़ास बात यही है कि गेंद अपने जोन में आने का इंतज़ार करते हैं स्ट्रोक खेलने के लिए। रन रेट इनका आपको स्ट्राइक रेट कम नज़र आएगा।
लेकिन ख़राब गेंद ये छोड़ते नहीं हैं खुर्रम मंजूर। दूसरा रन लेना चाहते हैं और ये आसानी के साथ बन भी जाएगा क्योंकि फील्डर बहुत दूर से आए थे बिलावल इकबाल, क्योंकि वो ज़्यादा स्क्वायर के सामने खड़े किए गए हैं। खुर्रम मंजूर स्क्वायर के दोनों जानिब क्योंकि रन्स बना रहे थे। अगले ओवर में मजीद बात होगी इस पे 228 पर 2। बिलावल इकबाल थे फील्डर, और कोई भी कोच जब ये देखेगा तो इसको पसंद नहीं करेगा, इस एफर्ट को। अपने पैर का इस्तेमाल किया। कोचेज इस चीज की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते, और किसी भी यंगस्टर के लिए भी ये तरीका नहीं है अच्छी फील्डिंग करने का। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, झुकना चाहिए, डाइव लगानी चाहिए, स्लाइड, और गेंद को हाथों से फील्ड करना। ये बहुत पुराना तरीका हो गया है पैर से बॉल रोकने का। आजकल फास्ट बॉलर ज़्यादा एथलेटिक होते हैं, लेकिन तमाम ही प्लेयर्स की जो चुस्ती और फुर्ती का मयार है वो काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए ये बड़ा अजीब व गरीब लगता है आजकल के दिनों में। जी हाँ, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के साथ अब क्रिकेट में जिंदा रहना ये खासा मुश्किल हो गया है। अगर आप बॉलर हैं तो आपको अच्छा फील्डर तो होना ज़रूरी है, आपको कुछ कुछ बैट्समैन भी होना चाहिए। एक ज़माने में ज़्यादा नहीं तवक्को की जाती थी कि ये फास्ट बॉलर हैं या कोई भी जो बॉलर हैं वो अच्छी फील्डिंग करेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे क्रिकेट का इर्तिका हुआ और जो ऑस्ट्रेलिया जो टीम थी, ख़ास तौर पर कीथ मिलर के ज़माने से रिची बैनो की जो टीम थी उसने फील्डिंग पे एम्फेसाइज करना शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम पाकिस्तान भी आई थी 1959 के दौरे में, रिची बैनो जब उस टीम के कप्तान थे। ये दो लोग जो हैं ये दो ऐसे बॉलर थे, हालांकि एक स्पिनर थे रिची और जो कीथ मिलर थे वो फास्ट बॉलर थे। तो यहाँ से दौर शुरू हुआ था। इनके कंधे में लगता है कि कोई मसला है, और बाएं कंधे में ऐसा झटका इन्हें लगा है, जो उनका नॉन बॉलिंग आर्म है, लगता है कि वहां पे, और अब तो बिल्कुल वो अपना हाथ गिराना भी नहीं चाह रहे। जिस तरह एक स्लिंग पोजीशन में होती है उस तरह हाथ को उठा के रखा है कोहनी को। अहमद दानियाल बड़ी जी जान से बॉलिंग कर रहे थे, शायद इस गेंद के बाद उन्हें कुछ हुआ इम्पैक्ट। फौरन ही आप देख सकते हैं उन्हें तकलीफ का एहसास हुआ और बाएं कंधे को उन्होंने पकड़ लिया। जहाँ कंधे में तकलीफ लग रही है, पिछले बरस इनका दायां कंधा गिरने की वजह से जख्मी हुए थे और बहुत देर तक क्रिकेट से आउट रहे। उम्मीद करेंगे कि जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि इनके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी है लाहौर की। नसीम शाह यहाँ कुछ अर्सा पहले फील्डिंग करते हुए वो गिर गए थे एशिया कप के दौरान, और वो बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। नसीम शाह का जो कंधा जख्मी हुआ, तो एक इतना बड़ा खला आ गया है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में नसीम शाह के जाने के बाद। जो कंधे की इंजरी का जिक्र हो तो जरूर जहन नसीम शाह की तरफ जाता है, और अगर देखा जाए तो वो 3-in-1 बॉलर थे पाकिस्तान के लिए। ये अच्छा शॉट नहीं है, दूर से स्वीप खेलने की कोशिश की, अच्छी बॉलिंग अली मंसूर की, लगता है इनके भी कंधे पे लगी। और इनके कंधों पर भी भारी जिम्मेदारी है कराची को फॉलो ऑन से बचाने के लिए। स्लो किया थ्रू द एयर और वेट कराया असद शफीक को। ज्यादा बुरी शाउट नहीं थी, असद शफीक ज्यादा तवील कामत नहीं है यार, बहुत ज्यादा बाउंस भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है अली मंसूर को, जिनकी बहुत उम्र भी नहीं है, उनको अच्छा लग रहा है बॉलिंग करते हुए देखकर। इस मैच में उन्होंने सवाल पूछे हैं, क्योंकि कराची के जो बैट्समैन हैं रिवायती तौर पर ये स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं,
तो आप जब असद शफीक या खुर्रम मंजूर जैसे बैट्समैनों को बॉलिंग करते हैं तो आप सीख कर जाते हैं, लेकिन इस बार बुरी तरह पेश आए और बाहर निकलकर मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया असद शफीक ने चौके के लिए। तो क्रीज से उनको परेशानी हो रही थी अली के सामने। जिन्होंने इनकी पेस को अच्छा रीड किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लाइट में डिफीट हो गए। ज्यादा बल्ले के बीचों बीच बॉल आई नहीं, थिक इनसाइड एज लगा और खुशकिस्मत रहे फील्डर के सर के ऊपर से बॉल निकल गई। लेकिन ये एक अच्छा मुकाबला है और फाइनली ऐसा लगता है कि अली मंजूर ने वो पेस डिस्कवर कर ली है जो इस पिच पे कारगर साबित हो सकती है। यहाँ एक लाइन को भी इख्तियार किए रखा है, यहाँ पर बैट्समैन को ज्यादातर सामने लाते रहे हैं अली मंजूर। यही फर्क है कल और आज के अली में, 232 पर 2। बात कर रहे थे कंधे की इंजरी और नसीम शाह की। मैं कहता हूं कि वो 3 in 1 बॉलर थे, तो आपके बैटिंग पावर प्ले में भी वो बॉल करते हैं नई बॉल के साथ, फिर मिडल ओवर्स में अगर आपको विकेट चाहिए तब भी वो कारगर साबित होते हैं और अच्छे डेथ बॉलर भी हैं। एक बॉलर के जाने से पाकिस्तान का पूरा बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है वो मुतासिर हुआ है। बिलाशुबा शायद पाकिस्तान के वो इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑलराउंड बॉलर हैं। शाहीन की अफादियत नई बॉल से तो बहुत ज़्यादा, इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं। यहाँ तीनों फॉर्मेट्स में क्योंकि उनकी अहमियत थी, तीनों फॉर्मेट्स वो खेलते हुए आ रहे थे और ये नसीम शाही थे पिछले 12 माह से, जब से इनका वनडे करियर शुरू हुआ। तो पाकिस्तान की जो वनडे टीम है इसमें एक पेशरफ नज़र आई, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम रन्स तो बना रहे थे, मोहम्मद रिजवान भी, बाबर आजम भी वनडे क्रिकेट में, लेकिन ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था, इसको रन्स डिफेंड करने में मुश्किल हो रही थी। अलबत्ता जो ही नसीम शाह आए तो इस बॉलिंग अटैक की रंगत बिल्कुल बदल गई। जी बिल्कुल, और उनकी अहलियत और काबिलियत में तो पहले भी कोई शक शुबा नहीं था, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है पिछले 12 महीने में वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हुई और उनका नुकसान इसीलिए एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए मेगा इवेंट से पहले। बहुत जोरदार तरीके से खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से और अंपायर ने इसे छक्का करार दिया। फाद की ये फ्लैटेड गेंद थी और कोई मुश्किल पेश नहीं आई। खुर्रम मंजूर अब 90 के पेटे में और आगे बढ़ते हुए। जब आप बात करते हैं कि कराची के बैटर स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, तो एक खासियत ये भी है कि पार्ट टाइमर फहद मुनीर को उन्होंने मिल्क किया है और गाहे गाहे उनको रन्स बना रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा रन्स नहीं बना रहे कि कप्तान उन्हें तब्दील करने का सोचें। ये भी एक अच्छी बैटिंग की कहानी है, जब आप पार्ट टाइमर को रन्स भी बना रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि उनका कप्तान जो है वो उन्हें बॉलिंग से हटा दे। 4 ओवर्स में 4.5 ओवर्स में 24 ही रन दिए फाद ने, लेकिन मुश्किल कोई नहीं किसी भी बैटर के लिए। अब ये वो मरहला आ गया है क्योंकि 6 ओवर्स के बाद अगली नई गेंद आनी है और ये बदकिस्मती होगी लाहौर की अगर अहमद दानियाल वापस मैदान में नहीं आते हैं, क्योंकि मुमकिन था कि उनसे दूसरी नई गेंद कराई जाती। आज जिस तरह के बॉलिंग रिदम में वो लग रहे थे, उन्होंने विकेट भी हासिल की थी, तो ये वो वक्त होता है जहां आपको जो आपका छठा ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन बॉलिंग में, आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरी नई गेंद से पहले। 241 पर 2।
पिछले ओवर में जिक्र कर रहे थे अली मंजूर का, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बॉलर के लिए, जब वो रियलाइज कर लें कि किसी भी पिच पर उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए। और यहाँ इस लाहौर की पिच पर नुमान अली ने भी ये कुलिया खासी देर से दरियाफ्त किया। अली मंजूर को भी 24 ओवर लगे। जरूर है कि 5 साल बाद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक नर्वस एक्साइटमेंट जो होती है वो जरूर हुई होगी। अब ओवर द विकेट आ गए हैं। यहाँ खुर्रम मंजूर के अब इन्होंने दरअसल कोर्ट में गेंद डाल दी है कि आप यहाँ से स्वीप लगाइए। पिछले ओवर में असद शफीक ने स्वीप करने की नाकाम कोशिश की थी। अली मंजूर के सामने 2 रन खुर्रम मंजूर को दरकार हैं। और इस बार गेंद स्पिन होकर निकल गई। स्लिप में कोई फील्डर नहीं था और खुर्रम मंजूर की इस तरह ये सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। ये 22 के रन हैं, अभी इंतजार करना होगा। अंपायर का ख्याल है कि गेंद सबको छोड़ती चली गई। रफ में से ये बॉल स्पिन हुई, पिच हुई लेग स्टंप से काफी बाहर। और अगर आप देखेंगे जब रिप्ले आएगा कि विकेट कीपर फरहान भी लेग स्टंप के बाहर के एरिया को कवर कर रहे थे, इसलिए वो गेंद से कोसों दूर रह गए। रफ में पड़ी गेंद और तेजी से टर्न हुई। खुर्रम मंजूर को अब 1 रन लेने का मौका मिला। वो 99 पर आ गए और कज़ाफी स्टेडियम इनके लिए अच्छा मैदान साबित हुआ है। 5 सेंचुरियां इससे पहले बनाई हुई हैं। यहाँ लाहौर आकर खुर्रम मंजूर ने इनके करियर में 33 सेंचुरियां इससे पहले देखी गई हैं और असद शफीक को भी ये जारी रहेंगे। यहाँ अराउंड द विकेट टीम, कराची की टीम अपने दूसरे बैटिंग पॉइंट से 1 स्ट्रोक दूर है और लाहौर का ये ख्याल है कि अब उनको तेज से रन्स ना बनाने दिए जाएं। रन रेट को तो काबू किया हुआ है, हालांकि थोड़ी सी रफ्तार में इजाफा हुआ है रन्स बनाने की। लेकिन यहाँ जिस तरह बॉल रफ से स्पिन हुआ है, बुरा आइडिया नहीं होगा अगर एक सिली मिड ऑफ पे फील्डर रख लें, क्योंकि अगर कोई बॉल स्पिन हुआ तो बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खेलने में डाउट में ला सकते हैं। कहीं भी जरा सी हेल्प जब बॉलर के लिए मौजूद होती है या मिलती है तो मैच में एक नई एक्साइटमेंट आ जाती है, क्योंकि ये दर हकीकत है तो बैट और बॉल का मुकाबला ही। अगर ये मुकाबला बराबर का हो तो खेल दिलचस्प होता है। अपनी बैक लिफ्ट और ज्यादा लो कर ली है खुर्रम मंजूर ने, जो सेंचुरी के करीब आए हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहते। 247 पर 2। फुल टॉस, फील्डर थे पीछे लेकिन गेंद इतनी खराब थी कि कोई मौका नहीं आबिद अली के पास। चौके के साथ आगाज किया इस ओवर का असद शफीक ने और ये बहुत देर से मुतवक्के था ये नॉन रेगुलर बॉलर की जानिब से कि आएगी फुल टॉस। कहीं पे भी इसे हिट लगा सकते थे असद शफीक, और मिड विकेट के फील्डर से उन्हें दूर गेंद को खेलना था और ऐसा करने में कामयाब हुए। फहद मुनीर ओवर में ज्यादा नहीं तो 1 बॉल जरूर देते हैं जो बाउंड्री बॉल होती है। या इस ओवर में खुर्रम मंजूर भी चाहेंगे कि उनको सामने आने का मिल जाए मौका फहद के सामने ही। असद शफीक इस बात को जानते हैं, इससे फुल टॉस को भी वो सीधा खेले। उनने मदद की है खुर्रम मंजूर की कि वो पहुंचे, इस मील पत्थर को पीछे छोड़े। मदद की या नहीं, क्योंकि वो मायूस थे इस फुल टॉस पे मिस आउट कर गए, लेकिन बहरहाल मौका मिल गया खुर्रम मंजूर को।
जी हाँ, और ये रही सेंचुरी, शानदार इनिंग्स खुर्रम मंजूर की, उनकी 34वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी। और शुरू में उन्हें बहुत एहतियात का दामन थामे रखा और आज खुलकर खेलते हुए भी नजर आए। पहली सेंचुरी इस सीजन की ओपनिंग बैट्समैन की। रावलपिंडी में 84 रन की इनिंग्स खेली थी पहले मैच में और लाहौर के मकाम पर ये इनकी छठी सेंचुरी है और बिलाशुबा ये इस मसरत के हकदार थे। जी बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स और खुर्रम मंजूर से तवक्को थी, जितनी इनकी टीम प्रेशर में थी, तकरीबन पौने 2 दिन ये फील्ड में रहे, लेकिन जब आए तो अपनी टीम के लिए ज़बरदस्त आगाज़ मुहैया किया, अपने टीममेट्स को भी आराम का मौका दिया, अपनी इनिंग्स को तूल दिया आज सेंचुरी तक। लेकिन ये खुर्रम मंजूर की आदत है, ये सेंचुरी पर इक्तफा किया नहीं करते और मज़ीद अगली से अगली मंजिल की तरफ बढ़ने की इनकी जस्तजू होती है, अपनी टीम को वापस गेम में लेकर आए और वो जो खसारा था वो तकरीबन आधा रह गया। फील्ड इस वक्त खासी खुली हुई है, लेग साइड में 3 फील्डर बाउंड्री राइडर हैं, ऑफ साइड में इस वक्त लॉन्ग ऑफ है और साथ साथ डीप कवर्स भी। वनडे की फील्ड लगती है अगर आप जो है कपड़ों के रंग पे ना जाएं। फहद मुनीर से 6 ओवर करवा लिए हैं साद नसीम ने, खुद वो ज़्यादा रेगुलर बॉलिंग करते हैं। इस इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर किया है और अब जब अहमद दानियाल बाहर हैं तो लगता है साद नसीम को खुद पे भी इन्हिसार करना पड़ेगा किसी स्टेज पर। आसान रन्स इस ओवर में देते रहे, चौके से इसकी इब्तिदा हुई थी, 8 रन्स इस ओवर में दे चुके हैं। एक अर्जेंसी नजर आ रही है खुर्रम और असद शफीक के यहाँ। अंपायर ने ओवर ख़त्म करार दिया, हालांकि जो हमारे स्कोरर हैं उनके मुताबिक एक गेंद अभी भी बाकी है, 255 पर 2। जब आपके एक मेन बॉलर जो है मैदान से बाहर चले जाएं, जो आपकी पहले ही एक कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। देखना होगा कि बिलावल इकबाल और अहमद बशीर को कैसे यूज़ करते हैं। अली मंजूर तो बहरहाल जिस तरह का रिदम उन्होंने हासिल किया है पिछले आधे घंटे 40 मिनट में, तो वो तो लगता है कि मज़ीद लंबी बॉलिंग उन्हें एक एंड से करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बरक्स साद नसीम ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया बॉलिंग में, क्या वो खुद यहीं से बॉल करेंगे और अली मंजूर का एंड चेंज करेंगे? क्योंकि फहद और साद ऐसा लगता नहीं कि दोनों साथ साथ बॉलिंग करेंगे ज़्यादा देर। जहाँ अभी 4 ओवर्स बाकी हैं, इंतज़ार करना होगा दूसरी नई गेंद का। आप समझते हैं कि ये नई गेंद लेंगे यहाँ पर अभी इस वक्त, क्योंकि उस पर यह भी खदशा होगा कि रन ज़्यादा तेज़ी से बन सकते हैं। फास्ट बॉलर्स की जो बॉलिंग फिटनेस है इस गर्मी में, उसको भी ध्यान में रखना होगा साथ को। जी मुश्किल फैसला होगा, लेकिन साथ अभी भी फॉलो ऑन से पहले 104 रन बाकी बचे हैं। अगर उस नुक्ता नज़र से देखें तो कोई और ऑप्शन है नहीं उनके पास। शायद नई बॉल से अली मंजूर को भी फास्ट बॉलर्स के 3-3 4-4 ओवर के बाद अगर यूज़ करें तो विकेट से कुछ जिप ज़्यादा मिले, तो एक हथियार तो है फील्डिंग टीम के पास, लेकिन उसकी कीमत ये हो सकती है 2 सेट बैटर्स के अगेंस्ट के रन्स की रफ्तार बढ़ सकती है। तैयब ताहिर सबसे आला फील्डर हैं लाहौर के। अभी तक इतना ये आप देख सकते हैं महसूस होते हैं अपनी फील्डिंग से भी, और ये अच्छे क्रिकेटर्स हमेशा ऐसा किया करते हैं। गो के इस मैच में जानते हैं उनकी टीम इस वक्त बैकफुट पर है, लेकिन आप ये फील्डिंग जो है ये आपके अपने बस में है।
आप इस पर मेहनत कीजिए, इससे महजूज होइए, तो ये खेल आपको और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तैयब ताहिर बेहतरीन फील्डर हैं। आप फील्डिंग में ज़्यादा बेहतर होते हैं जब आप महजूज होते हैं। इस तरह की लंबी फील्डिंग आपको करनी पड़े, अगर आप उसको बोझ समझने लगें तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर वही बोझ आपके जहन पे होता है जब आप बैटिंग करने चले जाएं। नहीं रीड कर सके हाथ से खुर्रम मंजूर। 1 रन उन्होंने हासिल किया। तो साद नसीम जो हैं उनके इस ओवर में भी 4 रन बने। कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा पेश आई नहीं दोनों बैट्समैनों को। 260 पर 2। जो बहस पिछले ओवर में हम कर रहे थे नई बॉल के मुतालिक, कि इसमें उसकी एक कीमत जरूर आपको अदा करनी पड़ सकती है कि रन की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त जो लाहौर वाइट से उनको विकेटों की जरूरत है। तो अगर साद नसीम की जगह मैं होता तो वो जरूर ये चांस लेता कि नई बॉल लें, और चाहे कि वक्फे से पहले 1 घंटे का खेल बचा है तो अपने फास्ट बॉलर्स को एक अच्छा तगड़ा स्पेल करने को कहें। यहाँ एंड तब्दील हुआ है अली मंजूर का, और एंड फौरन ही तब्दील किया। खुर्रम मंजूर ने भी पहली गेंद को बैकफुट से खेलकर उन्होंने रन हासिल किया। अच्छा लग रहा है कि एक फ्रेश गार्ड लिया। सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद भी तेज दौड़ना चाहते हैं विकेटों के दरमियान खुर्रम मंजूर। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है, क्योंकि जो अम्माद आलम थे वो इसी नातजुर्बेकारी का शिकार हुए थे। सेंचुरी मुकम्मल करते ही उन्होंने हवा में शॉट खेल दिया था। एक बार फिर ये 22 के रन होंगे और ये 4 हो सकते हैं। बट दौड़ते हुए गए थे, लेकिन गेंद उनसे दूर निकलती चली गई। विकेट कीपर जो हैं ये दोबारा नहीं झुक सके। फरहान विकेटों के पीछे, इनको मुश्किल हो रही है आज। जी उनके लिए कड़ी आजमाइश है। बिल्कुल उनके दोनों पैड्स के दरमियान से बॉल निकल गई और खड़े हो गए ज्यादा जल्दी, इसलिए वहां से फिर नीचे जाना मुमकिन नहीं। दूसरा चौका 22 का कंसीड किया है इन्होंने। रफ में से बॉल जा रही है, आसान नहीं है। आपकी टेक्निक और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी आजमाइश है ये। अली मंजूर का एंड चेंज किया है और पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। तो जो एफसी कॉलेज एंड के नज़दीक का जो एरिया है वहाँ कुछ फुट मार्क्स थे, लेकिन वो जो इस वक्त राइट हैंड बैटर हैं उनके ऑफ स्टंप के बाहर हैं। लेकिन जो हिकमत अमली है वो राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं जहां पे ज्यादा मार्क्स नहीं है। ये वो एंड है, अगर आप ये देखिए तो ऑफ स्टंप के बाहर कुछ रफ है, जो कि आइडियल तो नहीं है लेफ्ट आर्मर के लिए, लेकिन कोई बैद नहीं कि अगर आप इसी में बॉल को ऊंचा फेंकें और बैट्समैन को कवर की जाने खेलने पर इंटाइज करें तो आपको गैर यकीनी टर्न और बाउंस मिल सकता है। लेकिन शाह साहब अभी ये जो हमने मंजर देखा ये तीसरे दिन की पिच का, और क्योंकि आप मुस्तकिल पिच रिपोर्टिंग करते हैं तो ये सवाल होना चाहिए आपसे, ये पाकिस्तानी जो पिचेस हैं इस गर्म मौसम में भी ये टूटती क्यों नहीं है? आज तीसरा दिन है, अब तक मामूल के मुताबिक जो है पिचेस को टूट जाना चाहिए था। इतनी गर्मी में भी नहीं ये टूटती। तो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट है, फिर हैवी रोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी बरसात का मौसम गुजरा है लाहौर में और पंजाब में, तो बहुत ज़्यादा पानी जब लग जाए तो वो कॉम्पैक्ट इतनी हो जाती है कि वो आसानी से टूटती नहीं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के पिचेस पर 4 दिन तो क्या 8 दिन भी खेलें तो उस तरह क्रम्बल नहीं करती। 268 पर 2 और पानी का वक्फा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में।
Right, we're back after the drinks break. And what a fantastic 100 we have seen from the senior pro Khurram Manzoor. He took his time early on. When the situation got easy, he capitalized on and started playing those shots. He was not scared to go over the head of the fielder. And he was helped by some average bowling of Lahore White's bowler. This was the shot of the match so far, in my opinion, through the covers. It looks so pleasing on eyes. Plays it both ways. Attacking approach and that celebration. Still hungry for runs. Still hungry to do well at this age, Salman Bud. It's just amazing. Good afternoon, Ali. Yes, Khurram celebrating and being thankful to Almighty for 100 number 34 and perfect grind that he showed. Initially, he was quiet for a long period of time. He took his time, got well settled, came in the morning, again took his time, and then when the iron was hot, he struck properly. And he's got to his 34th 100. There he's sitting on 105. And Lahore Whites with a lot to do in the game. Yeah, they've been short of ideas. Lahore Whites. Salman, you were commentating early on in the first half hour. That's where we saw some out of the box thinking. That was the only time when we saw Lahore Whites use some strategies, do different things, different field positioning, but it just vanished so quickly. Yes, your last words were very important. It vanished so quickly. It's just been the case that they haven't been patient enough. They put up a good fielding, and then they start to bowl at one line, one length, 2-3 overs, and then they change suddenly. Saad Naseem starts his spell, starts it around the wicket, bowling with a defensive field, does not want Karachi to run away with lots of runs too quickly. And now it has come down to bowling round the wicket. And as Salman was saying, just run-saving deliveries. They're forcing the batters to make a mistake, not wanting to do something different themselves. But the experience Asad Shafiq and Khurram Manzoor have, it's most unlikely to happen that they're going to make a mistake. Karachi region trailing by 241 runs. Salman, still the focus will be on Khurram Manzoor. Only 23 batters have scored more first-class hundreds in the history of Pakistan cricket than Khurram Manzoor. Yes, he's been a prolific run-getter throughout his career in all forms of the game. Oh, relax, Saad. It's so much outside leg stick, pitching far away, and anything outside leg stump, pitching outside leg stump to be precise, is no way going to be declared as leg before wicket. So talking about Khurram Manzoor, he's been around for a long time and he's been very consistent. He likes to score big in all forms of the game. He has been successful, and there we see him. You're never getting those, Saad. Never getting those. Bowling round the wickets is always pitching outside the leg stump. And again, what do you make of this strategy, Salman, please? Well, it's a run-saving sort of a line. In other terms, you can also call it a negative line. But Lahore, shortage of resources. The over bowled, 79 gone now. 1 over till the new ball, 269 for 2 Karachi. Yeah, the other debate now comes up. If you take the new ball or not. Because A, you're bowling at a run-saving strategy. You're using that. And when the new ball comes, it gets relatively easy to score runs. So that's another decision Saad Naseem and the management and the coaching part have to make, whether to take it now or frustrate batters to make a mistake. If you were the captain, what would you do? Yeah, I'd rather refrain from doing that straight away. But I can see the new ball is in now. It is with the umpire. So the fielder has already brought it in. And we'll see what Saad Naseem thinks, how he goes about, what strategy he uses, because Ahmed Danial is not available. So if Bilawal and Ahmed Bashir are only going to bowl couple each, then there's no point. If anything, they don't get wickets, it will speed up the scoring with the new ball.
The good news is, Salman, that Ahmed Danial just come in, start of this over, standing on mid-on position, just warming up a little. By the look, it seems like they might take the new ball because he is warming up. You can see there, he pulled his muscle, and now the strategy has changed. That is experience. Now Khurram Manzoor standing way outside the leg stump just to negotiate. If it spins from here, might put him in danger. We have seen spin from Ali Manzoor. Yeah, and there's a bit of a rough on that side as well. But he's that comfortable now. He's watching the ball as if it's a football. He's trying to create scoring opportunities. At the moment, just gets an easy single. Spin again. It's something to look for. But then again, same question comes in. If you continue bowling Ali Manzoor with this old ball where he's getting the spin, or you bring in Ahmed Danial, get the new ball, put pressure. Trailing by 238 runs. Remember, 360 is what they need to get to avoid the follow-on. Karachi Whites. That is wide. That should be wide. Is wide. Well, if you consistently bowl on these lines, the umpire will have no choice but to give it a wide, which he has already given. And there are about 20 overs to go, and they require another 120 odd runs to get maximum batting points. Karachi, in this case, will be interested definitely in getting all their batting points available and then making the most of their batting, whereas Lahore, as yet, have not got one bowling point. So this will be the thing that would be interesting. Karachi Whites, 272 for 2 at the end of 80. Gone, which means new ball is available. It's up to the captain to decide whether he wants to take it right now or he wants to persist with the spinners. By the look, it seems like Saad Naseem is going to continue. Probably agreeing with what Salman was saying. At the moment, their strategy is to save runs, not to give away easy runs. Khurram Manzoor on 106, Asad Shafiq 36, two of the most experienced batters in Pakistan domestic circuit at the moment. Only Azhar Ali and Fawad Alam have scored more hundreds, currently playing members, if I talk about, more hundreds than Khurram Manzoor. 48 for Azhar Ali, 43 for Fawad Alam. Some talent. Oohs and ahs. Something, trying to do something. Yes, very few chances from this line to get a wicket unless the batter makes a big mistake or the ball does something exceptional, something unthought of. You need to have a skill like the late Shane Warne to create something happening from outside the leg stump. We have, how many times we've seen Shane Warne do that outside the leg stump, pitching it and then bowling off stump, hitting off stump. Fantastic, fantastic spinner he was. And Definitely, Ali, you're talking about a genius, a legend of the game, and somebody who added a different dimension to leg spin bowling. And the variations that he had, that slider that he bowled, it would be like the normal flight, but would carry on straight. I'd like to ask you, Salman, what was it like facing Shane Warne? What were the feelings? What was the thought going on right before facing Shane Warne? I know you have done that. Can you just tell me the feelings that you had facing Shane Warne?
Well, very different from any right-hander. And there you see another single. When before going to Australia on my first tour in 2004, I used to go and practice for leg spin bowling, and Usman Kader used to bowl with the tape ball because he was very young. He could only bowl with the tape ball, but he had all that variety, those googlies, those straighter ones, and long leg breaks. So that is where I got ready for facing Shane Warne. But And the feeling, I want to yeah, know what the feeling that's was. what I'm going to tell you next. Yeah. Is something that you might not believe, but you can see the highlights. The first ball, when I and Usman were practicing, so he said, "What would you do?" So I said, "I wish that I hit first ball for 4 over mid wicket," and exactly that happened. When I faced the first ball of Shane Warne, it was a Boxing Day Test match, first day, and exactly this thing happened. So the first ball he bowled was in that slot. So I played it over mid wicket for 4 runs. And from there on, uh, to be honest, I wasn't very disturbed like most right-handers around me that I saw. They were really, they could feel that something different is happening. But thankfully for me, it wasn't anything which was of great concern. Remarkable. Just so amazing. Shane Warne, we're talking about. And the experience Salman had facing him. Did he get you out, Salman? No, 3 test matches. I scored 100, a 70 odd, a couple of 40s, but not even once. And I even had, I was lucky that I played him and McGill together in Sydney as well. Fantastic. Manzoor, it's in the air. Oh, it was just falling short of him. Just fell short of him. Ahmed Bashir, I think the reaction pretty late by Ahmed Bashir. The wickets are hard to come. You got to convert those half chances into the full. But at least he's made Khurram Manzoor do something different, something risky. Yes, there we see Khurram Manzoor trying to do something different and lobbing one straight to mid-off, who took ages to move, had plenty of time, and spilled a straightforward easy chance. Well, you just can't do that on a pitch like this where bowlers are having the hardest time of their careers. The fielders, if they respond like this, it's very unfair. And they don't come easier than that. There was plenty of time. And he hasn't bowled that many overs to suggest that he could have been very tired. I take my words back when I said it fell short of him. It was straight in his hands. But he reacted so late that he had very less time to adjust. It's a mess. It's a drop chance by Ahmed Bashir. Ali Manzoor is into his 29th over. Wonder what he might be thinking. What might he be feeling after bowling so many overs and forced Khurram Manzoor to play a wrong shot. And then the catch is not taken. Yes, poor Ali Manzoor. Could have had Khurram Manzoor. Not to be. Courtesy Ahmed Bashir. Took a year to react and still dropped it. Overbowled, 82 gone, 277 for 2, Karachi. The focus will be on Ahmed Bashir because he's missed a chance. And I could clearly hear Saad Naseem not happy from him. Because as Salman was suggesting, on a pitch where wickets are hard to come, you got to convert those half chances into the full chances. And this one was a pretty clear, pretty regular. And at this level, or in fact even at any level, you should have been able to take that. He's constantly looking at his left hand. Something went wrong with it.
Had a lot of time. Unfortunately for the bowler, not to be, Khurram Manzoor gets another life, stays on. He can build on his 108 already. Way too easy. The length, he didn't pick it up. He didn't pick it up. It's Bilawal Iqbal this time. It's all happening for Lahore Whites. They're all over the place. Another boundary for us to Shafiq. Well, the Lahore White fielders, they look clueless. This time, the fielder on the boundary didn't pick up which way the ball was going, and he absolutely had no idea. And he, in fact, first started off going in the other direction, then he realized the ball is on his left side. So thankfully for him, it wasn't straight at him. They seem numb in the field. Yes, and that credit goes to the Karachi batters, that they have put up huge partnerships, got the better of Lahore. Oh, that's spin again. Runs. Couple of them quite easily. I thought they were trying to board batters, but they board themselves. It's not working at the moment. Yes, Ali, over the course of these last 3 games, I think regarding the fielding of Lahore Whites must be a concern to their coach and the fielding coach. And there we go. There is another wicket and another lapse of concentration this time. Khurram Manzoor pays the price for being too casual and lobs an easy catch back to the bowler Saad Naseem. Yeah, the plan finally working. Bowling round the wicket. Not taking the new ball. It has worked for Saad Naseem. A catch was dropped earlier in the last over. And that's what Ahmed Bashir is suggesting. But the very next over, Khurram Manzoor wanted to go cross. The spin and the top edge straight to the Saad Naseem, the captain, who doesn't miss out. And the smile says it all. This is a big, big wicket. Khurram Manzoor, 110 runs. Great inning. 284 for 3. Another player making a comeback in domestic cricket. Fahad Iqbal must be a bit nervous, although he's experienced, but whenever you're making a comeback, you are nervous. And with the amount of turn the spinners are getting, it's not going to be easy. But I would really want Saad Naseem to put a bit of more pressure to the new batter. We can only see just one slip. Make life tough for him early on. Energy is different. This is what wickets do. If you can hear from the stump mic, the plan is that they don't want Karachi Whites to get to 400 in 100 overs. They want to deny that. End of a successful over by Saad Naseem. 83 gone, 284 for 3. Saad Naseem was very happy getting the wicket off Khurram Manzoor. Wanted to play across the line, wanted to push it towards onside. All he could do was that leading edge straight to Saad Naseem, who makes no mistake. And he was disappointed.
Very well set. Good. There we see this tactic of bowling on the legs is seemed to work and has encouraged the batters to do something different. And in doing so, they have got the wicket of Khurram Manzoor, who fell prey to his casual attitude. You could tell from a couple of overs that he was moving around in the crease too much. He's not focused enough. Probably he was casual after scoring that 100, 110 he scored. And now it's up to Asad Shafiq. Well, to be fair to Khurram Manzoor, what we have seen in bowling in the last hour and a half, anybody could have been casual. The kind of bowling that we have seen, fielding placements and then full tosses being bowled, bowling around the legs. So it's not easy for the batters. But Salman, with so much experience, as Asad Shafiq cuts this one, they're looking to get 3. No, they're not going to get it. Good throw by Ahmed Shahzad. With so much experience, having played so much cricket all over the country, all over the world, in fact, does this bother to somebody You know what, experienced? Ali, this experience gives you the information, but it doesn't give you the reaction. So that is what you have to do. And he, at this precise time, chose to do something else. And this can happen to anybody. No matter, doesn't matter how much you have played, you still get out somehow. And there will be times when you will be disappointed the way you get out. And then you start to think you could have had a better option. But this is how it goes, and this is how it finished for Khurram Manzoor. Nevertheless, a brilliant inning of 110. As we said, he's still hungry to do well for himself, for the team, for the other team members. Quality inning, 34th century. 6th for Karachi White, 6th at Gaddafi Stadium. Looking solid start by Fad Iqbal. 287 for 3. Fahd Munir bowled 6 overs, and we all were of this opinion that Saad Naseem is a better choice when it comes to leg spin. And he's shown that, he's given the results, he's taken that wicket, all important wicket. So that's where he himself, as a captain, has missed the trick of not bowling himself quite often. Even in the last game, Salman, we were of this opinion that he's better than he thinks he is. He bowls less than the potential he has. Yes, maybe he wanted to see his under 21, how does he go about in bowling. That might be the reason. But Saad Naseem over the years is a very, very experienced campaigner, and he, more often than not, when he comes on, he creates chances, and he certainly had the big one in the previous over. Another short one, pulled towards mid-wicket, would be an easy single. Interesting, Ali, now 94 balls exactly remain, 15.4 overs, and with Karachi Whites to gain full points in the 100 overs, they need 113 runs. So it's more than a run-a-ball average. It will be interesting to see how they go about managing this. So 96 balls, 112 required. They do have plenty of quality batters. As another one, single taken, direct throw. Might have made things very interesting. There is this energy in the side after getting that wicket. Saad Naseem on top at the moment. Yes, this is what I was referring to. We might see some excitement, some pace in the play now, because they will want to get those, they'll want to make sure they get those batting points. Here we see running this quick one, the urgency, and had it hit direct,
we shall see in the replay, he would have gone. Would have been curtain. So this is the second instance today when the batters have decided to take a single, and a direct hit on both occasions could have had the wicket. There we see. Very lucky. Fahad Iqbal. Shorter one pulled right between the two fielders. Fantastic batting continues as Asad Shafiq brings up his another 50 at this level. What a player, what a performer. Yes, that's too easy for Asad Shafiq. A player like him will not spare this kind of loose stuff, and he takes full advantage of this poor ball. And this will help the Karachi cause because they need to run more than run a ball, and they would accept anything of that kind from these bowlers. Let's see now when Lahore think about taking the new ball. 85 gone, 293 for 3 Karachi. दोनों सेंचुरियंस आउट हो चुके हैं। मंजूर और अम्माद आलम। शफीक ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। फहद इकबाल को अटैक कर रहे हैं, एक स्लिप और एक गली लेकर, और अली मंजूर ने अपना एंगल ऑफ अटैक भी चेंज किया है। आगे हैं एक मरतबा फिर राउंड द विकेट। विकेट कीपर फरहान चूक गए, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। लेग स्टंप पर कलेक्शन में बहुत मुश्किल पेश आई है फरहान को, ये लेग बाई था। और क्या बाकी मांदा ओवर्स में कराची की टीम 107 रन बनाकर मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स हासिल कर लेगी? ये पूछेंगे मरीना इकबाल से जो आ गई है कमेंट्री बॉक्स में। देखिए मौके तो लाहौर वाइट्स बिल्कुल दे रहा है, बॉलिंग भी कोई खास डिसिप्लिन नजर नहीं आई है। फील्ड में भी ऐसे गैप्स हैं जहां सिंगल डबल्स हासिल किए जा सकते हैं, बाउंड्रीज हासिल की जा सकती है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कराची वाइट्स को जाना पड़ेगा। पिच में से भी खातर खा मदद मिली नहीं स्पिनर्स का। कुछ पैचेस पे नजर आया है कि उन्हें ब्रेक हासिल हो रहा है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हो, जैसे असद शफीक मौजूद रहेंगे फहद इकबाल के साथ, उनको चलाते भी रहेंगे, और जिस तरह की क्लास असद शफीक की है और जितनी पुरएतमाद बैटिंग उन्होंने की है, ये मुश्किल होना नहीं चाहिए। फिर फील्ड तब्दील की, लेग स्लिप और स्लिप के साथ अब आ गए हैं अली मंजूर। और अगर लाहौर वाइट्स की देखा जाए, उनके लिए तो वाहिद चांस इस मैच में यही है कि वो विकेट हासिल करें, और उसका बेस्ट मौका तो तभी होता है जब नया बैटर आए क्रीज पर। पार्टनरशिप ब्रेक हुई, खुर्रम मंजीर आउट हुए, यहाँ पे उनके पास मौका है कि फहद पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। फहद भी काफी अरसे के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही अटैकिंग फील्डर्स पर इत्तेफाक किया। डॉट बॉल के साथ ओवर का अख्तिताम। 295, 3 खिलाड़ी आउट। लाहौर वाइट्स सिर्फ विकेट तब ले सकता है जब बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी साथ दे। हमने देखे ड्रॉप कैचेस हुए, मिस फील्ड काफ़ी देखने में नज़र आई है, और ये इनको अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देगा। थोड़ा सा अपने आप को कलेक्टिवली एज ए टीम उठाना पड़ेगा लाहौर वाइट्स को,
क्योंकि हलचल नज़र आ रही है। कराची के पास भी एक मकसद है, एक टारगेट है, और वाइट्स को भी इस पूरी कोशिश में होना चाहिए कि विकेटें हासिल करें। फहद रन लेना चाह रहे थे, काफी आगे आगे, पहले ही एक मरतबा वो करीब करीब से बचे रन आउट होने से। इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का फुकदान नजर आ रहा है, और अब बात करते हुए एक दूसरे से। सनसनी मची हुई है बीच में, ये ज़रूरी है कि एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करें, किसकी कॉल है, किसने बैक करना है, क्योंकि बेहतर नज़र जो है वो फहद को आ रहा था, उन्हीं की कॉल थी, लेकिन असद शफीक ने टर्न डाउन कर दी। पहले भी असद शफीक के साथ ऐसा हुआ था, जब खुर्रम मंजूर के साथ बैटिंग कर रहे थे तो वो विकेटों के पीछे बॉल गई जो खुर्रम की कॉल थी, लेकिन असद ने वो कॉल कबूल नहीं की। दोनों ही मरतबा लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। क्या असद शफीक की ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा लेग स्पिनर को खुद ही खेलें, क्योंकि ओवर में एक बाउंड्री बॉल ज़रूर मिलता है उन्हें। हाँ जी, जितनी भी शॉर्ट पिच डिलीवरीज हमने देखी हैं अभी तक, असद शफीक ने भरपूर फ़ायदा उठाया है उनका। लेकिन कॉल की बात की आपने, यही अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एज अ स्ट्राइक प्लेयर आप विकेट के पीछे देख नहीं सकते कि बॉल कहाँ गया है, फील्डर कितना मूव कर रहा है। ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा जो है वो नॉन स्ट्राइकर वाला लगा सकता है, और उसी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसका क्लियर विजन होता है। कुछ यहाँ पे साइड स्क्रीन का इशू है। ये साइड स्क्रीन तो दोनों साइड स्क्रीन जो हैं वो मिला के कंबाइंड रहती हैं, तो ओवर द विकेट, राउंड द विकेट आने से ये साइड स्क्रीन की मूवमेंट होती तो नहीं है। लेकिन फहद इकबाल ने कुछ ऐसा देखा जो पिछले 4 मैचेस में किसी को नजर नहीं आया। देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट वो चाह रहे थे। अंपायर राशिद रियाज ने बहरहाल उनकी गुफ्तगू सुनी, और वो मजीद साइड स्क्रीन को अपने बाएं जानिब सरकाना चाह रहे थे फहद इकबाल, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी की ग्राउंड स्टाफ ने। वकार यूनिस इनक्लोजर के बिल्कुल सामने ये साइड स्क्रीन। लाहौर वाइट्स को बेहतर हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी अगर वो विकेट्स के लिए जाते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे दरकार ये है साद नसीम को कि वो खुद और उनके बॉलर्स इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग करवा नहीं रहे कि एक सर्टन फील्ड प्लेसमेंट करके कोशिश की जाए बैटर्स को फंसाने की। विविड बॉलिंग हो रही है और उस वजह से कोई एक फील्ड नहीं सेट हो पा रही। इस एंगल से बैटर्स को रन्स बनाने में मुश्किल पेश आई है, तो यहाँ अगर आप फील्ड आगे रखकर और कुछ कैचिंग पोजीशन में फील्डर्स रखकर बैटर्स को टेम्प्ट कर सकते हैं कि वो रफ में से जाएं, लेकिन यहाँ करीब में कोई फील्डर नहीं है। अलबत्ता फुल टॉस जब होगी तो करीब के फील्डर ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे, इसलिए साद ने पहले ही जहमत ही नहीं की नज़दीक फील्डर्स लेने की। ऐसा करने के लिए आपका क्लैरिटी होना आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, विकेट हासिल करना चाह रहे हैं या रन्स कंटेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल साद नसीम के माइंड में ये ज़रूर है कि एक ना एक बाउंड्री बॉल वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेक्शन ली हुई है लेग साइड पे, और वो उसी एक बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अटैकिंग फील्ड ले नहीं पा रहे। 298 पे 3। असद शफीक अपनी सेंचुरी इन्होंने मुकम्मल की। जब भी खेलते हैं खूब खेलते हैं, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर हैं और काफी अरसे से सर्किट में हैं। कुछ बॉलिंग ज़रूर ऐसी थी जिसने इनकी मदद की, लेकिन ये एक ज़बरदस्त ऑन ड्राइव था, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, फिर शॉट को रिपीट किया। यहाँ एक टर्न वाला था, आसान फुल टॉस। ज़्यादा टच प्लेयर हैं, पावर प्लेयर नहीं है असद शफीक, लेकिन यहाँ लैक ऑफ पेस पिच में और बॉलिंग में, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और अभी मौजूद हैं। कि जो हंगर है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अभी भी फाइट कर रहे हैं, रन मेकिंग मुश्किल बना दी है लाहौर वाइट्स ने। आर्टिकल 2 की कॉल है, लेकिन 2 बन नहीं पाएंगे तैयब ताहिर के होते हुए।
साथ बहुत अंदर लाना चाह रहे थे, स्ट्रे किया लेग साइड पर उसको, जैसे आपने टच की बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से मनूवर किया असद शफीक ने। यहाँ लेग स्टंप से बाहर एक फ्री भी है बैटर्स के लिए, और तमाम ही बैट्समैन जब भी वो ग्रो अप भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है लेग स्टंप के बाहर रन्स वाली बॉल है। पुराना आइडिया नहीं होगा, लेग स्पिन रख लें, खासतौर पे फहद के लिए, क्योंकि यहाँ से राउंड द विकेट एंगल से उस डायरेक्शन में काफ़ी बॉल गए हैं पहले भी। फिर गेंद लगी फरहान को, कॉलर बोन के करीब ऐसा लगता है कि बॉल लगी है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ग्लव्स या एज लगती हुई गई थी। सब ब्लाइंड जरूर हुए थे और इसीलिए मिस कर दिया, सीधी लगी है इनको। जोरदार शॉट, बिलाखिर फहद ने फैसला किया कि वो अली मंजूर की लाइन और लेंथ को चैलेंज करेंगे, क्योंकि राउंड द विकेट एंगल से फंस से गए थे लगता था फहद, शायद विकेटों के बीचों बीच भागे या कुछ ऐसा। राशिद रियाज ने बात की उनसे, फहद सेटल लग नहीं रहे, अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मुसलसल जिससे उनका बैटिंग रिदम अभी तक आया नहीं। फिर कैचेट की आवाज लगाई, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से खेल दिया असद शफीक ने और 4 रन हासिल किए। यही तजर्बा है असद शफीक का, जानते थे कि क्या लाइन ऑफ अटैक होगा, फील्ड पैक की हुई है लेग साइड पे, कुछ ज्यादा ब्रेक मिल नहीं पा रहा है सरफेस पे, हल्का सा रूम दिया, लेग साइड से नीचे उतरे और रूम क्रिएट किया इन्होंने, क्लियर करने में कामयाब हुए। और यही एक्सपीरियंस है जो एक बैटर और इस शॉट में झलक रहा है। प्लान यही है लाहौर वाइट्स का कि रूम ना दिया जाए, लेग साइड पे खिलाया जाए, स्वीप भी अच्छा करते हैं लेकिन पैक की भी है, 2 बाउंड्री राइडर्स मौजूद हैं, 45 मौजूद है। रिवर्स स्वीप, असद शफीक अब फील्ड से खेल रहे हैं, अली मंजूर को मुसलसल वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो नहीं रहे। 2 रन के साथ ओवर का इख्तिताम, 306, 3 खिलाड़ी आउट। फॉलो ऑन का जो हदफ है 360 का, उसकी तरफ तेजी से पेशकदमी जारी है कराची वाइट्स की। 80 ओवर गुजरने के बावजूद, बल्कि 88 ओवर्स गुजरने के बावजूद साद नसीम स्पिन पे इक्तफा किए हुए हैं, दोनों तरफ से स्पिन बॉलिंग। और अब यहाँ पर 3 बैटिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं कराची वाइट्स ने। एक्सपीरियंस लाइनअप कराची वाइट्स की, अच्छा आगाज किया था, 2 सेंचुरीज देखने में आई हमें। असद शफीक भी गामजन है उसी तरफ। लाहौर वाइट्स की बात करें, एक बुरा प्लॉय नहीं है, स्पिन के साथ पेस नहीं देना चाह रहे, रूम बनाया था लेकिन बॉडी में ही बॉलिंग कराई साद नसीम ने। वो चाहते हैं, जानते भी हैं कि एक सर्टेन टारगेट के साथ कराची वाइट के बैटर्स उतरे मैदान में, और इसीलिए आसानी नहीं हो रही अगर फहद की बात करें, क्योंकि रन भी एक सर्टेन रन रेट से बनाना है उन्हें, और दूसरा ये कि उस तरह सेटल होने का टाइम भी नहीं है फहद के पास। मतलब फिर असद शफीक ने मना किया, बॉल गैप में गई थी। थोड़ी असद शफीक के जहन में मालूम नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अपने साथी बैटर पे प्रेशर डाल देते हैं। इस तरह का अच्छा सिंगल आप रिफ्यूज करें तो। इस मरतबा कॉल की चांस है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थ्रो दूर थी। हाफिज साद नसीम काफी नाराज नजर आ रहे हैं और मजीद रनिंग में मुश्किलात का सिलसिला जो है वो जारी है दोनों बैटर्स के दरमियान।
ये फोर्सफुली रन लिया, पिछला रन अवेलेबल था, सिंगल अवेलेबल था, इस मर्तबा फोर्स किया, शायद अपनी गलती की भरपाई करना चाह रहे थे। बॉल वॉचिंग पे थे फहद और उनको अंदाजा भी नहीं थे कि असद शफीक जो है वो सिंगल की तरफ जाएंगे और ये बनता नहीं था। थ्रो अगर अच्छी होती तो ये वापस पवेलियन की जानब जाते। और बेहतर चीज ये है कि जब असद शफीक सेट हैं तो इस तरह के जो करीबी सिंगल होते हैं वो आप लेते हैं, ताकि फहद इकबाल स्ट्रगल कर रहे हैं क्लियरली, तो स्ट्राइक ज्यादा असद शफीक को अपने पास रखनी चाहिए। फहद वैसे तो ठीक नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट में हिकअप हैं लाजमी वो नहीं उनके रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब आप पीछे गिरी हुई गेंद थी, कॉल 2 की है असद शफीक की जानिब से। स्वीपर को भी दूर से दौड़ के आना पड़ा अहमद दानियाल को। हलचल सी मची हुई है इस वक्त मैदान में, 89 के बाद 311 पे 3। अच्छा रन फहद इकबाल का। यहाँ अपने नाजरीन को बताते चलें कि फहद इकबाल फैसल इकबाल के भाई हैं, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर और ग्रेट जावेद मियादाद के भांजे हैं। क्रिकेटिंग फैमिली से इनका ताल्लुक है। अच्छा लगा इन्हें दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखकर। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ऑफ साइड को, लेग साइड से नीचे उतर के। पिछले ओवर में भी हमने देखा था मिड ऑफ के ऊपर से चौका हासिल करने में कामयाब हुए थे, फिर रिवर्स किया। जावेद मियादाद इनक्लोजर यहाँ कज़ाफी स्टेडियम पे, जहाँ इस वक्त जब फहद बैटिंग कर रहे हैं तो उनके मिड विकेट की जाने बनती है ये हिट। और ये क्रिकेटिंग फैमिली हैं। ग्रेट जावेद मियादाद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यहीं इसी ग्राउंड पर 1976 में उन्होंने डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ और 176 रन उन्होंने डेब्यू पे बनाए और उसी सीरीज में उन्होंने कराची टेस्ट में डबल सेंचुरी भी बनाई। तवील अरसे तक कम उम्र तरीन खिलाड़ी रहे डबल सेंचुरी बनाने वाले। यहीं पे जावेद मियादाद ने अपना 100वां टेस्ट भी खेला इंडिया के खिलाफ, वहां भी उन्होंने 145 रन बनाए। तवील हिस्ट्री है जावेद मियादाद की कज़ाफी स्टेडियम से वाबस्ता और दुनिया की वो वाहिद प्लेयर हैं जो अपने करियर के पहले टेस्ट से आखिरी टेस्ट तक उनकी एवरेज 50 से नीचे कभी भी नहीं आई। अमेजिंग कंसिस्टेंसी और क्लास, ग्रेट मैन, द लेजेंड जावेद मियादाद। और इन सब चीजों का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा फहद इकबाल पे क्योंकि नाम जब आप कैरी करते आ रहे हो, एक फैमिली में हो, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। एक लेगेसी आप कैरी करते हैं। तीन 314 पे 3। अच्छा ओवर था इस बार, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया असद शफीक को कि वो ऑफ साइड को एक्सप्लॉइट कर सकें। जब इस तरह की लाइन ऑफ अटैक हो, आपकी फील्ड भी पैक हो लेग साइड पे, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमने देखा कि स्विच हिट अपना लेते हैं। ऐसा कुछ असद शफीक से उम्मीद की जा सकती है? असद शफीक को रिसेंट ईयर्स में हमने रिवर्स स्वीप तो खेलते देखा है,
रिवर्स स्वीप वो खेलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी और कन्वेंशनल क्रिकेट में भी, लेकिन स्विच हिट नहीं, मैंने तो कम से कम नहीं देखा उन्हें खेलते हुए। पानी दे दो यार। देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ बल्लेबाजों की जिक्र किया जाए जैसे डेविड वार्नर है, केविन पीटरसन है, तो ये वो अटैक तोड़ने के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप स्टांस चेंज कर लेते हैं, लेफ्टी बन जाते हैं। जी बिल्कुल, और जब केविन पीटरसन ने पहली दफ़ा ये शॉट खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉट स्टायरिस की बॉलिंग पर, तो उनसे काफ़ी पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा कि अगर आप आउट हो जाते तो आपकी मैनेजमेंट आपको जो है वो क्रिटिसाइज करती, तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि मैं इस शॉट की मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा था तमाम ही ट्रेनिंग सेशंस में, तो मेरे कोचेस को भी पता है कि जब मेरी प्रैक्टिस में वो शॉट खेलने की रेशो इतनी हो गई कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, तो जब मैंने मैच में ट्राई की तो वो लगी, और मुझे ये कॉन्फिडेंस भी था मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्हें पता है कि ये मेरी शॉट अब बन चुकी है। किसी भी शॉट की तरह अगर मैं उसमें चूक गया तो मुझे उसका उतना क्रूसीफाई नहीं किया जाएगा, और यही तरीका है, आपको अपनी शॉट्स को प्रैक्टिस में परफेक्ट करना होता है, जब भी आप मैच में खेल सकते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटिंग जो अगर आप सर्किट में नज़र दौड़ाएं तो स्विच हिट करने वाले कोई आपको नज़र आते हैं? करीब करीब तो शायद मोहम्मद हारिस होंगे, मुझे लगता है। उन्हीं को एक दो मौकों पे देखा है कि वो ये ट्राई ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर बात करें कि महारत रखता हो कोई, तो वो ऐसा कोई प्ले नज़र नहीं आया। बिलावल इकबाल आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। क्या ये इशारा है कि नई गेंद ली जाएगी? पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इम्प्रोवाइजेशन के लिए जो प्लेयर जहन में आते हैं वो कराची के ही हैं, हसन मोहसिन, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो इन सिस्टम में खो से गए हैं। वाइट बॉल फॉर्मेट के बहुत ही इनोवेटिव बैटर थे, आहिस्ता आहिस्ता कराची और सिंध की टीम में भी अपनी जगह वो खो गए फर्स्ट 11 में। फील्डिंग के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं साद नसीम ने। अभी भी अगर नजर डालें ऑफ साइड की फील्ड पर, एक स्लिप, वाइड गली और रिंग ऑफ फील्डर्स, ये जो बॉलर्स से बात करते हुए दोनों फील्डर्स हैं, ये भी ऑफ साइड पे अपनी पोजीशंस पर आएंगे, लेकिन शायद ये सब कुछ अब तब्दील हो जाए क्योंकि नई गेंद ले ली है कप्तान साद नसीम ने। फास्ट बॉलर्स को फिर इस मैच में वापस लाना चाह रहे हैं साद नसीम, और एक अच्छी टैक्टिक्स है। स्पिनर्स को काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी हद तक कराची वाइट के बल्लेबाजों को तंग भी किया है, और अब इन पेसर्स के पास एक मौका है। तो शफीक की टेक्निक बहुत अच्छी है, फाद इकबाल अभी 6 पे हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि एक सर्टेन प्लान और कंसिस्टेंसी उस प्लान में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। दो स्लिप के साथ आ गए हैं, 2 स्लिप और गली। बिलावल का पहला गेंद इन स्विंग हुआ था पुराने बॉल से, देखते हैं कि नई बॉल से उन्हें कितनी मदद मिलती है। हल्की सी शेप हवा में मिली, लेकिन उसकी रफ्तार ऐसी नहीं थी कि वो बैटर को सरप्राइज कर सके। बिलावल ने आज के दिन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत ज़्यादा लूज डिलीवरीज देखने में नज़र नहीं आई, लेकिन साद नसीम को अहमद दानियाल और अहमद बशीर को भी बेहतर यूटिलाइज करना पड़ेगा नए बॉल के साथ। फल तभी मिलेगा जब एक प्लान के साथ एक्सिक्यूट करेंगे अगेंस्ट इन दोनों बैटर्स के। और आपने बात की प्लान्स के साथ, अच्छे एरियाज में कई साल से डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं तो कोचेस से बात होती है, मुख्तलिफ प्लेयर्स से मैच के बाद, मैच से पहले इंटरव्यूज़ में बात होती है। पिछले दिनों लाहौर वाइट्स के बॉलिंग कोच एजाज चीमा से भी बात हुई, तो ज़्यादातर जो मालूमात हासिल होती हैं उनसे वो काफ़ी बेसिक ही होती हैं। कुछ जुमले बार बार उसमें हमें सुनने को मिलते हैं,
अच्छे एरियाज में गेंद करना, एक प्लान के साथ गेंद करना, अनरिस्पॉन्सिव पिचेस पे एक साइड पे बॉल करना, ये बहुत ही बेसिक प्लान्स हैं। और इन तमाम ही प्लान्स के कोई खातिर ख्वाह नतीजे कम से कम कज़ाफी स्टेडियम पे नहीं निकले। जो फील्डिंग प्लान्स हैं उसके बारे में कम ही बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड पैक करना, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा प्लान है। लेकिन इस विकेट पे इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ज़्यादातर मैचेस ड्रॉ हुए हैं पिछले 3-4 साल में। जैसे जब कंडीशंस आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग ना हो तो तब आपको बेसिक्स पे ही जाना पड़ता है, एज अ बॉलर भी और एज अ बैटर भी। इस पे बात करेंगे हम। 314 पे 3 कराची राइट्स। एज अ क्रिकेटर ये बात बेसिकली हमें सिखाई जाती है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अब यहाँ पे हम बहुत बात करते हैं पिचेस की, कंडीशंस की, कि बॉलर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन वो हर टीम के लिए यही सिनेरियो है, हर बॉलर के लिए तकरीबन यही सिनेरियो है। उसमें आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी लाइन है, आपकी लेंथ है, आपका एक प्लान है। एज अ बॉलर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप कहाँ बैटर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बैटर के ऊपर होमवर्क करना बहुत ज़रूरी। बशीर को लाया गया अटैक में। सेम चीज़ें अप्लाई होती है बैटर पे भी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप उनके बारे में सोचें। हमने देखा, आज ही की बात करें तो जब स्टार्ट किया एक मुनफरद प्लान नज़र आया हमें, बॉलर की तरफ से भी नज़र आया कि मैंने इस लाइन लेंथ पे गेंद करनी है। और जैसे आपने बात की एजाज चीमा की, वो भी अक्सर यही बात करते हैं कि कंसिस्टेंटली 6 गेंदें एक ही एरिया में करें, ये हमारे कंट्रोल में, उसका रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिक्स ही नहीं सही हो रही। नीचे रहा गेंद, लेकिन शफीक ने एक रन हासिल किया। जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं प्लान की तो वहां पे फिर आपकी वेरिएशन और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी आजमाइश शुरू होती है। अब प्लान कई तरीके के हो सकते हैं। सेम विकेट पर इसमें आप ऑफ साइड का ट्रैप रख सकते हैं, अम्ब्रेला फील्ड रख सकते हैं, लेग स्टंप पे शॉर्ट पिच बॉलिंग का प्लॉय रख सकते हैं, या लेग स्टंप पे या लेग स्टंप के बाहर आगे गिरी हुई गेंद पर आप प्लॉय रख सकते हैं, जैसे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है। लेकिन हमने उन प्लान्स में वेरिएशन देखी नहीं। हमारे यहाँ एक ही प्लान है, एक साइड पे बॉल करें और रन्स रोक लें। उस प्लान में ये हिस्सा नहीं होता कि आप बैटर को किस तरह ललचाएंगे, फील्ड आगे रखकर और गैप छोटे करके एक ही एरिया में खिलाई जाएं, शॉट खिलाए जाएं, ना कि उन्हें डिफेंस। क्योंकि यहाँ पे जब बैटर डिफेंस पर आ जाए तो उसके डिफेंस को बीट करना तो इन पिचों पे आसान नहीं है। आपको बैटर्स को ललचा कर ही आउट करना होगा। ललचाने की आपने बात की, उसमें एक प्लान ये भी होता है कि जो आपकी नेचुरल स्विंग है या आपका जो नेचुरल एज अ स्पिन, आप स्पिन बॉलर करते हैं, आप कुछ एरियाज ऐसे ओपन छोड़ देते हैं बैटर के लिए जो अगेंस्ट द स्विंग या स्पिन हो, और उसमें जब बैटर रन्स की तरफ जाता है तो वो गलती कर बैठता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या आप एज अ बॉलर या एज अ टीम 6 की 6 गेंदें एक प्लान के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है कि 3 या 4 गेंदों के बाद जब थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है बल्लेबाज पे, एक आधी लूज डिलीवरी मिल जाती है। बिल्कुल, आपने जो बात की वो अगले स्टेज की है। मैं तो अभी इस चीज़ को ही रो रहा हूँ एक तरह से कि प्लान ही, हमें प्लान्स में कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई तो एक्सिक्यूशन तो उसके बाद आती है। और आपकी बिल्कुल वजह बात है कि एक्सिक्यूशन में भी चूके हैं, वो स्किल लेवल में इम्प्रूवमेंट से आ सकती है। प्लान्स में भी वेरिएशन होती है। इस तरह ये लेग स्टंप लाइन है, बैटर्स को हमेशा रन्स नज़र आते हैं जब भी लेग स्टंप पे बॉल नज़र आती है। आप उसको छोड़ने का सोचते ही नहीं हैं, इनवेरिएबली खेलते हैं। तो क्यों ना इन एंगल्स पे फील्डर लिए जाएं। अब मुझे खुद पता है कि लेग स्टंप पे अच्छा खेलती थी लेग साइड पर, तो जब भी लेग स्टंप हाफ वॉली आएगी तो आपको रन्स ही नज़र आएंगे। तो क्या आप ऐसे एंगल कवर करके अच्छे फील्डर वहाँ पर लगाएं
और बैट्समैन को इस तरह आउट करें, ये भी एक प्लानिंग है। बिल्कुल, एज अ बैटर ये आपकी एक इंस्टिंक्ट शॉट होती है, जैसे आपने कहा कि रन्स की तरफ जाते हैं हम, और ये इन बिल्ट चीज़ होती है। और ये सुबह हमने देखा भी है, अहमद बशीर और आई थिंक अहमद बशीर ही थे जो मीडिया एंड से बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने लेग स्लिप रखी हुई थी और 2-3 ओवर वहाँ पे कराए थे जब थोड़ा सा अमाद आलम और खुर्रम मंजूर तंग भी हो रहे थे उस लाइन से, और वो कंसिस्टेंटली 2-3 दफ़ा उन्होंने कराए, लेकिन उसके बाद फिर चेंज कर दिया, बॉलर ही चेंज हो गए। सूरज स्ट्रोक, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग असद शफीक की, इनको बिल्कुल भी जोर से हिट नहीं किया और 3 रन हासिल किए। 92 ओवर्स का अख्तिताम हुआ है और अंपायर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने पोजीशन की जानिब आ रहे हैं। काफी करीब हैं हम चाय के वक्फे के, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अंपायर्स अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं और एक ओवर शायद मजीद हो, अभी भी 1 मिनट रहता है। और लग रहा है कि असद शफीक को चाय की तलब ज़रूर हो रही है, क्योंकि वो राशिद रियाज से कोई बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा होगा कि एक और ओवर आपको खेलना पड़ेगा। वेल सेटल्ड है। बैटर्स के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं एक ओवर में हासिल करने के लिए, लेकिन खोने के लिए सब कुछ है, क्योंकि एक ही गेंद चाहिए होती है। इसलिए असद शफीक की शायद मर्जी थी कि ये ओवर ना होता, लेकिन अब उन्हें खेलना पड़ेगा, और क्योंकि 3 रन बनाए थे तो वो खुद ही स्ट्राइक पर होंगे। लेग स्टंप से बाहर बॉल, और हमेशा जैसा भी जिक्र कर रहे थे, जब यहाँ बॉल आती है तो बैट्समैन उसको खेलने की ख्वाहिश ज़रूर करते हैं। ये वो ऑफ स्टंप वाली लाइन नहीं है जहाँ बैटर कहते हैं कि मैं छोड़ दूं और चांस ना लूं, लेकिन जब भी इस लाइन पे बॉल होगी बैटर्स को रन ही नजर आएंगे। बिल्कुल, एटलीस्ट यहाँ पे आप फोर्स कर सकते हैं बैटर को कि वो शॉट के लिए जाए और खेले। अगर ज़्यादा डिविएशन हो जाए तो वो लेग साइड पर निकल जाता है, और वही बात आपकी कि बल्ला लेके ही जाता है बैटर, और अगर विद इन बॉडी भी आ जाए तो उसको बैट से खेलना पड़ता है। तो अगर आप शॉर्ट लेग भी रखें और लेग स्लिप रख के इस लाइन पे बॉलिंग करें, आई थिंक कि थोड़ा एक डिफरेंट प्लान इस पे हो सकता है। इस मरतबा कलाइयों की मदद से मोड़ दिया ऐसे फहद इकबाल ने, वही इन स्विंग की लाइन थी और कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। फहद इकबाल की पहली बाउंड्री। थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल जरूर रही है, लेकिन एंगल अगेन बहुत आसान था, खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल किया, आने दिया गेंद को अपने पास, चेज नहीं करने गए, काफी कंट्रोल्ड शॉट थी। मरीना ये बॉल भी गई तो हवा में ही थी और इंस्टिंक्टिवली अंदर आती हुई गेंद पर शॉट खेला फहद ने। बिलावल को दूसरी नई गेंद से स्विंग मिल रही है, इन स्विंग लेकिन मिल रही है, लेकिन उनके पास प्रोटेक्शन ज़्यादा ऑफ साइड पर है। अब कप्तान साद नसीम ने फील्डर को मिड विकेट से स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ भेजा है। अच्छा टाइम किया फहद ने, जस्ट एक एक्सटेंशन थी फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक की, लेकिन अच्छा मिडल किया बॉल को। बिलावल की जानिब से अभी तक हमने एक भी ऐसा गेंद नहीं देखा जो बल्लेबाज के बाहरी किनारे को छोड़ता हुआ गया हो, लेकिन फिर भी अब बात करते हैं कि टैक्टिक्स क्या होते हैं आपके एज अ कैप्टन। बिलावल को स्विंग मिल रही है, मूवमेंट मिल रही है, 2 स्लिप एक गली अभी तक मेंटेन की हुई है और लेग साइड पूरी ओपन है। तो आई एम नॉट श्योर कि एज अ बिलावल उसके माइंड में क्या क्लैरिटी होगी, और एज अ कैप्टन आप क्या बिलावल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक जेन्युइन इन स्विंग बॉलर हैं। क्या आप ऐसा सोच सकती हैं कि इसमें कोई मुजायका है कि आप एक लेग स्लिप और एक गली रख लें इन स्विंग को कराते हुए? देखिए बात वही है कि बिलावल की जो नेचुरल स्विंग है वो इन स्विंग है, वो वहाँ पे कॉन्फिडेंट है, और अभी तक 10 गेंदों में से भी हमने देखी है कि 8 गेंदें उन्होंने इन स्विंग ही कराई हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप ऑन साइड पे एक फील्डर निकालें, फर्स्ट स्लिप रखें, उसके बाद आप या तो शॉर्ट कैचिंग भी रख सकते हैं या लेग स्लिप भी रख सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ी कुशन ज़रूर दें कि वो अपने इन स्विंग को यूटिलाइज करें पूरे तरीके से। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में
एक साथ कई बैटर्स आउट हुए थे इस तरह लेग साइड ट्रैप पर। फिर स्विंग हुआ बॉल, थोड़ा सा क्रॉस खेले, चांस है नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक मरतबा फिर। काफी डाइसी रन था, लेकिन इस मरतबा कॉलिंग और रिस्पांस अच्छा था दोनों बैटर्स का। लेकिन फिर भी किसी हद तक इसमें खतरा जरूर था, इतना क्लोज सिंगल। अच्छी गेंद थी एक बार फिर, बहुत लेट मनूवर जरूर किया लेकिन खेलते ही साथ ही निकल गए और इस वजह से क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए। जो मैं जिक्र कर रहा था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका में, वहाँ दोनों टीमों के 3 या 4 बैटर्स मुझे याद है लेग साइड ट्रैप पे आउट हुए थे, लेग स्लिप और लेग गली में। लेकिन वो शॉर्ट पिच बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, वो लाइन और लेंथ बॉलिंग थी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, जस्ट अ ट्रैप। काफी बायर थी, असद शफीक को कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई और अंपायर्स की कॉल, इट्स टाइम फॉर टी जेंटलमैन। चाय के वक्फे तक कराची वाइट्स ने बना लिए 327 रन, 2 सेंचुरियन और असद शफीक नॉट आउट हैं 70 रन पर। बैटर्स की डोमिनेशन की कहानी कजाफी स्टेडियम पर आज भी जारी रही। एक्सपीरियंस्ड असद शफीक नॉट आउट जा रहे हैं चाय के वक्फे पर, उनके साथ हैं फहद इकबाल। अच्छा ओवर रेट रहा और अच्छा रन रेट भी, एक विकेट गिरी, 139 रन बने 31 ओवर्स में। पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली कराची वाइट्स की जानिब से भी। लाहौर वाइट्स ने भी अपने स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल किया, नया गेंद लिया, फास्ट बॉलर्स ने कतरे बेहतर बॉलिंग की है लेकिन एक ही विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। तवील दिन इनके सामने मौजूद है। ये स्कोरिंग कार्ड बहुत तसल्ली बख्श है कराची वाइट्स के लिए। खुर्रम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, अमाद आलम क्लास एक्ट नजर आए, असद शफीक 30 रन की दूरी पे हैं और फहद इकबाल ने भी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। सिर्फ दानिश वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिनको दुख जरूर होगा, उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, एक लूज शॉट खेल के। अभी भी काफी बैटिंग बाकी है, रमीज अजीज, सरफराज, इसलिए बॉलर्स का इम्तिहान और आजमाइश अभी कम नहीं हुई। तमामी बॉलर्स ने जी जान से बॉलिंग जरूर की लेकिन ज्यादा मदद मिली नहीं। अली मंजूर 122 रन दिए खिलाड़ी को आउट किया, सबसे लंबी बॉलिंग की। अहमद दानियाल, थोड़ी सी उन्हें इंजरी हुई शोल्डर की लेकिन वो वापस आ गए, उन्होंने भी एक विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने इस अनरिस्पॉन्सिव पिच और गर्म मौसम में। बैटर्स की डोमिनेशन की कहानी रही इस सेशन में भी। खुर्रम मंजूर, इनिंग्स उनकी जारी रही, असद शफीक ने भी उनका भरपूर साथ दिया, कुछ फ्रेंडली बॉलिंग भी नजर आई। शफीक ने स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया, कदमों का अच्छा इस्तेमाल। खुर्रम मंजूर ने एक और सेंचुरी मुकम्मल की इस सीजन में, उनकी पहली सेंचुरी। क्या बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था खुर्रम मंजूर का, ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे, सीधा इजी कैच दे बैठे लेकिन बैटिंग जारहाना बैटिंग जारी रही। 327 बनाने में कामयाब हुए कराची वाइट्स। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद खेल को दोबारा शुरू करेंगे आपके साथ।
कज़ाफी स्टेडियम में फिर से खुशामदीद। लाहौर वाइट्स और कराची रीजन का ये मुकाबला है और तीसरे दिन अब तीसरे सेशन का खेल शुरू होने को है। 327 रन पर 4 विकेटें गंवाई हैं। 3 विकेटें दरअसल कराची ने गंवाई हैं। दोनों ओपनर्स ने सेंचुरियां स्कोर की, खुर्रम और अम्माद ने। खुर्रम चाहे वक्फे से कुछ देर पहले आउट हुए, 110 रन बनाकर। असद शफीक वो भी सेंचुरी की जानिब बढ़ रहे हैं। बड़ी जारहाना इनिंग्स असद शफीक ने खेली है। फहद इकबाल उनके साथ हैं। अभी रमीज अजीज और सरफराज जैसे बैट्समैनों को खेलने के लिए आना। नौमान भी बैटिंग कर सकते हैं। जहां तक लाहौर की बॉलिंग का ताल्लुक है तो बहुत मेहनत करना पड़ी है, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ा है ये विकेटें पाने के लिए। अहमद दानियाल जख्मी हो गए थे, वो मैदान से बाहर चले गए। एक विकेट हासिल किया, अच्छा स्पेल किया है अहमद ने। अली मंजूर ने 33 ओवर्स किए, एक खिलाड़ी को आउट किया जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और साथ नसीम ने भी एक विकेट हासिल की 34 रन से। तो आज के दिन में 3 विकेटें गिरी। 4 घंटे खेल में अहमद दानियाल ने अपने हमनाम को आउट किया। मिड ऑफ पोजीशन पर कैच आउट हुए अहमद। उसके बाद यहाँ दानिश अजीज जो छक्का लगाना चाहते थे खाने के वक्फे से कुछ देर पहले, उन्होंने खराब शॉट खेला और मिड विकेट पोजीशन पर आउट हुए। मंजूर के हाथों जहाँ लेग स्पिनर ने विकेट हासिल की। अगेंस्ट द टर्न खेलने चले गए थे रफ से लेग साइड में खुर्रम मंजूर, और यही वजह थी कि वो खुद को कोस रहे थे। तो अंपायर्स मैदान में आ चुके हैं, साथ साथ खिलाड़ी भी, और कमेंट्री बॉक्स में अली यूनुस भी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे विकेट्स हासिल करना, और यहाँ पे लाहौर वाइट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है जैसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। 137 ओवर फील्डिंग करवाई थी कराची वाइट से, तो अब ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। 93 ओवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी बहुत लंबी बैटिंग, जैसे भी आप बयान कर रहे थे, बहुत बैटिंग पड़ी है। सरफराज हैं, रमीज अजीज हैं, ऐसा लगता है कि उतनी ही फील्डिंग शायद लाहौर वाइट्स को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बॉलिंग में पेनिट्रेशन है नहीं, वैरायटी भी नहीं है ज़्यादा, पेस भी नहीं है ज़्यादा टर्न भी नहीं है। तो थ्रू प्लानिंग और लक इनको विकेट्स हासिल करनी होंगी। जहाँ ये लंबा सांस लिया, लंबा गहरा सांस असद शफीक ने, क्योंकि हर सेशन शुरू होने पर आप जितने भी रन्स पर खेल रहे हूँ, इससे पहले आपको फिर से आगाही हासिल करना पड़ती है विकेट की ऊंच नीच से, बॉलर की रफ्तार और स्विंग से। थोड़ी सी अजनबियत होती है सेशन जब शुरू होता है। अगर आप 70 रन्स पर भी खेल रहे हो असद शफीक की तरह, जहाँ फोकस आपको वापस करना पड़ता है, और यही फोकस का सबसे बेहतरीन तरीका है। डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर इसको अप्लाई कीजिए। असद शफीक बहुत तवज्जो से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान के लिए 70 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले, और अभी भी इनकी कोशिश है कि टीम में ये वापस आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि दरवाजे बंद नहीं हुए। अभी उम्र इनके साथ है, असद शफीक के साथ, और अच्छा खेल रहे हैं इस सीज़न में। या मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और ना सिर्फ बैटिंग स्किल तो इनके पास हमेशा सही था, जो फिटनेस इन्होंने दिखाई है लास्ट 1.5 दिन में, जो इन्होंने फील्डिंग की है, जिस तरीके से इन्होंने डाइव अराउंड किया है, तो मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे, जब आप पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना, जहाँ पे इनका रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं इनको। इनकी ख़ास बात रही है करियर में इनकी संजीदगी, अपने काम से काम रखना, रन्स बनाते चले जाना, और कभी गम गुस्से का इजहार करते हुए, कभी शिकवा शोर करते हुए हमने इनको नहीं देखा। यह बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही सेंसिबल इंसान है, इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस रादर हम कहेंगे। बहुत अच्छा बोलते भी हैं,
अच्छे इंसान लगते हैं, बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं। अच्छी मूवमेंट अहमद को दिखाई, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि थोड़ा सा करीब से आए। असद शफीक इस तरह के बैट्समैन नहीं है, ये छेड़छाड़ करने दूर से चले जाएंगे। या थोड़ा स्विंग ज़रूर मिल रहा है, लेकिन जो लाइन है वो सही नहीं है। थोड़ा विकेट के बीच में से इसी तरह का स्विंग करना होगा ताकि चेज करने जाए, तो ड्राइव करने जाए, तभी कोई चांस क्रिएट हो सकता है। लेकिन जितने कमिटेड असद लग रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी गलत शॉट वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। 2 सेंचुरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस इनिंग में, क्या तीसरी देख पाएंगे? नई गेंद पर मदद मौजूद है। यहाँ ये दरअसल नई गेंद की पिच रही है, गो के विकेटें नहीं मिली हैं उतनी ज़्यादा। दोनों जो इससे पहले पहली नई गेंद दोनों टीमों ने की थी, लेकिन फिर भी कसाफी स्टेडियम में अगर आप अच्छी लेंथ को आकर अपनाते हैं लाइन के साथ तो इम्कान रहता है। ये कभी कभार इनको हम आउट होते भी देखते रहे हैं इनके करियर पर। ये गेंद इनके करीब से बाहर निकलती है। असद शफीक को परेशानियां रही हैं एक ज़माने में इस गेंद पर, लेकिन ये आखिरी बेज़रर थी। 328 पर 3। तारिक भाई, आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे विकेट्स हासिल किए जाएं। कल भी हम बात कर रहे थे मैं शाह फैसल से कि सारा दोष जो है वो पिच को दे देना या कंडीशंस को दे देना इतना सही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ एक्स फैक्टर भी नहीं नज़र आया। क्योंकि कदाफी स्टेडियम में अगर आपको विकेट्स हासिल करनी है तो एक एक्स फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। या आपके पास एक्स्ट्रा स्विंग होना चाहिए, या एक्स्ट्रा पेस होना चाहिए, या एक्स्ट्रा स्पिन होना चाहिए आपके हाथ में। अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे, हमें बॉलर्स की जानिब से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला नहीं है। बहुत ही जैसे कहते हैं लकीर का फ़कीर बॉलर नज़र आई है। एक ही लाइन पे एक ही तरह से बॉलिंग होती चली गई है। तो कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स फैक्टर अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। लास्ट जो फाइफर हमने देखा था वो मूसा से देखा था, वो पेस की वजह से था, शेयर पेस की वजह से। तो वो चीज़ फास्ट बॉलर्स में हमें मिसिंग लगी है अभी तक इस सीज़न में, क्योंकि लास्ट जो 3 साल क्रिकेट हुई उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम देखते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन अब जब ये फॉर्मेट चेंज हुआ है तो अब हमें कंपटीशन उस तरीके से, उतना जो क्वालिटी हमने लास्ट 3 साल देखी वो नज़र नहीं आई। और यहाँ पे तो आपको चाहिए डेफिनेटली एक एक्स फैक्टर होना ज़रूरी है। ये गेंद उतनी ज़्यादा उछली नहीं, बैकफुट पर खेला फहद इकबाल ने। 1 रन उनने हासिल किया। कराची की टीम जो है आज ये जो 180 का खसारा है, इनकी कोशिश होगी कि आज शाम तक इसको कम से कम जो है वो कर दिया जाए। और 100 रन से ज़्यादा इनको बनाने चाहिए। इनकी जिस तरह की पोजीशन है, तो क्या समझते हैं कि अगर स्कोर को बराबर करने से पहले भी ये अपने बॉलर्स को एक मौका दे सकते हैं कल? ज़रूरी नहीं कि आप लीड लें, आप लीड कंसीड करके भी आप लाहौर को दबाव में ला सकते हैं इस मैच में, क्योंकि यहाँ से जो है फॉलो ऑन ज़ाहिर है बचने को है। तकरीबन 29 रन इनको मज़ीद 30 रन की ज़रूरत है। उसके बाद फॉलो ऑन का तो ख़तरा टल जाएगा। फिर लाहौर की टीम जो है ये इसको ला सकते हैं दीवार के साथ। या बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन जो अप्रोच अभी हमें नज़र आ रही है कराची की जानिब से, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई ऐसा अननेसेसरी रिस्क लेंगे या चांस भी इवन लेंगे। रिस्क तो शायद नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला माइलस्टोन था 100 ओवर में 400 रन करने का। वो कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आई। बेहतर होता कि जो वापस आ रहे हैं सर्किट में फाद इकबाल, इनकी जगह के सरफराज आ जाते, थोड़ा अर्जेंसी नज़र आती, थोड़े रन जाते, पहला माइलस्टोन अचीव करते 100 ओवर में 400 रन बनाने का। फिर हमें लगता है कि शायद एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, शायद हम रिजल्ट देख सकेंगे या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देख सकेंगे।
लेकिन ऐसा अप्रोच से जिस वक्त कराची वाइट्स के, हमें लगता नहीं है कि कुछ डिफरेंट हम देख सकेंगे। या सरफराज शायद इसके बाद भी ना आए, क्योंकि ये रमीज़ अजीज़ पैड्स किए हुए बैठे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इनका जो बल्ला है वो रिजर्व खिलाड़ी ने पकड़ा हुआ है। सोचा था लेग साइड में खेलने को, फहद इकबाल ने गेंद पड़ने के बाद सीधी निकल गई। ये बाएं हाथ से खेलते हैं रमीज़ अजीज़, बहुत अरसे तक ये वन डाउन खेलते रहे हैं। और हबीब बैंक के लिए भी इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। पाकिस्तान अंडर 19 के लिए एक वर्ल्ड कप खेले थे, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो बाबर आजम के ही ज़माने में ये बाबर आजम उभर रहे थे, तो ये भी उस पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में हुआ करते थे रमीज़। यहाँ फील्डिंग ऑफ साइड में खड़ी की थी, लेकिन बिलावल इकबाल लेग साइड की तरफ निकल गए और इसकी कीमत 4 रन रही लाहौर के लिए। ये बहुत ही खराब क्रिकेट है। अगर आपने कुछ प्लान किया है, कप्तान ने आपको एक प्लान दिया है, आप उसके ऑपोजिट बॉल कर देंगे तो खुश नहीं होंगे कप्तान आपसे। देखिए आपने सामने फील्डर रखा है मिड ऑफ पे, शॉर्ट मिड ऑफ पे, और आपने लेग साइड पे बॉल कर दिया। ये इजी पिकिंग्स है, सिर्फ बल्ला ही लगाना है और 4 रन हासिल कर लिए। ये खराब क्रिकेट है बिलावल की जानिब से। इस तरह तो आप अपने कप्तान की मदद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 334 पर 3। तीन फील्डर सामने खड़े किए हैं अब अहमद के लिए भी, और 2 इस वक्त विकेट के पीछे हैं क्या आउट स्विंग के लिए। और गेंद हवा में, गली से ज्यादा दूर नहीं थी। 4 रन जरूर पाए असद शफीक ने, लेकिन कुछ देर के लिए उनका दिल दहल गया होगा। ये शॉट बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। बहुत ही खुशकिस्मत रहे हैं असद शफीक। अच्छी बॉलिंग है, दूर बॉल किया, थोड़ा लेंथ पीछे किया, और ये डेलिब्रेट था। ये मिडल ऑफ द बैट से खेले हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा रिस्की है। वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, बहुत ही कम फर्क था, ये कैच हो सकता था। इसी शॉट का हम जिक्र कर रहे थे, ये साद खान को खड़ा किया गया था इसी मकसद के लिए। असद शफीक जो है ये बाहर से बाहर जो है कई बार ये खेलते हैं, ये आउट होते रहे। असद शफीक अब स्ट्राइक से हट गए। 339, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह बेहतर सेशन है, अब बॉलर्स को मदद मिल रही है, बैट्समैनों का ज़रा सा इम्तहान है। यहाँ पर नई गेंद की जब तक ये चमक रहेगी। जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि गद्दाफी स्टेडियम में जो मैच है वो नए बॉल पे डिपेंडेंट होता है कि मैच किस तरफ जाएगा, और ये दूसरा नया बॉल है, मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्या उसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं? खतरनाक तरीके से खेले, बेदिली के साथ हुक करना चाहते थे और गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के ऊपर से, लेकिन लेट हो गए थे फहद इकबाल इस पे। डायरेक्शन सही थी, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा पकड़ गई। इवन विकेट कीपर को भी बीट करते हुए चली गई बॉल। है आइडिया अच्छा था, सरप्राइज जरूर किया फहद इकबाल को, जो लेट हुए, रिएक्शन थोड़ा लेट था, और अगर ये थोड़ी हाइट इसकी नीचे होती तो रिजल्ट शायद डिफरेंट होता। विकेट कीपर को तो ब्लेम करना नहीं बनता है, क्योंकि ये बॉल बहुत ही ऊपर था उनके सर से, लेकिन अच्छा प्लॉय है, एटलीस्ट कुछ डिफरेंट सोच के किया है। यह गेंद जो है वो आ गई है बिल आखिर वापस मैदान पर। लगता है कि ये वेट हो गई है, ये बाहर जो है ये चली गई थी बाउंड्री की जानिब। लेकिन फहद इकबाल
और असद शफीक दोनों इस ओवर में उनको कुछ परेशानी हुई, रिदम वापस पाया है अहमद ने। और बेहतर होगा कि अब ये दबाव जो है बरकरार रहे, गो के 2 बाउंड्रीज ये दे बैठे हैं इस ओवर में, लेकिन इस मैच में रन से ज़्यादा विकेटों की अहमियत है। रन की इस वक्त शायद उतनी अहमियत नहीं है इस मुकाबले में, रन आप दे के भी विकेट ले सकते हैं। या लेकिन उसके लिए थोड़ी पॉजिटिव फील्ड सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी जो हम देख रहे हैं सिर्फ एक स्लिप और एक गली के साथ नया बॉल का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपने विकेट्स हासिल करनी है तो आपको स्लिप कॉर्डन को थोड़ा हैवी करना होगा। इससे पहले बॉल गली के पास से गया, यहाँ पे अगर 2 गली होती, ये में 2 स्लिप होती तो गली का फील्डर थोड़ा वाइड होता है, तो ये फील्डर के हाथ में जा सकता था बॉल। बट यहाँ पे अब वो जो प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी जो कि चाहिए होती है, जो थिंकिंग कैप्टन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसकी ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम इनफैक्ट देख रहे हैं कि डीप पॉइंट पे फील्डर रखा हुआ है जो कि रन सेविंग ऑप्शन है। यहाँ पॉइंट के फील्डर को आगे लाया गया है, ये बुरी गेंद के लिए ये फील्डर थे ये पहले ही। फिर बैकफुट पर खेलने का मौका दिया इस बार फहद इकबाल को, पहले से ही तैयार थे। पिछले बाउंसर के बाद उनका झुकाव पिछले कदम पर ही था, इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने नई गेंद से छुटकारा पा लिया कुछ देर के लिए। अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी चैनल बॉलिंग की है अहमद बशीर ने, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। नए बॉल से आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें जितनी भी स्विंग अवेलेबल है। बट स्टिल मेरा एतराज़ अभी भी वही है कि आपने कम अटैकिंग पोजीशन में फील्डिंग रखी है। स्लिप जो भी खड़े हैं वो भी काफ़ी वाइड खड़े हुए हैं दोनों फील्डर। देखिए बहुत ज़्यादा गैप है विकेट कीपर और ये रादर हम कहेंगे थर्ड स्लिप में दूसरा फील्डर है, तो गैप काफ़ी है। उसके बाद गली का फील्डर है, तो इस एरिया में बहुत बॉल जाने का खतरा है, और अगर फील्डर नहीं होगा तो वो चौका हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा साथ नसीम को शायद अपनी स्ट्रैटेजीज को रिविजिट करने की ज़रूरत है। असद शफीक का कद निस्बतन छोटा है, इसलिए इनको मुश्किल पेश नहीं आई गेंद को छोड़ने में, लेकिन अच्छा अग्रेशन अहमद बशीर की तरफ से। पहले मैच में जब विकेट से इनको ज़्यादा मदद मिली थी तो इनने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था लाहौर ब्लूज के सामने, और उसमें पहली इनिंग्स की जो दूसरी नई गेंद थी उस पर इनने ज़्यादातर विकेटें हासिल की थी। रन लेना चाहते थे, मौका नहीं दिया कवर फील्डर ने। अली मंसूर बर वक्त पहुंचे, महंगा ओवर अहमद का 44 पर 3। एक बात तो कहना होगा कि लाहौर वाइट्स आमिर जमाल को डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसे बॉलर थे जो थोड़े थ्रेटनिंग लगे थे, जिनके अंदर अच्छी पेस थी, अच्छा एग्रेशन था। तो उनके जाने से, जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ चाइना जाएंगे एशियन गेम्स के लिए, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं पाकिस्तान में ARY ज़ैप और माइको पे, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान से बाहर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन चैनल्स पर देख सकते हैं, और ये TPT प्रोडक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लाहौर से बराह रास्त, और अच्छी प्रोडक्शन है, इसमें कोई शुबा नहीं। यहाँ ये एक और इनोवेशन आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब से कोलैबोरेशन हुई है TPT के साथ। तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे भी आपने जिक्र किया कि दुनिया भर में यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन देख सकते हैं। इससे बहुत हौसला मिलेगा क्रिकेटर्स को कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अननोटिस नहीं जाएगी। जो भी मैच यहाँ पे रजिस्टर होगा वो परफॉर्मेंस तो उन लोगों के जहन में रहेगी।
तो इसलिए वेल डन पीसीबी, वेल डन टीपीटी इस शानदार प्रोडक्शन के लिए। लेग स्टंप लाइन को अपनाया, वहां से आउट स्विंग करने की कोशिश की थी अहमद दानियाल ने। अहमद वापस आए हैं, और अगर आमिर जमाल जब खेले थे तो इनको नहीं खिलाया गया था अहमद दानियाल को। ये दोनों का एक साथ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले स्पेल में सलमान बट भी बॉलिंग पार्टनरशिप्स का तस्करा कर रहे थे। अगर ये दोनों जो तेज़ बॉलर हैं, जो 140 से ज़्यादा की रफ्तार पर आते हैं, तो जाहिर है फिर बैट्समैनों पर शिकंजा आप और कस सकते हैं। अभी इनके कंधे में तकलीफ भी थी, कोई देर पहले ही बाहर चले गए थे, लेकिन ये फिर से वापस आए। आमिर जमाल और इनका पैर बहुत अच्छा हो सकता था। इवन थोड़ा सरप्राइज हुआ था मैं जब नवीद को भी बिठाया गया इस मैच के लिए और बिलावल को खिलाया गया। नॉट दैट कि बिलावल अच्छे नहीं है, लेकिन इस पिच के अकॉर्डिंगली जो नवीद ने जिस तरह से बॉलिंग की, जो पेस उन्होंने दिखाई थी, वो थोड़े थ्रेटनिंग लगे थे। लेकिन अगर उनको ड्रॉप करके आप एक कम पेस वाले बॉलर को खिलाएंगे, और इनके लिए तो शानदार सीजन रहा है। ऑल्दो इन्होंने विकेट ज़्यादा हासिल नहीं किए इस इनिंग में, गुलाम मुदस्सिर, लेकिन बॉलिंग कमाल की है, क्योंकि इनके पास अच्छी पेस है, एंगल भी अच्छा है, एक्स फैक्टर है। तो आपको गद्दाफी स्टेडियम में एज अ फास्ट बॉलर एक्स फैक्टर तो चाहिए। ये जो पिचेस हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं उछला, लेकिन क्योंकि कद छोटा है से शफीक का, इसलिए मुश्किल पेश नहीं, अच्छे तरीके से उन्होंने डक किया। एक ये जो गेंद है कोकाबरा की, ये अभी रास नहीं आई कजाफी स्टेडियम को, तो ये बिल्कुल रास नहीं आ रही। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं यहाँ जो मैचेस हैं, मासिवाय एक फाइनल के पिछले बरस, उनका नतीजा सामने नहीं आ रहा। शायद इससे बाहर भी सोचा जा सकता है, इस गेंद के बाहर भी सोचा जा सकता है कि ड्यूक का तजुर्बा हो चुका है यहाँ पहले ही, वो भी रास नहीं आया था, वो एक दूसरी शायद इंतहा थी। और ये जो गेंद है कोकाबरा की, ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में वहाँ इस्तेमाल होती है, वहाँ पिचेस में बाउंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया की तैयार करता विक्टोरिया की बनी हुई गेंद है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गेंद है, लेकिन ये मेरा ख्याल है शायद हमें थोड़ा सा देखना चाहिए अपने मशरक़ में। भारत में जो एसजी की गेंदें इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी पिचेस मिलती जुलती हैं पाकिस्तान से, तो एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। उस तर्ज की एक गेंद चाहिए पाकिस्तान को, तो खेल और दिलचस्प हो जाएगा इन्हीं पिचेस पर। आप क्या कहते हैं अली? देखिए, मैं थोड़ा सा शायद इख्तलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो इसी बॉल से ज़्यादातर खेली जाती है। लेकिन भारत भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। देखो, उनकी जो क्वालिटी है वो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, उनके डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि जैसे गद्दाफी स्टेडियम की अगर हम बात कर लें, तो एक पिच ऐसा है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्ले बिछाई गई है, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। अब यही बॉल के साथ जब आप एबटाबाद जाते हैं या केआरएल में खेलते हैं या पिंडी स्टेडियम में खेलते हैं, आप उनके अगर रिजल्ट्स देखते हैं, बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, बैटर्स की परफॉर्मेंस भी इवन देखते हैं, बहुत इवन है। लेकिन मसला सिर्फ हमें आके आता है गद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ की पिचेस सूट नहीं करती हैं। तो अगर हम गद्दाफी स्टेडियम में इसी बॉल से खेलें, लेकिन वो जो पिच हमने ऑस्ट्रेलियन क्ले से बनाई गई है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो शायद इस चीज़ का हम खमियाजा हम कवर कर सकते हैं। तो शायद ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पिच का इस्तेमाल करना डोमेस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक मकसद के लिए पिच मंगवाई गई है, तो अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर सेम बॉल एबटाबाद इधर उधर अच्छा कर रही है।
फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद की। या 100 ओवर्स के करीब हम आ रहे हैं और कराची अपने चौथे बैटिंग पॉइंट्स के करीब है। नई गेंद जो है वो नीचे रह गई। बहुत ज्यादा क्रीज से खेल रहे हैं पिछले बाउंसर के बाद अहमद को। फहद इकबाल अभी इतना अगले कदम पर आते हुए हमने देखा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो शाइन है वो चलती चली जाएगी इस बॉल की भी। और ये तो हम जानते ही हैं जब 35 से 40 ओवर गुजर जाते हैं कोकोबारा के तो रन ही रन होते हैं उसके बाद। और इसी चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे होंगे फहद इकबाल भी, जो अभी थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि इनका कमबैक है डोमेस्टिक में, तो थोड़ा वक्त ले रहे हैं ये फैसल इकबाल के छोटे भाई जावेद मियादाद साहब के भांजे। यहाँ इनके खानदान की अच्छी यादें हैं यहाँ कजाफी स्टेडियम से। हाँ, एक और बाउंसर और इस बार नजरें हटा ली। बहुत ही पहले ये अच्छा तरीका नहीं था और गेंद लगी है जाकर इनकी बॉडी पर। शायद फिजियो को बुलाया जाए। अंपायर आजकल खतरा मोल नहीं लेते, फिजियो पे तैयार रहते हैं हमा वक्त। एक बार फिर लैक ऑफ पेस और लैक ऑफ बाउंस की वजह से बॉल उनकी बॉडी पे हिट किया है। अपनी नजरें भी हटा ली थी, जज नहीं कर पाए थे सही तरीके से। उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बाउंस नहीं मिला क्योंकि वो तैयार थे छोड़ने के लिए। अगर आप पहली मूवमेंट देखें तो शायद उनको अंदाजा था कि बॉल उनके सर के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन लैक ऑफ बाउंस की वजह से उनकी छाती पे ये बॉल लगा। लेफ्ट शोल्डर और छाती के दरमियान में जगह लगाई, लेकिन शायद वो कंकशन का टेस्ट भी साथ चेक जरूर कर लेंगे। अच्छे वेल बिल्ट हैं फहद इकबाल, फिटनेस भी इस बार बेहतर नजर आ रही है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऐसा लग रहा है कि कंकशन के ही क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं फिजियो उनसे। जैसे आप अभी कह रहे थे कि चांस नहीं लेते हैं अंपायर कोई भी किसी किस्म का भी। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। हम नहीं चाहते हैं कोई भी ऐसा वाकया पेश आए बाद में पछतावा हो। अच्छे अंपायर हैं राशिद रियाज, अच्छा कंट्रोल है गेम पे। यहाँ खड़े हो गए फहद इकबाल फिर से, लेकिन उलझन में नजर आए ये यहाँ पर जो बाउंसर्स इनको किए गए हैं। तो अब और ज्यादा हौसला अफजाई होगी ये पिछले 2 ओवर्स देखने के बाद। जो लाहौर के बॉलर्स हैं वो ये बाउंसर्स करने से ये गुरेज करेंगे नहीं मजीद फहद इकबाल पे। डीप स्क्वायर लेग को पीछे भेजा जा रहा है, लॉन्ग लेग को भी। शॉर्ट लेग पर कोई फील्डर नहीं। और क्या ये बोल्ड हुए या फिर डेड बॉल? जी हाँ, ये डेड बॉल करार दी जाएगी। हट गए थे, शायद बॉलर के हाथ के पीछे कोई मूवमेंट थी, डिस्ट्रैक्ट हुए फहद इकबाल। या परेशान हो गए अहमद बशीर कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ सामने भी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लेट डिसाइड किया फहद इकबाल ने बॉल छोड़ने का। बहुत देखिए पोजीशन में आ गए थे, बॉल हवा में आ गया था जब उन्होंने डिसाइड किया कि बॉल उनको नहीं खेलना है। और बज़ाहिरन सामने ऐसा कुछ नहीं था जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सकता बैटर को। बट एक चीज है जो बैटर के हक में है, यहाँ गेंद यहाँ रिलीज हो चुका है। रिलीज होने के बाद ये पीछे हटे। दूसरा रन भी बनना चाहिए। यहाँ पर तीसरा भी मुमकिन है। ऐसा शफीक मुड़े थे,
गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन तक चली गई क्योंकि नई गेंद है, इससे तेजी से ट्रेवल करती हुई गई। बैट्समैनों को भी तवक्को नहीं थी कि इतना ये दूर पहुंच जाएगी। काफी कुछ हो रहा है इस ओवर में। देखा हमने एक बाउंसर भी लगा है फहद को, और शायद उस बाउंसर लगने की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, थोड़ा रीफोकस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ऐसा होता है बैटर्स के साथ, लेकिन शायद वो जो छोड़ा उन्होंने, थोड़ा हैरानगी हुई मुझे। ये निस्बतन बेहतर खेला इस बार गैप में, मिड विकेट के इलाके में, और 1 रन हासिल किया। खासा जारहाना ओवर था अहमद की जानिब से। अगले ओवर में भी सामना करना होगा फहद को ही, 348 पर 3। Fahad Iqbal has been under pump for a while now. Asad Shafiq on 76. Got off to a good start. Karachi looking solid, trailing by just 161 runs. Ahmed Daniel will continue. They've got the new ball in hand. They are targeting the batters. We've seen a couple of bouncers. Just teasing. It's a change in field now. Got a leg slip in. Slip in a gully. Might see some bodyline bowling. Or perhaps on leg stump. Ahmed Daniel's got pace for sure. Perhaps a short leg could be handy at this time. Oh, they're going to test him there. Flicked away nicely. They're now not going to shy away in testing Fahad Iqbal on a shorter one. Yes, the way he has been responding to the short balls, he's been taking his eyes off. So that gives the bowlers that extra push to keep on bowling short at him. Bit of swing there. Allowed him to pass by Asad Shafiq. He's an experienced one. He might not feel that threatened. But Fahad Iqbal, on the other hand, he did receive a blow. And that was pretty nasty. Have a look at that. Ahmed Daniel. Oh, he was in no position to duck it. So many doubts in his mind, and have a look at that. The very next ball, he just, I don't know what he did actually. It shouldn't be a dead ball. Yeah, it's strange because the batter, when he decided to fade away, the ball was halfway down the pitch. And that by that time, it's too late. And I don't know how he got the benefit of the doubt. But somehow, he's still there. Yeah, because you can see clearly when it pitched, then he only started to move. Ever so slightly, just when the ball was about to pitch. Maybe that blow actually did create some doubt in his mind. Oh, that's another one, a shorter one. So they have a plan, that's what we've been talking about, Lahore white ballers. But how consistent they can and how sustainable this plan will be, that's the question. Yes, and the bounce in the pitch is also showing some variation now. It's not going the same height every ball. It's varying. Sometimes it carries to the keeper at head high. Other times we see it fall well before the keeper. So this itself creates doubt in the batter's mind. And it's not easy to face short balls when the pitch is
start to react like this. Well directed bouncer yet again. Shafiq, he's really confident letting it go away. Ghulam server. Signaling 2 of the over. Yes, Asad Shafiq, not being very tall, tends to pick up the length quicker and shows much more compact technique and is at home against the fast bowlers. He has time on his side to do what is required. Not so much the same case on the other end. Leg slip comes off. Now they're strengthening the offside. Just one slip in a gully and probably short cover in a catching position. He's changed his angle as well. Ahmed Daniel coming over the wicket now. Slow one this time. Nicely negotiated by Asad Shafiq. He'll keep the strike. 350 up. 4th point for Karachi Whites. It seemed pretty silly to allow this single on the last delivery because we've seen Fahad Iqbal struggle from this end against the short ball. And why keep him off strike? Could have bowled another bouncer and just kept both the batters at their own ends. But I don't know what the captain of Lahore Whites and the bowler were thinking. Just allowed a simple single. Nearly chopped it on to his stumps, Asad Shafiq. His lack of bounce. Yeah, that's a very good point. Again, the tactical decisions of Saad Naseem, that has been a big question mark. This time it wasn't that short to cut. Got away with it. Fahad was clearly struggling. And they were actually looking to get him off the strike, and that's exactly what Lahore White bowlers allowed. Another change in the field now. The fielder from the cover comes in, the short catching cover position. It's not comfortable at all, Fahad Iqbal. You need to catch that if you're a Lahore White captain or bowler. Just bring more fielders in his eye line. Keep checking him with a shorter one and maybe play a bluff. Go for a Yorker. Unsettling his nerves. Yes, clearly is not comfortable with the short stuff. Although we know Ahmed Bashir is no express pace, but still he is struggling. So he can afford to have a short leg as well. It's way outside off stump. Not the sort of bowling you would want to bowl to. Keep it simple within the stump. Probably bodyline bowling. Has been a hard-fought 25 of 52 deliveries for Fahad Iqbal. Coming back after 5 years, that's a long time. It's got some concerns on the side screen. I think it's all sorted now. Shot again. Again failed to negotiate. Just cramping himself. Well, very disappointing to see that. Fahad Iqbal is just refusing to watch the ball till the end. If you could just see and slow down here, he takes his eyes off the ball. As the point of contact comes closer, he just takes his eyes off. And this is a poor technique to play this kind of bowling, which is not express at all, but just because he lacks that technical part. And a very simple one, watch the ball.
Now the doctor will come in and have a check to see if there is no concussion. He looks okay, although, but still the routine matter will be done. And it was off the arm, then on the grill of the helmet. Well, Fahad Iqbal literally exposed himself, his weakness rather. And now Lahore white ballers have something to ball at. They all are testing him. It's good to see he has all smiles out there with the physio. But this is one solid trial of Fahad Iqbal. Indeed, it will be in the balls to come as well. So he needs to wash the ball till the end to have a better chance of connection. Meanwhile, Asad Shafiq on the other end, he's on 78. Has looked all right, not looked very fluent. A man of his experience and with his record. But he has had plenty of loose stuff to take advantage of. He's been successful scoring runs of the loose stuff that is available. And I'm sure with the runs on his back, he will gain confidence and the flow will naturally come back. He'll surely receive some tips from Asad Shafiq on how to deal with the shorter stuff. It's always hard mentally and psychologically to bring back yourself into a place where you can deal with it. Again, they've got shot catching right in front of his eyes. I wouldn't mind a short leg as well. This time got some bat on it. He'll be delighted, or relieved rather, to get off the mark. Another short one it was, and Fahad just managed to get some bat on it this time. Got to the other end, and if it stays at the other end, Ahmed Danial, that would be a more harder test for Fahad Iqbal in terms of pace. So let's see if Ahmed Bashir is up for the occasion, whether he can keep Fahad Iqbal on the striker's end for the next over. Just a single there. Again, single of the last delivery. Asad Shafiq will be on strike. Overdone. 100 overs are done. Karachi Whites 352 for 3. Coming back to the points table, Karachi Whites have taken 4 points. They've got 353 of the 100 overs. And no more further points can be achieved now once the 100 overs are gone. So both teams, I have a point to discuss, Marina. There was no intent in the last 15-16 overs to get the maximum points from Karachi. And then just recently, there was no intent to keep Fahad Iqbal on strike. So it kind of baffles me what kind of strategic decisions have we seen today. Nicely dealt with Asad Shafiq. He won't have any problem. So you need to be aware as a bowler what your plan is against the particular batter. That is Fahad Iqbal. He's struggling with the shorter stuff. Asad Shafiq, whenever provided an opportunity, will hit you for 4. Come on, Saad Naseem. You don't need the deep point for a batter who is struggling. You can get him up at square leg, increase one more slip, have people all over him, and announce your attack all out. But at the moment, we just see that the slip has come out and is stationed at short square leg. Oh, it took off. Nearly got away with it. Fahad Iqbal, he's not comfortable. He's smiling, but you can tell how shaky he is. A batter is struggling to the core.
And I just cannot understand the captain. Why does he have deep point for him? There is absolutely a very minimum chance that he will place anything over point. He just needs that fielder to come up and have a catching position, maybe in the slip. Especially with the line Ahmed Danial is bowling, there's no point in keeping that deep fielder. Again, well targeted delivery, shorter one. If he is to play a shot, he'll play in front of square, even with the angle. So again, there has been many question marks over the captaincy of Saad Naseem. How he's been dealing, how tactical he's been. This time, it was a better technique. More confident from Fahad. Just getting behind the line, full face of the bat. Got on top of the bounce. Oh, wanted to duck it. Didn't get a lot of bounce there. Yes, he's assuming short balls. He's assuming the length of the bowler even before he has arrived to bowl. And that is where the downfall is actually. And no coaching technique teaches you bravery, which is a key to batting at top level. I wouldn't mind Ahmed Danial trying for a Yorker against Fahad. After a few deliveries right now, maybe. Even a loopy, slower one could deceive him. No, they're still going on with the short stuff. It seems like he's getting a little confident. 354 for 3, Karachi region. A little battle going on. Fahad Iqbal fighting for his wicket. Lahore White pace bowlers are aiming for the shorter deliveries, trying to extract that wicket. Ashad Safiq he's on 80. He's enjoying the show from the other end. Yeah, he must be thinking what the problem is. Because when he bats, it's all too easy. And when it's on the other end, it looks like something different. Another pitch, another bowler. Slight changes in the field. Bilawal. He has the ball now. Driven. And driven beautifully. Exquisite drive from Asad Shafiq. He will not miss out on these half volley, friendly ones outside off stump. Yes, wonderfully driven. Through the covers. An elegant boundary for Asad Shafiq. The first ball, loosener. Very full and full advantage taken by Asad Shafiq. Ahmad Bashir bowled 4 overs. And they were building the pressure on this batting pair, but yet again Saad Naseem decides to take him off. Brings in Bilawal, who has been consistent, but again you need to understand the field positioning for a certain bowler. His pace is much lesser than Ahmed Danial. Again a loosener. This time misfield, and there'll be another boundary. Not sure about the plan here, Salman, but Yes, it's the price that they are paying of being impatient and not very clear-headed at times.
because if you offer something like that all day to Asad Shafiq, he'll keep you near the ropes all the time. He's that kind of a player. Saad Naseem, I'm not sure what he's thinking because he's only bowling Ahmed Bashir in 4-over spells. He's no express pace. He can bowl longer spells. But I don't know why he changes him after 4 overs. And even with Bilawal, you're bowling at Asad Shafiq. He's a well-settled batter, has no trouble in dealing the fast bowlers. Even with the new ball, you've got catching in front of his eyes. Haven't seen any uppish drives from him. And Bilawal is bowling a very friendly pace. It's like you're being asking to be hit. Just a better line and length this time from Bilawal. But these are not the wicket-taking deliveries. Absolutely spot on. If you bowl like this, no reasonable batter would allow you to come close to taking wickets. And this is something that the bowler and the captain need to think about, have a proper plan before they start. And if the bowler is not really loose, then why you need those short catching positions to start with? You can wait for 3 or 4 balls, let him get into the rhythm, let him get warmed up, and then have those attacking positions. This time slightly a better length and line. He's done for the over, got 2 boundaries. There's no worry for Asad Shafiq. But a lot to think about, Saad Naseem. Yes, and the body language in the field is not great either. Everybody just standing their ground. We can hardly hear a thing from the fielders inside. And that's not good state to be in while the partnerships are on. Straight to the fielder. But again, it's a question of what the plan actually is by Saad Naseem. .362 for 3. Probably looking for something. All right, looking for wickets, and the sparrow is looking for something to eat. It's a hot day here in Lahore. Temperatures are getting a little cooler as we move into the evening. Too predictable. Fahad Iqbal knows that they are going to bowl shorter stuff to him. Yes, and I think he needs to come from over the wicket and open up his other options of getting the batter out as well. Because this, as you just said, is too predictable. Consistently bowling the short ones, not mixing it up. And to a batter who has been struggling, who himself is presuming what's coming and is often making mistakes in picking up what's coming. And the surprising thing is that it's the same field placement for both of the batters. And same bowling plan as well. Asad Shafiq, he's well settled in, never had a trouble facing the shorter ball. Still, you're going with the same plan. Maybe too complacent as a bowler and captain as well. So at times it is hard to understand who is naughty. Is it the bowlers or the captain? Having same field for 2 people, one on well settled, looking comfortable, and the other one struggling. If Fahad Iqbal was struggling with the shorter one, now I think with all this practice, he's becoming more confident.
Yes, from one end, it's throwdowns to Asad Shafiq, and from the other end, I think he's getting prepared well with the short balls for the future games. Still not willing to change the plan or the line of attack. Target practice? I'm not sure. But this is poor from Lahore Whites now. You need to quickly change to your plan B. Once you've tried one plan and it hasn't really worked. Yes, Marina, it's one thing talking about GSL not producing results, but it's a huge question mark over the game awareness and the ability to get people out on good tracks, because teams do take wickets on the good tracks as well. But the lack of planning, the lack of execution, lack of the length of applying pressure on the opposition has been very clearly visible all through these games. And this is something the teams would really need to think about. Change in angles. But the length remains the same. They've got sweeper here. We'll pick up a couple. I think the nerves are gone now. Fahad Iqbal seems more stable and settled. Again, as you mentioned, we haven't seen any mix-ups. If you've got a plan of banging in short, you should try something fuller just to unsettle and surprise the batter. Not a really good technique of running, just going around in circles. And again, nicely dealt with. Over to end. 366 for 3, Karachi Whites. And we'll have drinks. We'll join you shortly.
Karachi region still trail by 143. They've averted the follow-on. The target was 360. That 100 over marks, they couldn't get up to the maximum batting points despite being very solid. 2 centurions. Asad Shafiq still batting on 89. More hard work for the bowlers. Ali Manzoor has toiled hard. He hasn't got a chance with the second new ball. But Ahmed Bashir and Ahmed Danial has really bowled a barrage of short pitch deliveries, especially at Fahad Iqbal, who looked all at sea in that phase. Took a few blows as well. Surprisingly, went out of line of a delivery pretty late, very, very late in fact, to allow that ball to hit the stumps. That was declared dead ball by umpire Rashid Riaz. A wide slip, a gully, a short cover, and a short extra cover on the offside for Bilawal Iqbal. Asad Shafiq really flays it through the offside, but that cover fielder is sitting back for that solid drive. Good evening, Ali Yunus. Thank you very much. So happy to see Asad Shafiq playing so elegantly well. He's just so pleasing on eyes. The way he's batting, that suggests that there's plenty of cricket left in him. And I'm really surprised, Faisal, why Karachi Whites did not go for that extra bonus point. They had the opportunity. When you look at their scorecard, when there are 2 centurions, one is almost about to get his 100. So you think that they would have gone for that extra point, maybe pushed a little bit more, because we might not get the result, but still they should have pushed for that bonus point. Yeah, completely agree. I'm as surprised as you are. It just takes me back to my point where I believe Pakistan domestic cricket has very little tactical variations. The quick single. We just bat and ball. We like to do that. We don't like to think what we want to achieve from that process. Whatever comes our way, we take it. But there's no extra effort to make the most of what's put on offer. Yeah, but individuals must think that they're being judged because of this performance. The same goes for the captain also. If you make the captains, I think it is up to the captains how to strategize, how to plan, how to go about it. And I think Sarfraz Ahmed has missed the trick here. He should have come up in the batting order and looked to push to get to that extra bonus point. They steered this away. The chase is on. The fielder won't get it. Width on offer, and he just angled the face of the bat. Fahad Iqbal collects a boundary. He's getting better with every delivery he faces. That was deliberate. He angled his bat towards that area, towards the third area. There was no one there. Smart cricket. He's taken 65 deliveries. Few blows. He's taken few blows on his body, but now he looks settled. Probably Bilawal is the least pacier of the 3 quicks. That will give Fahad some relief. Quick run. Mid-off was on his heels. And it was picked up very nicely by Fahad Iqbal. Running between the wicket, between the two, has improved as well, as they've now been together for 88 runs. Good partnership again. Yeah, good cricket. You've got to give a little bit of margin to Fahad, because he's making a comeback in this competitive cricket. He's not played much cricket in the last 3 years, so there will be nerves. But he's taking it up. He's taking it on. But how good is Asad Shafiq? So pleasing. I just love the way he bats. 372 for 3.
Looking ahead to the Test tour of Australia, which is always a very difficult tour for the Pakistani batters in particular. His first class season. Do you think any place is up for grabs in the national team in the middle order, Ali Yunus? Well, there is always a place for the performer. And looking at the performance for Asad Shafiq, he's already got 100. He's all set to get another one. Why not? He's got the experience. He's fit. Moving in the field, very good. Ali Manzoor for the first time with the second new ball. So why not, Faisal? Although I know there is Saud Shakil, there is Salman Ali Agha, there is Rizwan to play for 4, 5, 6 number. But there is always place for quality. So yes, if it's up to me, I'll definitely still take a chance on Asad Shafiq. But Ali, if you look at it, the Test batting order is pretty settled. Fahad is more comfortable against spin, looking for 2, but Asad Shafiq says no. See at the top of the order, Pakistan's pretty settled with Abdullah Shafiq, Imam, Shan may come into the reckoning. 4 Quaid-e-Azam, 5 Saud Shakil, 6 Rizwan, Salman Ali Agha. Although there is a question mark over him for the longer format in the long run. What do you make of it? See, as you just said, Australia tour has never been easy for Pakistan team. I'm all up for it, all these youngsters. I know they have lots of talent, lots of skill, but somehow you need experienced players too, especially batters. You can get away with bowlers, bowling quick, but as a batter you need experience because lengths there are different as compared to Pakistan or subcontinent if you talk about. Pitches are hard and you need, and Asad Shafiq can pull and hook. When I said Rizwan, actually Sarfraz is also in reckoning. He's performed brilliantly since his comeback, since he got replaced by that concussion rule. We'll come back, talk about this more. 374 for 3. He took it off of his middle stump. Asad Shafiq. Bilawal has been tailing the ball into the right-handers. I think Asad Shafiq is feeling pretty in. He's seeing him pretty well. It looked risky though. Yeah, the good part is those 91 runs have come of only 144 deliveries. So you can tell the way he's striking the ball, that strike rate suggests that it's come in a good time. And he's been helped by some average bowling also. They've been bowling to his strength. I don't think this slow delivery will work against someone as classy and as adept to the longer format as Asad Shafiq. Some T20 merchants? Probably yes. He's looking for that rough, which is make brilliantly for the off spinner, although we don't have an off spinner. Bilawal is bowling those slow deliveries with the off spin grip. A waste of a delivery. Wide of the crease, Bilawal Iqbal almost
a wide. Must have been pretty close. Umpire Rashid Riaz gave it a good look. Angled face, but there is protection there. In terms of result, Ali Yunus, once that follow-on was avoided, I think it's very, very, very difficult from here for any team to force a result. With Karachi taking their time, and innings run rate of 3.55, despite being only 3 wickets down. Really taken a lot of time out of the game without much progress. Result? What result? We don't know any result. We are here at Gaddafi Stadium. Good single. Very good single. Good cricket. Well, you have to be very brave as a captain. Very innovative, very thinking to get a result here. As you were suggesting, they can declare before 133, maybe get another 100 runs in quick time and declare and look to put pressure. But that asking for too much from Karachi, it's not going to happen. So it's going to be just play out the remaining day tomorrow. Another single. .377 for 3. The immediate source of interest in this game is Ashraf Shafiq's 100. As he clips this very nicely, calling for 2. It's in the gap, but I don't think Fahad wants to come back. Ali Manzoor, who was bowling really well with the old ball, he found that right kind of rhythm and pace, but then he had to take a long break. Almost 26 overs he didn't bowl since that new ball was taken. Finds a little bit of turn here. He actually has bowled well today because he's varied his pace. It's been impressive. Similar to what Noman Ali did. He found his mojo quite late in the inning. So did Ali Manzoor. And now probably I can tell he's adjusted it well. But the problem is that two batters are well set, especially Asad Shafiq, who plays spin so well. And Fahad Iqbal now is gaining confidence. So yes, it will not be easy. Fahad did survive that scary little patch where he was really attacked with short pitch delivery and Gaddafi's docile pitch. Didn't really matter because he was really struggling. I'm pretty sure he's enjoying the introduction of Ali Manzoor. But yeah, you're right about Noman. It took him a long time to adjust to what kind of pace he needs to bowl. So did Ali Manzoor, which is understandable because he's been playing after quite a long time. He's gradually got better. Asad Shafiq running hard. Another couple of runs will take him one stroke away from that magical 3 figures. Would be the third 100 of the innings. Although in the last 3 years we've covered a lot of domestic cricket, we've seen Asad Shafiq falter in nervous 90s quite a few times. So he must be thinking about those 3 figures.
He had the opportunity, and I think he knows it. That was short and wide. No protection in the deep. That smile will tell you the story. 381 for 3. Yeah, he knew it. He knew he's missed out on that. The length was there, the width was there. Just could not quite place it and time it. Yep, this was on. It was right. Yeah, that you can tell by the disappointment and the reaction of Asad Shafiq that he definitely has missed out on that opportunity to get to that magical 100. It does show that no matter how experienced you are, no matter how many times you've got there, you still get those nerves in the 90s. Just try to hit it too hard. Kill the stroke, kill the timing. It's a curious little game, Ali Yunus. We've seen two batters already in this game struggle really badly, but eventually were able to score half centuries. Saad Naseem, who looked at sea for most part of his innings, went on to make 61. Young Fahad also didn't look comfortable at all. But then a few blows against the spin really gave him that confidence to go to 71. Fahad Iqbal is another one who's battling. Keeping low once again, no timing. Yeah, he's battling. He's battled through difficult passages, but he still wants to be there, fighting hard. Yeah, but then this is what first class cricket is all about. Battling it out. Learning is the name of the game. You were mentioning about Fahd Munir. I can totally agree that Fahd Munir could have done it, but Saad Naseem, it surprised me the way he played. Because with so much experience, there shouldn't be any nerves. Or you can say that there's absolutely nothing for the bowlers. So if you just continue to battle, you get through those phases and then earn yourself some rewards like Saad did. So did Fahad Munir. And Fahad Iqbal is in the middle of doing that. You don't want to take a chance against this man's arm. He's stocky, but he's very, very quick. Tayyib Tahir. And not only he's got a bullet arm, but it's deadly accurate as well. You've seen him throw the stumps down from the boundary line. So with 15 yards out, definitely you don't want to take a chance on his arm. We're seeing some thinking into the captaincy, because we see a plan now. This plan was there in the morning first session. There was a short cover, short point, and a cover fielder. Yeah, I feel for him. Definitely feel for fast bowlers here. They have to do a lot of hard work, lot of bowling, lots of strength, lots of stretching to be done. It's just the age matter for Tabish. 381 for 3. Centurion for Karachi Whites. Ahmad Alam. 200s in 2 games at the headquarters. Ali Yunus, I said Centurion.
It's too early to be thinking about dinner. Manchurian on your mind? It was coming from you, so I thought, yeah, maybe it's Manchurian. It's about that time of the day when you feel hungry, Faisal. Quick single. You talking about me, Ali? For me, no time is bad time to get hungry. Yeah, but you're a fitness freak, so you better stay away from these non-healthy food. But it's such an irony. All the non-healthy food are the tasty ones. Yeah, food is all we can think of at the moment, Faisal, so I won't blame you for being hungry. There's literally nothing happening in the ground. You're just waiting for the day to end, all the players inside. You can tell by the approach these two batters have. So I don't blame you for being hungry. A lot of the media people internationally, when they talk about it, they say the lunch in the press box at Lord's is legendary. I'm sure you would know through your great brother Bakar Yunus, who's been in that position. Lunch here at the headquarter of cricket is not bad either. It's just I want a couple of portions of it, not just one. But I know you stay away from it just to keep your fitness. Asad Shafiq is running hard. Will that carry to the fence? It does, and that's the 100 for Asad Shafiq. What a magnificent knock this has been. The experienced, the classy, and he raises his arms, celebrates. His hunger is still there for everyone to see. His class is still there. Well played, Asad Shafiq. Superb inning. One of the best I've seen from Asad Shafiq. He was so fluent. There was a flair about him. His 30th century, 5th for Karachi Whites, and very first time at Gaddafi Stadium he scored this 102nd of this season. So some fantastic form Asad Shafiq is in him. He's the master. He's got the class. He's got the flair. He's got the runs. It does come as a bit of a surprise that it is his first 100 at Gaddafi Stadium. And that's that moment. Just a little pedal, a gentle tap, triumphant raise of the arms, and then thanking the Almighty. That is well deserved. Truly enjoyable. Whenever Asad Shafiq make runs, he doesn't make ugly runs. They're always pretty, pleasing on the eye. And I love his celebrations also. Very humble, very focused. This is what you want to see from a seasoned campaigner, Asad Shafiq. And as you were saying, still hungry for runs. That's what defines you as a cricketer. Hungry for more. That partnership is also, 100 of partnership has been brought up with that boundary that took Asad Shafiq to his 100. So great team effort. Huge first wicket partnership, and then 100 for the third wicket, and now 103 unbeaten for the fourth wicket. Really solid looking batting from Karachi Whites. Freed his arms, Fahad Iqbal. And fielder, Ahmed Bashir, came in play. Karachi region trailed by 122 runs.
you might as well fill that gap and bring the third fielder in that gap as well. If you want to persist there, you see that fielder sitting back. This couple of balls went through that gap between short point and short cover. And we've seen this field in Test cricket where the third man, which is slightly deeper, or the third fielder, I should say, which is deep cover, can come into that gap, and then Asad Shafiq will have no gap to drive through. But for now, Bilawal Iqbal persisting. 22 overs almost for Bilawal Iqbal. It's been a toil for all the quicks on this pitch. 21 overs for Ahmed Bashir, 17 for Ahmed Danial, sparingly used. Through the gap. How many times we've seen this? He was just poking at it outside the off stump, probably caught the shoulder of the bat and went through the gap. Lucky boundary for Asad Shafiq. Oh, he poked at it. Very, very lucky. Just went right between the two fielders. It is all working for Asad Shafiq. The way he has batted in this inning. 110 overs gone. 392 for 3. And it's over to Tariq Saeed and Marina Iqbal now. So 92 पे 3, शफीक 105 और फहद इकबाल भी काफ़ी हद तक अब पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, 39 पे मौजूद हैं। कतरी बेहतर बॉलिंग कराई है अली मंजूर ने, अच्छी फ्लाइट के साथ, अच्छी लेंथ पे। शुरू में रन जरूर कंसीव किए थे, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ पकड़ ली। ये अच्छी शॉट है और इस बार फील्डर के पास कोई मौका नहीं होगा। बहुत ही सीधा खेला फहद इकबाल ने और अब इनका एतमाद झलक रहा है इनकी शॉटों से। जी हाँ, जिन फास्ट बॉलर के सामने खासी मुश्किल पेश आ रही थी, यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया, बाहर निकले, चैलेंज पेश कर रहे थे, गेंद को हवा देने की सूरत में आगे बढ़कर खेला। देखिए एक मुस्कुराहट जो है वापस आई है, कि आंखें जो है पहली बार चमक उठी इस इनिंग्स के दौरान फहद इकबाल की। आंखें लाहौर वाइड के बॉलर्स ने खुलवाई जरूर थी, शॉर्टर डिलीवरी पे इनका इम्तिहान लिया, लेकिन अब जिस एतमाद से खेल रहे हैं ये भी एक बड़े स्कोर की ताक में। ये जरा शाबाश, अब्बाली शाबाश। 37वां ओवर है, 1 विकेट अली मंजूर ने हासिल की है, लेकिन इससे बेहतर बॉलिंग इन्होंने की है। ये जो फिगर्स हैं, बॉलिंग इससे बेहतर इनने की है, खासतौर पर जो इनके कुछ ओवर से जिसमें बैट्समैनों की आजमाइश हुई, सटल चेंजेस जो हैं नज़र आई थी, कंट्रोल भी बेहतर था। खासतौर पर आज जो स्पेल इन्होंने खाने के वक्फे के बाद किया था। एक और ओवर अली मंजूर का यहाँ जाता रहा, 396 पर 3। जब आपके साथ असद शफीक जैसे प्लेयर मौजूद हों, जिनकी क्लास की सब दाद देते हैं, टेम्परामेंट इनका बहुत आला है, फिटनेस आला है, और आज इसका
अंदाज़ा हमें हुआ जिस तरह इनिंग स्टार्ट की थी इन्होंने। खुले सिंगल ज़रूर मिले थे लेकिन बहुत जल्दी सेट हुए और उसके बाद अपना हुनर दिखाने में कामयाब रहे। आड़े हाथों लिया स्पिनर्स को भी, लूज डिलीवरीज, लूज बॉलिंग मिलती रही जिसकी वजह से इनका स्कोर बढ़ता चला गया। फास्ट बॉलर्स भी बासानी पुरएतमाद शॉटें खेलने में कामयाब हुए। दिलकश ड्राइव बिलावल इकबाल को लगातार खेली इन्होंने, का इस्तेमाल किया है। एक ट्रैप ज़रूर बनाया था लेकिन उसमें से निकलने कामयाब हुए और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में भी कामयाब हुए। दाद देनी पड़ेगी इनके टेम्परामेंट और इनके टैलेंट। दूसरी सेंचुरी इस साल बनाई है इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। पहले फैसलाबाद के खिलाफ KRL फाटा के खिलाफ राधा इन्होंने KRL स्टेडियम में सेंचुरी स्कोर की थी। ये ज़रा सा हैरानकुन है कि लाहौर में इनकी पहली सेंचुरी है कज़ाफी स्टेडियम में से शफीक की। 30 सेंचुरियां बना चुके हैं, 30 में सिर्फ एक सेंचुरी कज़ाफी स्टेडियम में, यहाँ पर रन्स के अंबार लगते हैं। या कराची वाइट्स ने आई फॉलो ऑन बासानी बचा लिया 3 विकेटों के नुकसान पर ही, और उसकी वजह जो है अच्छी पार्टनरशिप्स रही। पहली विकेट के लिए 169 रन की पार्टनरशिप हुई, तीसरी विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप हुई खुर्रम मंजूर और असद शफीक के दरमियान, और अब ये एक और बड़ी पार्टनरशिप है इनिंग्स की दूसरी बड़ी है 112 रन की असद और फहद के दरमियान। बड़ी आसान हो गई है पिच, जब गेंद पुरानी हो जाती है तो और ज़्यादा आसान हो जाती है। ये विकेट ने कुछ खास इम्तिहान लिया नहीं है बल्लेबाजों का अभी तक जितना भी हमने देखा, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ बुरी बॉलिंग का भी रहा है। जितनी पार्टनरशिप्स लगी सिवाय दानिश अजीज के जिन्होंने अपनी गलती की वजह से अपनी विकेट गंवाई, बाकी जिस भी बल्लेबाज को मौका मिला है मिडिल में आके खेलने का उसने रन्स बटोरे हैं। इसलिए इस विकेट की जहाँ तक बात की जाए दोनों टीम्स के लिए बराबर है, लेकिन बॉलिंग की क्वालिटी ज़रूर मुख्तलिफ नज़र आई। बेहतर खेला, स्पिन के सामने वाज़ेह तौर पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं फहद इकबाल। 397 पर 3। ये बहुत देर से पैड्स किए बैठे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर आप नंबर 5 नंबर 6 पर खेलते हैं तो जो 2 बैट्समैन आउट होने के बाद ही आप फिक्रमंद हो जाते हैं अपनी बैटिंग के मुतालिक। किसी भी वक्त 2 विकेटें जो हैं गिर सकती हैं। ज़्यादातर 2 विकेटों के ही फ़र्क से आप पैड्स करते लेना, या जो है 1 विकेट के गिरने का आप इंतज़ार करते हैं फिर पैड करने जाते हैं। इसका इन्हिसार काफ़ी हद तक होता है कि किस तरह की पिच और क्या अपोजिशन के खिलाफ आप खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है जहाँ की इस तरह आज यहाँ की कंडीशन है उसके हिसाब से आप 1 विकेट का मार्जिन ज़रूर दे देते हैं, लेकिन ऑन सेफ साइड ये ज़रूर होता है कि आप अपना सामान अपने पास रखते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर लगातार विकेटें गिर जाएं तो आप तैयार ज़रूर हो सकें, इतना मार्जिन हो। यहाँ कुछ क्रिकेटर्स जो हैं ऐसे भी होते थे एक ज़माने में जो बड़ा माइंड करते थे। कुछ ओपनर्स ऐसे होते थे कि अगर नंबर 4 जो है उनके अंदर दाखिल होते ही नंबर 4 या नंबर 5 पैड करके बैठ गया तो वो बुरा मनाते थे कि हम पे आदम एतमाद जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है और ये एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। मैंने भी ओपन किया है तो मैं इन जज्बात को समझ सकती हूँ, लेकिन जब टीम गेम की बात हो तो आपको मोहतात रहना पड़ता है। पहले उठाना चाहते थे, फिर गेंद को धकेला सामने की जानिब, लेकिन ये पहुंच गए। असद शफीक विकेटों के दरमियान तेज दौड़ते हैं। कॉल फहद
इकबाल की थी, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्ड किया असद शफीक ने। विकेटों के दरमियान अच्छा दौड़े हैं ये। लास्ट मिनट में अपनी शॉट को एडजस्ट किया, और क्योंकि काफ़ी आगे निकल गए थे तो इसलिए इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था क्रीज में पहुंचना, और असद शफीक जितने फिट हैं तो मुश्किल उनके लिए भी नहीं रही। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर आज असद शफीक की जानब से देखी हमने रनिंग में, लेकिन इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। तैयब ताहिर थे, गो के वो डीप थे मिड ऑफ पर, लेकिन वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट थ्रो की, जो कि उनकी पहचान है। तो जितना भी डीप खड़े हों, उनका निशाना जो है ये बड़ा ही कमाल का है। ये बहुत अच्छी थ्रो थी, 399 पर 3। बिल्कुल आज सुबह के सेशन भी हमने देखा कि डीप से इन्होंने थ्रो की थी जब अमाद आलम बैटिंग कर रहे थे, और शायद 2 या 3 इंच का फर्क रह गया था स्टंप से। थ्रो इतनी ऊपर ही गुजरी थी, वरना वो भी रन आउट हो सकते थे। ये उस तरह के खिलाड़ी हैं जो अपनी फील्डिंग को भी इंजॉय करते हैं ग्राउंड पर, हाँ किसी भी गोशे में मौजूद हूँ। ये डीप में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तैयब ताहिर, मैंने कोई ऐसा फील्डर नहीं देखा पाकिस्तान में जो इतना डीप से जो है, जिसकी रेशो इतनी ज़्यादा हो डायरेक्ट थ्रो करने की। हमने बात की कि फील्डिंग को एंजॉय करते हैं, और ये काफ़ी वाज़ेह था। एक बार फिर गेंद इनके पास ज़रूर गया, और अगर आप स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में अगर आप फील्डिंग को नहीं एंजॉय कर पा रहे तो आप अच्छी फील्डिंग कर भी नहीं सकते, ना एंगेज रह सकते हैं। 400 रन्स कराची वाइट्स ने इसी अरसा में मुकम्मल किए हैं, साथ साथ उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं। फील्डिंग का पाकिस्तान क्रिकेट में एक ज़माने में बड़ा इंसेंटिव हुआ करता था, और जो इफ़ात इकबाल के मामू थे, एक अनवर मियांदाद, जावेद मियांदाद के छोटे भाई थे, और वो बहुत अच्छे फील्डर थे। उस ज़माने में डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको चोटी का फील्डर समझा जाता था। हालांकि उनकी बैटिंग है वो टेस्ट मैच की कभी ख्याल नहीं की गई, लेकिन जब भी होम टेस्ट मैचेस होते थे पाकिस्तान में तो अनवर मियांदाद को 12वां खिलाड़ी मुकर्रर किया जाता था होम टेस्ट मैचेस में, और यहाँ लाहौर में भी टेस्ट मैच में फील्डिंग करने के लिए आते थे। वो एक इंसेंटिव था कि अगर आप फील्डिंग में अच्छा करेंगे तो आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आ सकते हैं, आपको 12वां खिलाड़ी बना दिया जाएगा, जो एक एजाज़ था। 404 पर थी। चार सौ चार 3 विकेट पर मंजूर मैराथन स्पेल कर रहे हैं। ये इनका 39वां ओवर है जो शुरू हुआ है। फिर से अच्छी बॉलिंग फहद इकबाल ने अगले कदम पर खेला। पाकिस्तान विमेन टीम की फील्डिंग का कैसा म्यार है? बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले से बहुत बेहतर है जहाँ तक फिटनेस और फील्डिंग की बात है। अब शौक डेवलप हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, जितना खेलते गए और जिस तरह की फील्डिंग देखी है इन लड़कियों ने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखा है कि वो कितनी कमिटमेंट शो करते हैं, तो अब जाके बेहतरी आई है। हमारे पास भी कुछ अच्छे फील्डर्स हैं। सबसे पहला नाम रियाना बेग का है, जो दुनिया में एक अच्छी फील्डर मानी जाती है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। फातिमा सना है। जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक शौकीन हैं। आलिया रियाज है, सिद्रा अमीन की ग्राउंड फील्डिंग लाजवाब है, जिस तरह की उनकी एजिलिटी है। तो अब जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ये जानते हैं और वो ये शौक रखते हैं कि फील्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसमें बेहतर होना ज़रूरी भी है।
बिल्कुल खामोश रखा मंजूर ने। फहद इकबाल भी, क्योंकि अब अपनी मिस सेंचुरी के आसपास हैं, इसलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। 4-4 है स्कोर कराची वाइट्स का, 3 विकेट। ज़्यादा कोशिश कराची वाइट के बल्लेबाजों की यही होगी कि ड्रेन आउट किया जाए। अगर कोई बहुत ही लूज डिलीवरी मिले तो उस पर रन्स के लिए जाएं, लेकिन बहुत ही मोहतात तरीके से इस वक्त बॉलर्स को खेल रहे हैं। फील्डिंग की बात आपने की तो मेरा ख्याल है कि अब जितना मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप देखें कि एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिहाज से भी फील्डर आइडेंटिफाई करना और उनकी प्रैक्टिस वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर फील्डर हर जगह पे अच्छी फील्डिंग कर भी नहीं सकता। स्लिप के या गली के या शॉर्ट कैचिंग के एक मखसूस फील्डर होते हैं। आप फिर देखते हैं कि एजिलिटी और थ्रो किनकी अच्छी है, उनको ज़्यादा आप आउटर फील्ड में एंगेज रखते हैं। तो ये वो चीज़ें जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो नॉर्मली एक अच्छे नताइज ला सकती हैं एज ए टीम एफर्ट। सुनहरी दोपहर है यहाँ लाहौर में। आखिरी दिन है आज सितंबर का। सितंबर का जो आखिरी सूरज है ये कुछ देर के बाद डूब जाएगा। 2023 में ये जो है क्रिकेट सीज़न की इब्तिदा के दिन होते हैं पाकिस्तान में। यहाँ इंटरनेशनल टीमें जब टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आती थी तो एक रोमान जो है वाबस्ता होता था इस मौसम के साथ। मौसम तब्दील होता है, ये गेंद जो शायद ऊपर से निकल जाती स्टंप्स के। जी, आम तासुर यही लग रहा था। साथ नसीम थोड़े से एक्साइटेड ज़रूर हुए थे कुछ लम्हे के लिए, लेकिन काफ़ी ऊपर लगा है। गो कि डीप थे, लेकिन ज़्यादा ख़तरे का सामना करना नहीं पड़ा फहद इकबाल को। 405 पे 3 कराची वाइट्स। शाबाश। अब तक इस मैच में सिर्फ 12 विकेटें गिरी हैं और 915 रन बन चुके। ये एक और मिस सेंचुरी बिल्कुल देखने के करीब थे। फहद इकबाल निकले थे क्रीज से बाहर, तो एक और बैटिंग संग मील जो है वो देखने के हम बहुत करीब हैं। इस मैच में हमने डबल सेंचुरी भी देखी है। असद शफीक ने आज सेंचुरी बनाई, खुर्रम मंजूर ने सेंचुरी बनाई। कराची की जानिब से मां सिवाय दानिश अजीज के हर बैट्समैन ने जी सेंचुरी बनाई आउट होने से पहले। काफ़ी खटक रहा होगा दानिश अजीज को, लेकिन गलती उन्हीं की अपनी है। ये दोनों स्पिन बॉलिंग खेलने में बहुत ही अच्छे रहे। फहद इकबाल के पास वक्त है स्पिन बॉलिंग को खेलने का। असद शफीक जो हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं स्पिन के सामने। क्रिएटिव शॉट था लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ फहद इकबाल का, आसानी के साथ उनने सिंगल हासिल किया। पहले कोशिश थी इनकी कि 4 रन हासिल करके अपनी सेंचुरी पे पहुंचे, लेकिन अब सिंगल पे इत्तेफाक किया। उम्दा शॉट, गेंद को गैप में धकेला, 2 रन हासिल किए। ये सही तरीका है स्पिनर से निपटने का, आप उसको लेंथ के ज़िम्न में ज़्यादा संभलने का मौका ना दें। 409 स्कोर है। अब 100 रन फर्क है दोनों टीमों के दरमियान और 7 विकेटें बाकी हैं कराची की।
यह मौसम खुशगवार हुआ है निस्बतन, साए बढ़ना शुरू हुए हैं। अहमद शहजाद भी वापस आ गए हैं फील्ड पर। और ज़्यादा फील्ड खुशगवार लगती है जब अहमद शहजाद यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पहले फाइक बट मैदान पर फील्डिंग करते रहे। लाहौर के 2 मुतबादिल फील्डर्स हैं वो रहे मैदान में, और ये गेंद सीधी चली गई अली जरियाब के हाथों में। फुल टॉस पर कैच दे बैठे असद शफीक, और ये सॉफ्ट डिसमिसल। साद नसीम को दूसरी विकेट मिल गई। मायूसी उनके चेहरे पे झलक रही है। साद नसीम खुशकिस्मत रहे इस बार। फुल टॉस थी जिसको डिस्पैच करना चाह रहे थे बाउंड्री के लिए, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल दिए। और इनको अफसोस जरूर रहेगा, मजीद बड़ा स्कोर कर सकते थे। और एक ऐसी कामयाबी जो कि तोहफा थी असद शफीक की जानिब से लाहौर वाइट्स के बॉलर्स के लिए। एक अच्छी इनिंग्स इख्तिताम पे आई। ये देखें, बहुत ही जूसी फुल टॉस। डिप कर रहा था शायद, इसलिए भी एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए। फील्डर को के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, अली दरियाब मौजूद थे, उन्होंने कैच कंप्लीट किया। और 113 की शानदार इनिंग्स खेल के असद शफीक वापस पवेलियन। कराची वाइट्स 410 पे 4। आबिद अली, लगता है बहुत अरसे के बाद इनकी मुलाकात हुई है रमीज अजीज के साथ, लेकिन ये कोई अच्छा अंदाज नहीं था। एक आपकी मुखालिफ टीम का बैट्समैन जो है वो मैदान में पहुंच रहा है, और ये वो मरहला होता है कि बैट्समैन जो है वो एक अजनबियत होती है, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। पिच जैसी भी हो, जब नया बैट्समैन आता है फील्ड पर तो उसको जो है आपको इतना फ्रेंडली होना नहीं चाहिए, आपको हरीफाना ही रवैया होना चाहिए होता है क्रिकेटर्स का। मैदान पर, मैदान से बाहर आप दोस्ताना रवैया ज़रूर रखिए। बिल्कुल, ये प्रोफेशनलिज्म में आता है कि जब आप ड्यूरिंग गेम हैं तो आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेहतर ये होता है कि आप प्रोफेशनलिज्म के दायरे में रह के उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें कि आपकी टीम ने एक विकेट लिए, एक नया बैटर आया है, उस पर दबाव क्रिएट करें। ऑफ फील्ड आप ज़रूर एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें एज अ टीम डिफाइन करती हैं। जी हाँ, क्योंकि साद नसीम ने विकेट हासिल की, और ये रमीज अजीज जब आए, ये देखिए ये उनका इस्तकबाल कर रहे हैं यहाँ पे आबिद अली। हम जानते हैं कि ये जेंटलमैन गेम है क्रिकेट जो है, लेकिन आपको यहाँ ये मैदान पे हरीफाना रवैया जो है उससे आप दस्तकश नहीं हो सकते किसी भी वक्त। नए बैट्समैन को आपको ये होना नहीं चाहिए ऐसा इस्तकबाल। 411 पर 4। स्क्वायर लेग से मिड विकेट की तरफ अहमद दानियाल को बाउंड्री पर भेजा गया। गेंद बाहर जा रही थी स्टंप्स के, इससे अपील देर तक नहीं सुनाई थी मंजूर की जानिब से। 411 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं। अभी भी 98 रन
कराची की टीम पीछे है, सरफराज अहमद को खेलने के लिए आना है। ये अब देखिए स्वीप करना चाहते थे, लो फुल टॉस स्वीप और उसको ज़मीन पर नहीं रख सके। सिर्फ एक ही फील्डर थे मिड विकेट पर, सीधा उनके हाथों में खेल दिया असद ने। गेंद से स्पिन भी खेला और जब टिप कर रही हो फुल टॉस तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बेहतर ये होता है कि आप अलोंग द ग्राउंड खेलें क्योंकि उस पर एलिवेशन हासिल करना मुश्किल हो जाती है और यही गलती कर बैठे। और हैरत ज़्यादा रह गए, अली ज़रियाब जो हैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि गेंद उनकी तरफ आ जाएगी या ऐसे। अभी भी खुश हैं, खुशकुन मैच है ये उनके लिए, उनके अब तक के करियर के ये बेहतरीन दिन है क्योंकि बड़ी सेंचुरी और फिर डबल सेंचुरी और यहाँ 50 रन फहद इकबाल के भी। खासी तगोदो इनको करना पड़ी इनिंग्स से शुरू में, इनको गेंदें कई लगी जिस्म पर भी, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने अपना मुकदमा आगे बढ़ाया है, लड़ाया अपना मुकदमा और अच्छी फाइटिंग इनिंग्स इस नौजवान बैट्समैन की। एक अच्छा सॉलिड कैरेक्टर दिखाया फहद इकबाल ने इस 50 रन के लिए, क्योंकि शुरू में थोड़े से शेकी लगे जब आए, उसके बाद अच्छा खासा इम्तिहान लिया लाहौर वाइट के पेसर्स ने। इनका बॉडी लाइन बॉलिंग की, शॉर्ट बॉलिंग की, जिसके खिलाफ ये बिल्कुल भी पूरे एतमाद नहीं नजर आए, लेकिन वहां से फाइट की और जो इनका स्टार्ट मिला था उसको 50 में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। ये ओवर द विकेट ही बॉलिंग करना चाहेंगे। आज जिस वक्त दानिश अजीज आए थे उनके सामने भी रफ हमें किसी हद तक नज़र आई थी, जो बॉलर के जो पाँव लगे हुए हैं पवेलियन एंड पर, और ये देखिए वहीं से गेंद जो है ये उछली है गैर मुतवक्के तौर पर, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही गेंदें करने का मौका मिला रमीज अजीज को, मंजूर को 413 पर 4। आलियान महमूद ये पिछले बरस सिंध के लिए एक फर्स्ट क्लास मैच यहाँ खेले थे लाहौर आकर, अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका, 4 विकेटें भी इन्होंने हासिल की थी। तो ये लेग स्पिनर को, ऑफ स्पिनर को खिलाना चाहिए टीमों को यहाँ, जैसे कि उस्मान कादिर थे उनको लाहौर ब्लूज ने नहीं खिलाया था, ऑफ स्पिनर खिलाए जा सकते थे क्योंकि लाहौर की टीम में भी लेफ्ट हैंडर्स मौजूद थे। बिल्कुल खिलाया जाना चाहिए था, क्वालिटी जेन्युइन ऑफ स्पिनर है और लॉन्गर फॉर्मेट में आई थिंक इस तरह के बॉलर्स को ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि एज अ कैप्टन आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ ऐसी पिच पर आप अपना एक बैट्समैन कम कर सकते थे, जब सरफराज अहमद जैसा बैट्समैन मौजूद है इस टीम में, और ये विकेट मिलनी चाहिए लेकिन पीछे रह गए मिड ऑफ के फील्डर। उनका ख्याल था कि अहमद शहजाद जो है पहुंच जाएंगे, बिलावल और अहमद के दरमियान लगता है गलत फहमी पैदा हुई, इसलिए कप्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है साद नसीम इस कोशिश से। बहुत लेट रिएक्ट किया था, यहाँ से साफ नजर आ रहा था कि गेंद हवा में गया, उसके 2-3 सेकंड बाद बिलावल को एहसास हुआ कि ये गेंद के पास जा सकते हैं, उनके नीचे जा सकते हैं, हालांकि कैच उन्हीं का था। और इस तरह की फील्डिंग अगर आप करेंगे, आसान चांसेस को भी अगर आप मुश्किल बना के छोड़ देंगे, तो ये लाहौर वाइट्स के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं है। बिलावल इकबाल को गेंद तक पहुंचना चाहिए था, कैचिंग का मेयार खासा पस्त है इस पूरे मैच में ही। दोनों टीमों ने आसान कैचेस गिराए हैं, स्लिप कैचेस, बाउंड्री पर कैचेस। फहद इकबाल ने इनका अपना कैच भी गिरा था बाउंड्री पर। फहद इकबाल ने फहद मुनीर का बड़ा आसान कैच छोड़ा था और ये खैर सिगाली का मुजाहरा हो गया लाहौर की जानिब से। इनका भी
कैच गिरा दिया गया उसी पोजीशन पर। 4 से 15, 4 विकेट के नुकसान पे। There you go. Some innovation late in the day from Ramiz Aziz. That man, Bilawal Iqbal, in the action again. He dropped an absolute sitter in the previous over. But he's not the only one to blame for that. As we watch this, Ahmad Shahzad was going at this ball which went at long off, and he was standing at long on. And he was in the eye line of Bilawal Iqbal. You see, for a moment, Bilawal had to check if Ahmad was coming or not. And that created that hesitation which left him just a yard behind where he should have been. Once he got there, despite all that, you would still say that he should have hold on to it. Ramiz Aziz is though keeping the fielders on their toes. And on his toes late in the day is Ali Yunus. Good evening. Good evening, Shah Faisal. Yeah, let off from Bilawal Iqbal. Yeah, you were talking about Ahmed Shahzad. Probably he would have thought that this has not gone far enough, so he might be able to reach where the ball was going, but he didn't realize it was pretty far. That is the only thing that I can think of why Ahmed Shahzad attempted for that shot, for that catch. But nevertheless, a chance for Fahd Iqbal. He's been involved since morning, Ahmed Shahzad. We've seen him talk to the captain, to the bowlers. He's definitely the experienced member in this Lahore White side. Now at leg slip. He's a busy cricketer, Ramiz Aziz. We know him. Likes taking on to the bowlers, likes scoring runs, likes rotating the strike. In the air, out of the rough. .419 for 4. Fahd Iqbal got to his half century. Neat flip of his pad. Another offline delivery from Bilawal. Take it outside edge. He's more belligerent against spin. Probably his best shot of the innings was the last one. He was pretty happy to achieve that landmark. Great effort in the field once again. Ahmad Shahzad. Well, you have to commend that. Late in the day, he's really giving it his all. Full stretch. Save a couple of runs. You just can never keep him away from the action. Ahmad Shahzad always involved. Something is always happening when he's around. Such a fun character. Good man to have in your side. Look at that. 10 on 10 for the commitment though. Saad Naseem has only bowled 14 overs. This is in fact the 14th over. In my liking, he's under-bowled himself. He's taken 2 wickets and we've been talking about it. He's better than he thinks he is. He has this ability of taking wickets. Being a part-timer, he has offered you that boundary ball every now and then, but he's got reasonable control. Probably he's a bit better than part-timer. 2 for 48. In terms of wickets and economy, he's the most successful bowler for his side. And also we see when he lands them, because
He's a wrist spinner, put a lot of revs on the ball. He does get a little bit of spin. Fahad certainly has looked more comfortable against spin Ali. 422 for 4. Yet again, we are doing the overtime. Schedule close is at 5, but we're catching up with the overs. 2 more overs to go. And that will take us to the close of play. Fahad would love to be there till the close. Big shout. There was an inside edge, big inside edge. Ali Yunus picked it from almost 120 yards. Still see them better than most, Ali Yunus. Yeah, that was a huge deflection. He's played well. He's shown commitment. It was not easy when he came into bat. Took a few blows on his body. Hang on there, and now he's getting some runs. He's getting comfortable now. Clearly, Ali Manzoor didn't get into that groove with the second new ball rather. By the time that first new ball was removed and second new ball came, that was a brief moment with Ali bowled with brilliant control and loop and pace. Definitely enjoying bowling to the left-handers. There is a patch out there outside the off stump of Ramiz Aziz. Still chirping along Ahmed Shehzad. Ramiz Aziz brings out the sweep and absolutely nailed it. The short leg fielder was scurrying to save himself because that was a very, very sweet strike from Ramiz Aziz. 427 for 4. I was in the slot. Picked it up quickly. Decided quickly. Placed it perfectly. Beautiful shot. But if you look at it, Ali, the previous delivery, Ali Manzoor was able to land it in the rough. Just couldn't do 2 balls in a row. And there is nothing off the straight. Still good shot. Excellent shot from Ramiz Aziz. Poor control from a seasoned left arm spinner. Are we in for some drama late in the day? Doesn't look like it. This morning we started at 104 for no wickets, so 323 runs have been made, in full 90 overs of play. Very rarely we see that feat. We've seen plenty of overs from spin today. That meant the over rates has been very, very decent. But that run rate of 3.46 and having seen so many good contributions, Karachi could have done it a bit quicker. As another freebie, Fahad Iqbal testing the stamina and endurance of Ahmed Bashir in the deep. Hard yards for the bowlers, the quick ones. You could see that Ahmed Bashir, that walk was very, very tired one. Everybody is just waiting for the close of play. Pitched outside and no turn.
429 for 4. Most likely this will be the last over before the close of play. Who's going to bowl it? That's the question. We see a change in bowling and we see a surprise. Surprise, surprise. Ahmed Shahzad. He's brought in Ahmed Shahzad to bowl the last over of this of the day. Ahmed Shahzad. What can he do? He can bowl those loopy, gentle leg spinners. Can he just surprise the batters? Can he get a wicket just at the close of the play? He's making sure that he's got the right fielders at the right spot. He's going to keep everyone busy, that is for sure. There's a slip, there's a leg slip. There's a mid-wicket coming in place. That's a good start. Rank long hop. Ahmed Shahzad, bit stiff. Round the wicket now, Ahmed Shahzad. He lands one in good area. Wouldn't be a bad idea to bowl to the left-hander from that angle because of that rough there outside the off stump. Ali, we've seen 4 rounds here rather at the Gaddafi Stadium. We haven't seen any impactful leg spin bowler or a wrist spinner. We've seen Syed Mahmood, but he didn't make any impact. Also come back for Ramiz Aziz as well after quite a while. Four singles given. I won't mind if you get a wicket and give away another single. He'll take it any day. Last ball of the day. Safely negotiated. Plenty of smiles all around. It was a batter's day once again. Hard toil for the bowlers. Just 4 wickets in the entire day. 433 for 4. Karachi White still trail by 76 runs. This match is once again heading towards a tame climax on day 4 unless something really dramatic happens. Fahd Iqbal will be relieved that he's going unbeaten overnight. 32 overs in the session, 104 runs and just the 1 wicket over it. Fahd and Ramiz Aziz walking out.
They've done what they were asked to do, and it was on the back of some really brilliant batting by the entire order of Karachi Whites. And that batting card, when it does come, it will show that it is a very, very solid looking batting card. Centurions at the top of the order, Khurram and Ahmad Alam, Asad Shafiq. Another nice knock from Fahad, who had to struggle against the fast bowlers. He was really put to test against short pitch bowling, but he's unbeaten on 60. Only Danish Aziz would feel that he's missed out on a golden opportunity here. 125 overs of toil for Lahore Whites, 433 for 4 for Karachi Whites. Another hard day for the bowlers. Ali Manzoor bowled 42.5 overs, a long ball. Just the 1 wicket to show for his efforts. Ahmad Danial bowled quick in patches, 1 for 51. Saad Naseem, the skipper, part-time leg spin. He's the most successful bowler in terms of wickets, 2 for 51. All of these bowlers could make very little impact on Karachi Whites' batters. Third session. Once again, you see some near misses and some glorious strokes. Stylish Asad Shafiq threading the needle 3 times in a row. Moment when he brought up his 100. Very, very happy, Asad Shafiq. Bowlers would feel this game is not made for them when they bowl here. Although Saad Naseem can be an exception, got a wicket on a full toss. Fahad was given a reprieve by Bilawal Iqbal. Confusion with Ahmed Shahzad, Ramiz Aziz. So the innings till the close of play. And the match summary suggests that it's happened too little, too late for the bowlers. Just 13 wickets in the first 3 days. Almost close to 1,000 runs have been made, and Karachi Whites trailing by 76 runs at the end of day 3, still in their first innings. Well, the sun is about to set here at the Gaddafi Stadium in Lahore, and it's just about time for us to thank you all for being with us. I hope you enjoyed our coverage. We look forward to your company for the 4th and final day tomorrow. Until then, from Gaddafi Stadium, it's goodbye and good night.